All I knew that the opportunity I had, बहुत बड़ा opportunity है. Not many people get the opportunity to be here where I am. In a lot of situations I had to pick myself up. Those were the times when I felt more sad and the weakest at my life. Even though I'm not playing, I'm the sixth player. The player inside me always cries, "Zoo play." Hardest part is being able to realize what your role is within the team. तो जैसे आप लोग सबको पता ही है कि ग्लोबल स्पोर्ट्स स्टार्टिंग से ही बोले आ रहे थे दिस इज जस्ट अ स्टार्ट एंड दिस इज जस्ट अ ईयर 0 एंड नॉट द फर्स्ट ईयर फॉर द लीग. तो ये ऑलमोस्ट मेरे लिए भी सेम था. व्हेन द फ्रेंचाइज गॉट अनाउंस्ड एंड आई वाज सिलेक्टेड वन ऑफ द प्लेयर्स गोइंग फॉरवर्ड टू
Mhm. Up, up. फिर लगता है into the franchise league. When I first started Oh working my with him god. last year, the beginning of the year, it was evident that he had quite a lot of good attributes as a player. When I first got the opportunity, I didn't know what I was going into और मेरे को नहीं पता था कि क्या होने वाला है. So when we brought him in, he was really positive, had a great sense of humor. कैसा लग रहा है ब्रो so far? हुसैन भाई सब Lightning? अच्छा है भाई हाँ? सब अच्छा है मिर्ची लगी? नहीं अब तक नहीं लगा बट आई होप लगे वरना मजाक दे दे He brought out the best in other people around him, which was really valuable to us. It just felt at the time that he needed a lot of time to develop. What are the big changes that are gonna happen? How will I put myself against a lot of good players and a team which is made of so many international players? तो मेरे को ऐसा team which is made of so many international players. तो मेरे को ऐसा कुछ आइडिया नहीं था. जैसे हम लोग आगे बढ़े, you guys all know that trials हुआ, कुछ चीज़ें इधर उधर हुआ तो as you guys know कि trials मेरे लिए इतना अच्छा नहीं गया. So given that we had, at the beginning of last year, like I say, we had a development roster where we brought in a lot of duelists, and we had to change a lot of people into different roles. It felt like having someone like him who also needed to develop, it just wasn't our first choice. Even though some things weren't in my favor or some things that I couldn't have my decision upon, I still wanted to continue with this and the fact that कि मेरे को ये opportunity है कि इधर रहने का, to be in the league, to be playing against and with a lot of good players, especially T1 players. I'll go move to a new country. I'll get the experience of being with such good coaches and players, learning a lot. I just didn't want to give up on the opportunity and wanted myself to see to what level I can push myself to और मैं किधर तक पहुंच सकता हूं. I mean, 2023, he obviously didn't know whether he was going to be playing or not. He played only a few matches, so I believe it would have been hard for him. So in 2023, we aimed to put him in a development role where he would be able to watch the team, understand the kind of system that we were building. I say we, I mean Eraser, myself, and Big Time. We're trying to build a system that we could use to carry into 2024. I felt happy but not really satisfied with it because all I knew that the opportunity I had, बहुत बड़ा opportunity है. Not many people get the opportunity to be here where I am. मुझे वो चीज़ को cherish करना था. He works really well within that. He actually came up with a lot of our strategies last year, giving us feedback on watching the scrims. So we were making sure that he was active in doing that, making sure that he was in a position where he could learn from the team. So I wanted to make the most out of it. और मुझे यही चीज़ को लेके all I can do is like learn new things. But ultimately, we felt like it was impossible to get him to develop the way we wanted without giving him scrim time. So, given the schedule of the year last year, we weren't really able to give him that time, which is unfortunate. So we had a brief time going into the last chance qualifier where he was playing, but we just couldn't commit to putting him in for the last chance qualifier, which was a little unfortunate for him. Even though I'm not playing, I'm the sixth player. The player inside me always cries to play more and get more. Good morning, bro. Whoever is watching. 2024, when we were अंकित भाई आप ही हो क्या? changing the approach to build a better team culture. The things I mentioned before, having him be a great teammate, bring out the best in others, suddenly became really valuable to us. So he became a much higher priority after that. He matured quite a bit throughout the season, I think, and I think it's put him into a good stead for the season to come. जो opportunity मेरे को है वो बाकी बहुत लोगों के पास नहीं है. तो I can make something out of it and make myself into a better person. I took a lot of steps to get involved. So for example, the most fun I had always in a day was with everyone and having the dinner together outside. Like for example, we used to go out and have dagabi. Francis birthday Stairs. yeah I think that was Chinese barbecue huh? But both are different. Really fun time, and we went to a workshop in a lakeside. Come on, we're not dancers, bro. Those times we used to interact a lot, and I got to talk to everyone a lot, and I felt like You say fighting G. One, two, three.
Practice के बीच में इतना बात करने को नहीं मिलता था, but always like after practice I would try to talk to everyone a lot, but the feeling of being separated and boredom, as I said, was always there and not really like, it never really went away. Finally. There was आलू दो प्याजा, पनीर दो प्याजा. Let's work on the jet. there was a lot of time I felt separated. VCT Okay, bro. You see this right now? And that's a second attempt now to save the Vandal. The op has been dropped. All right. They're back in. And what I mentioned just now, because last round was C9, but the aggression rather, it was C9 pushing through showers and kind of everybody behind Oxy there. Do you guys want to have a watch party, bro? And I felt bored of everything. There wasn't a lot to interact with everyone, but there were times कि maybe for example scrim के बाद हम लोग को बात करने का मौका मिलता था, so I would just chime in and say my opinion a little bit, but there weren't a lot of places where I could talk, मैं कुछ बता सकता था, and I couldn't give a lot of opinion, but even though I tried my best कि मैं थोड़ा involve खुद को करूँ, I felt like if I don't make steps to involve myself with everyone, they're not gonna do it because they would feel like I'm separated. I just want to be separated. But I think it was really difficult for him understanding his role in the team. You know, it's a group of players from different countries, and it's, you know, very international roster in a country that was far away from home. I think he struggled a lot with dealing with that and finding his place in the team and feeling like that he felt a sense of belonging. मेरे लिए match days were the hardest. So a lot of times there as a match होने वाला है and everyone is in the vibe of match day. You know, जैसा typical match day का vibe होता है. Everyone is like in their own zone and I am there like I don't know what to do. So I think it was difficult for him last year. Seriously, why the hell is it taking so long? Okay. Why is there so much like that?
the hell am I talking? Wow, what was this? Oh shit. I'd rather play deathmatch only. Rather play competitive only, bro. Let's go. It's something that we're aware of. So I have no clue what to do. I just sit around and people would be going there and setting up their PCs in the prac room of the venue. तो और मेरे को ऐसा दिमाग में है कि मैं खुद के gears पैक करके भी क्या करूँ in the first place because I'm not gonna play. मेरे पास इमोशन ही नहीं था कि कुछ कैसे रिएक्ट करूँ. लोग सैड है बट मैं सैड ही नहीं हूँ. पता नहीं क्यों. गेम जीता, लोग खुशी है बट मैं खुशी भी नहीं हूँ. So I was in a rock solid position. I couldn't let my emotions out any time. So I just had to be stable and not really feel anything. I mean, all of that was very difficult. That's all of that contributed to a sense of not being part of the team. If it was a loss, people would just be sad, and I had literally no emotion. I mean, there's two things you can do about it. Either you can sulk about it, or either you can look at the opportunity to prove yourself, right? If you're even if you're not in the active roster, that means you're good enough that they are willing to consider you for the active roster, but you have to prove yourself. When you're trying to put in so much time into a development roster, you just don't have time to help develop that sixth player as well. And that said, we were playing with a six-man roster at the time with Golo as the seventh, so he wasn't even just the sixth man. We were also already spread thin. I think it was a real struggle for him, but it's something that I think has made him mature into the kind of player that he is today. Or you're not good enough, but you're on the path to being good enough. So taking that as a positive and trying to prove yourself is the biggest thing. कंटेंट तो निकाल ही रहे हैं इससे भाई. भले ही लाइटनिंग फर्स्ट खेल रहा हूँ. We talked to him at the beginning of the year, and we said that we were going to put him on the bench, and that there was a strong likelihood that he wouldn't play for the whole of the year. मेरे लिए सबसे लोएस्ट पॉइंट वही था जब मुझे बोला गया है कि मैं नहीं खेलूँगा
starting roster में. So as I said, it was December 19 and I was so demotivated about everything कि this is the one thing I had in my life which was going good. और जब वो चीज़ मेरे से दूर ले गया था कि मेरे को लगा था कि लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं है. So I was really demotivated, depressed in a lot of way that मैं नहीं खेल रहा और things weren't just going good. It was just Stand with me, 80 of Surprise! worse and worse. When I first time went to Brazil, there were a lot of time when the cameraman just came up and asked like 5 players and not the 6 players. And I know that it started even as early as lock-in when we played in Brazil. He was there and he was feeling difficulties, and he spoke to other 6th players who were present at lock-in about their struggles. आज माइक नहीं खोलेंगे, आज ना चैट में लोगों को वो करेंगे, ट्रिगर करेंगे. On side, guys. Don't go on side. That footstep, bro. That was not bad. क्या ब्रांडेड है बिना? इसको उधर के लगे था, मैं खेल रहा हूँ उधर. क्या ब्रांडेड बंदा? Again, B.
Get it. Nice one. You look around away, bro. One outside B hookah. Get back, get back. Onside, care. Between them. And why are they always playing A? Are they dumb or what, bro? One outside hookah. The side, bro. Raise altar. ऐसे नहीं मेरे बंदा
आ गया हुक्का से नीचे एक. Two main. I know exactly where you are. Two main. Okay. Spike planted. Last player standing. Yeah, got that, bro. But I forgot that these are low rankers. They won't commit. They'll try to fake and think that they are, what do you call that? Big brains. I have to buy. So the flash, bro, it was well timed at least. थोड़ा बहुत एफर्ट्स रेना ने डाला भाई, बचा लिया. Joke's over. You're dead. ये ले. क्या रे? There. Spike down B. Last B link. अरे बेचारे भी आएंगे शायद इस बार ना, मुझे लगता है भी आएंगे. There. There. Oh my god. Low. Too low.
Hookah. No one saw that. The Fade was brave, bro. I appreciate that. He was brave enough that either I would die or I would kill you. But I'm not backing out. That was nice. Even I messed up my satchel. Spike down A. Both they shot. My bad. I'm gonna wait for TP. One enemy remains. बहुत जल्द हो रहा है चारों के साथ चारों साथ बहुत ही जल्द हो रहा है No, like legit bro. It's okay. Happens हमारे साथ भी कई बार बहुत बुरा होता है. Face your fear. Bro, why? Left. Tower. TV बंद हो गया था ओके Sage one in front. Give me classic brain. Classic brain. Who got that skin? Nice skin. Classic. Rena. इसका L ही होगा जो इस पे वाइब ना करेगा One in front. Shotgun. Don't go. Look. Okay. Wow. 48 healing. Side. Our bottom has more kills than the top.
कोई बात नहीं ब्रो, डीमोटिवेट नहीं होता उससे. Wait, I'll kill him. Wait, I'll kill him. एक इनका रेज वहाँ पे समीफा भी वहीं खेल रहा है. हो गया. Lucky bro. Wall in front. I'm buying. कितने हराम कर रहा है ये. Bro. I'll drone. Wall. Outfit shower call. One bar. One bar. अरे I can't blind his ass, bro. This side. क्या होगा मैंने भाई साइकिल से चली मार देना चाहिए था उसको. चिपका के उसी से पेल लेता. Or probably they will rush short. भाई दोनों तरफ टॉक्सिक. क्या टॉक्सिक भाई. Nice one. ये नहीं पता. भाई साहब
कुछ भी जीत गया भाई ये तो बेचारे डायमंड वाइमंड हुए यार ले जाए सुबह सुबह बेचारा हुआ पीटी करा दिया with the same thing. I think it was difficult for all of those 6 players like around the world. Hardest part is being able to realize what your role is within the team. Are you able to take the first duel? Are you going to be more passive? How are you going to support your teammates? What is your identity on the team? At the time you think you're left behind, you think you're like they don't need you, so there's a lot of time when you feel like you're not needed in. Was I on the top? I know, but his voice was. Rather than thinking, oh, why am I not in the five? You can be like, oh, what should I do to be in the five? That opens up a world of new possibilities for you. This is one of the 100 problems I had to face, and a lot of time there were like I wanted to speak to the team but I couldn't because there were already people giving their opinion and मेरे को लगता था कि मेरा opinion क्या ही फर्क पड़े. A lot of time I felt like watching them play. I also wanted to play. A lot of time I just wanted to give up everything and just go back to my country and play the Ascension League. But some people were there who stopped me and then made me more stronger every day by day and made me believe that I could do it no matter Thanks, what. bro. And the positive mentality Appreciate it. everyone gave me, and I really spent a lot of money on this one. myself have the positive mentality helped me a lot in those situations. But yeah, the feeling of being separated from the team was the biggest problem I faced. When everyone had their own zone, own focus level, and everyone were prepared to play the match, I just had my own zone of hope. कि मेरे को hopeful Were you my रहना है opponent just now, Cho? whenever I'll get the chance and try to learn everything I watch and just to put them all together. And that was the only thing I had when during the match days. Whenever I watch the team going up on the stage कि अरे मैं भी एक दिन खेलना चाहता हूँ उधर ही जाके कि I don't think. अरे Valorant G ने नई स्टोरी डाली ना उसकी lightning fast की. I'm watching that. Sad but true भाई. Esports में यार वो rush. I have also played some tournaments though. जो भाई playing 5 का जो rush होता है ना भाई जो adrenaline rush होता है वो 6 player को नहीं मिलता भाई. 6 player की journey really tough होती है. It's like you are in the team but you're not in the team. Sad but true. क्या कर सकते हैं उसमें? I think it's a big deal, guys. It's the 5 players. इसलिए भाई टीम वीम का चक्कर छोड़ो बस चिल करने के लिए खेला करो चिल पिल एंड स्ट्रीम eat play sleep repeat and there comes the job. Who are playing are going to the workouts. I think obviously you do feel left out at the time, but if you look at it from the bigger picture, I think that's how it's supposed to be, right? Like कंसोलिडेट करने के लिए तो हर कोई आता है भाई. वर्ड गलत यूज कर लिया क्या मैंने? नेवर माइंड जो भी होता है. एवरीबॉडी शोज कंपैशन बट भाई जो 6 प्लेयर है ना उसका दर सिर्फ 6 प्लेयर ही समझ सकता है वो खुद. even in a cricket game when people are walking out, just going to be the 11 who are playing who are going to be walking out on the field and not the entire 15. So it's natural, but obviously he must have felt left out or bad. But यार बट ब्रो हर जगह की स्टोरी होती है. बी इट योर इंडियन क्रिकेट टीम और कहीं भी होते हैं. देयर आर 16 प्लेयर्स और 15 प्लेयर्स बट प्लेइंग तो 11 ही होते हैं ना. yeah, there's nothing more to it. Even though I played 2 games, but I really felt like that wasn't enough for me. So even after that, whenever I watched them play and watched them being together as a team, I felt like wish I was in the team environment as well. मेरे को भी वो मौका कब मिलेगा एंड मैं भी कब वो मौका रिलीज कर सकता हूँ कि मैं भी स्टेज में जा रहा हूँ और मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ अपने आप को. Since 2017, as soon as I started playing a little bit of competitively, I always wanted to just play the game and have fun while playing the game. So as I mentioned, the biggest reason was we felt he needed development and he needed a run of 6 weeks plus into a league. So this year we felt like we were able to give that to him.
making the decision back in August, September, we were able to play one block of training into Convergence, take a break, and then another block of training into Kick-off this year. And that's meant that he's had the time to integrate well into the team, to develop the characteristics that he was weaker on, and make sure that he's ready coming into the match. I got to play scrims for 2 straight weeks, and for every day I was subbing in for someone who was not feeling well. But not that I was happy that he was feeling well, but I was happy that I could play the game. I could see that I could see myself improving so much comparing to start of the year to when I was playing the scrims for 2 weeks. And it felt so good and natural कि मैं खेल रहा हूँ, और वो time था when I was involved a lot more than I used to. Tab I would say it was the highest point of the season. For me, I've been here for the past 3 years. The G fighting spirit has always been in me, और मेरे को ऐसा लगता है कि this thing is a fuel to our mental strength and our in-game strength as well. Like, not really over-exaggerating, but it is like having something to believe upon. It is like having something when you're losing, you know you can come back, because this team has always been fighting together, and being together is one of the better things you can have. This new team and even all the past teams I played with in GE always had the feeling that we can fight no matter how hard the situation is. It really contributes to having a really positive mental attitude. I think it's important just to think that, you know, he was a sub. I think it's important just to think that, you know, he was a sub last year, but he wasn't nobody in the team. We were with him all of last year. We talked to him a lot. He was in the office with us a lot. So we do understand him as a guy. Looking towards self-improvement and setting personal goals for myself and trying to achieve that was the best thing I did in 2023, and that was what kept me going the whole year. I mean, it was a good ride. Like, we started off a bit scratchy on the in-game part, where we used to have a lot of arguments. We had them throughout the years, but the way of having the argument changed throughout the years. Like, there were times where it was high, lows, but apart from it, everything, like, kuch bhi ho jaye, chahe bhukam bhi aa jaye, I knew I had to finish my goals. So I did that. The consistency was there, and now I'm here. His weaknesses and his strengths as a player were taken into account when we built this roster, so we understand how to mitigate his weaknesses and to develop his strengths. So we'll be aiming to have him play to his strengths. Right? He was a good guy to talk to, good guy to chill with. Yeah, that side was great in the game. Obviously, it was a bit of a rocky start, but then we kept growing as time went through, and then he started to understand what I wanted from him, and I started to understand what I needed to do to manage him as a player. So there was always that learning curve, but I think after that it was pretty good. I'm feeling more satisfied right now. After a long time, I felt like I have my own team now. So this is my team and this is my home ground to shine. You'll see him giving it on stage, standing up, like shouting, and he's positive, like you can see it in his face. He loves being on stage, he loves performing for the fans. After a lot of time, I really felt like कि ये मेरा team है and I can go forward with them. And I hope to see him give the best show. As you guys already know, what's next has already started. Whatever you saw in Convergence was just a little bit of it. It's just our first win, and I would say first of many wins. I'll just make sure it keeps on coming. I'm pretty sure the team is gonna be as excited as me to go forward and get some more wins. I need me a trophy, I need me a ring. I'm not with the boom, but keep it a beam. Know what it is, you know what I mean. So now that I'm finally playing, you guys already know it कि हम लोग पूरा टीम मिलके एक साथ मेहनत करेंगे, मेहनत करके enjoy भी साथ में करेंगे, सब कुछ साथ में करेंगे, and we make sure कि we win the whole thing together as well. I put it all on the line, definition of divine. I feel like a champion.
Con, what did you order? Hot chocolate. Good. Dark. I need to pee so bad, bro. It's coming out, man. It's coming out, man. Are you crazy? Cookie. Strawberry cookie. $60, $174. What the hell, bro? Gonna play 200 thing. Are you serious right now? They're coming now. Oh, let me there. Fired it. Hang on. Hang on. Hang on. Hold on a minute, I'll be right back.
Finally, I'm back. Grind नहीं रुकेगा. Oh my god, it's so cold, bro. How was the shoot? You finished? So cold bro inside. Huh? Inside is cold? Legit. Bye bye. What's up, man? What's up? Bye. What's up? What's up? You done? Yeah. See you. You're back in, buddy. I don't know what I'm playing, but I'm playing. Fuck. Eventually. We're gonna wall. Oh fuck, the key came out. don't show this on Not the me. video. Not me. There's a cat. He's so cute. You kick them. It's so cute. Look. No, he's scared of you, Jake. Oh my god, Jake, you're No, you fighting gotta me. be like, just come out, come out. He's a bit cold, but he's worth it. He's so cute. Oh shit. He's cute. He's going. Honestly, it's all you. Oh, you like the warm air. We got a cat. Just like us. Yo, we got a team cat. It's expensive for you. We are going to buy ice cream. Hopefully the shop is still open. If not, we won't have any ice cream to eat. You think ice cream in this cold? Yeah, it's nice. Basket And it's not that open, bro. expensive. What else do you want? Cheaper than Singapore. Like I think 2 scoop of ice cream is like $7. It's like quite big. Even though they say like junior size, it's still quite big. So yeah, and a lot of flavor. Yeah, it's still open. That's the ice cream shop. The New York cheesecake and the cookie and cream is nice. Can I trust you? Yeah. You ask Jake. Jake eat 2 of them and it's damn nice. Is it better than your Indian decision making? No. My in-game decision making is like golden. On par. Yeah. I just say eat 1 meal. Yeah, eat 1 meal. Went into basket. रे स्ट्रीम कर रहा है क्या? भाई तू कल गेम में आया था ना? तू कल गेम में आया था ना? हाँ, कल गेम में आया था ये जेट। फिर अपन ने वो कर दिए थे। अरे आया था, मेरे को मालूम है। वो ओवर टाइम तक गया था, ओवर टाइम तक गया था। हाँ, हमने तेरे को स्ट्रीम स्नाइप करने का भी ट्राई किया। कोशिश की थी लेकिन 1.5 मिनट का डिले था। हाँ, डिले था इसलिए नहीं हो पाया। यही था, मेरे को मालूम है, यही है।
कोई हाँ और बे, कैसे कोई होगा और भाई? होगा अबे कोई और होगा शायद से लेकिन वो चूतिया बहुत गंदा खेला था बे देख ले मतलब भाई तेरे बारे में क्या बात चल रही है मार्केट में। अरे तू था ही नहीं तो तू था ही नहीं लेकिन मेरे सामने आया था बहुत गंदा खेला था और ओटी में पता है इतना चूतिया ओटी के अंदर है ना रुक जा क्या क्या है इनिशिएटर बंदा ओटी के अंदर है ना राउंड वही निकालने बंदा से है भाई, वही बंदा है। राउंड नहीं निकाल रहा स्पाइक डिफ्यूज नहीं कर रहा किल चाहिए इसको खाली किल चाहिए हाँ, बंदे मार रहा है वही खाली बंदा है ये। मैंने अभी देखा इसको। देख रहे हो भाई कैसे बेइज्जती चल रही है हमारी। मैं इस पूरी खोलूंगा ये बहुत बेइज्जती करेंगे ये कपड़े भी छील देंगे भाई वो कल वाला तो बहुत गंदा खेला था वो आज तो भाई फुल वो है टेंशन है हेलो क्या क्या Spike's there. 30 साइफर Player standing. अबे इसको मैंने 30 दिया। मैंने क्यों सोचा कि मुझे पोजीशन चेंज कर लेनी चाहिए ये ऐसा क्यों आया मेरे दिमाग में रेज इधर है मेरे पास आ तेरे पास शरीफ है ना रेज आ जा मैं यहाँ से ऐसा डिले दूंगा 5 सेकंड गिनने के बाद में सब फ्लैश होंगे तो यहाँ से पीक ले लेना 3 2 1 Spike down A. 96 रेज 45 जेट शॉट मार दो है ना कुछ भी शॉट मार दो मजबूत डैमेज है तो Spike down B. Carry me. Jet is on HP, 140 tag.
Spike up now. Wait. Cypher side. I'll break it. There. Okay. There. Pushing it. Side down के बाद. City push कर. Multi-bid box के ऊपर होगा. Elbow. Default elbow default. Nice one. अबे मेरा गेम क्रैश हो गया था बे. मेरा गेम क्रैश हो गया था. वन वोट इवन नहीं है वाला. ये वही सेम राउंड है. Round. I'll try my best. Kill at least 2. I trust in them. They will retake. I'll kill at least 2 each round. Fine, I'm covered. Get out of my way. B. Smoke B. मैं मिटा पे होल्ड कर रहा हूँ. ठीक हो सकता है. सब मत रोटेट करो. मार्केट डोर बंद है क्या? Yeah. There. आ गया. Spike planted. Last player standing. Darking mid? Seriously? सेव कर लो. कौन सी शरीफ है बे? मेरे को दे. ये तेरे पास भी वही रेडिएंट क्राइसिस की क्लासिक है? There. Spike planted. Smoke diffuse. साइफर मेन का ट्रिप लगाना. साइड दूसरा पता नहीं. अरे वो मिड पिक है.
break the trap. Reload. There. नहीं नहीं क्या भी गेट टूटा There. Spike down B. मार्केट स्पाइक टाइल्स एक टाइल्स था साइफर अननोन एल्बो रैप हो सकता है साइफर के कैसे होल्ड कर लिया स्पाइक है हम लोग पे One enemy remaining. रश में रेस वेंटल उठा वो वो वेंटल उठा आरटीएक्स वेंटल उठा वो वेंटल उठा टॉप वेंटल अरे आओ यार यो वेंटल वेंटल तेरा है तो ए तू रेडिएंट पहुंचा नो 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 इट्स नॉट माइन अच्छा भाई दिल का कितना अच्छा है ड्रॉप दे दो इसको गेको गेको I'll break. बीबी अल्ट्रा एल्बो देख रहा हूं मैं तेरा मैं एल्बो देखता हूं एल्बो हां स्पाइक एक मेन था दो एल्बो है शायद आगे तीनों एल्बो Left side. एक मत देर इज रुक जाओ उसके लिए रुक जाओ प्लांट करेगा मैं नाइस ऑफ ले नीचे ऑफ रेडिएंट फंड थैंक यू ब्रो साइफर बाय मिड पे बूस्ट किया रहेगा बॉल मिड पे बॉल बूस्ट पिक ना कर मत कर पाता पिक Stage 1 HP. The spikes here.
Backside. मेरा आइटम जो Careful, mate. दोनों साइड गेट को अल्टरनेट के लिए एक डिफॉल्ट एक इधर नॉन डिटेंट वाले को मार मैं क्या बताऊं वो क्राउड कर दिया उसने भी उसका हेड भी अपने वुमन के पास है केओस वेंट खराब जा रहे हैं मैं बाहर देता 1 सेकंड के लिए पैनिक हो गया मैं ए One mid. One enemy remaining. Chaos Vandal bro Chaos Vandal Last round before the switch. रेस इधर रेना या रेस इधर आ जाओ एकदम आ जा देख मैं तेरे को फ्लैश दूंगा तू जब पीक लेना यहाँ तक पहुँच जा वन वे चाहिए आगे को मैं फ्लैश दे देता हूँ नहीं छुप जाए 3 2 1 स्मोक है वुमन स्मोक में One enemy remaining. Switching sides. स्पाइक ये गोस्ट स्किन दे स्किन There. आया गया ए पे जाने का बोल रहा हूँ आ जाओ आ जाओ लोग कितने का फास्ट All elbow. फ्लैश कर रहा हूँ साइड डी प्लेयर है टॉप है ना फ्लैंक नहीं आएगा ट्रैप Maybe. दोनों में टॉप दोनों उधर है रेना का पोजीशन है क्या रुको Epic one man. रुको. साइफर भी उधर ही है One enemy remaining. फ्लैश पे करो There. वो तो देख नहीं रहा था ना इसीलिए जेट दिख रहा था इसीलिए तो
ब्रो मिड टू भी करता है। मिड में प्रेशर एक स्मोक डाल, मिड में प्रेशर डालेंगे, आ जाएंगे। को ब्लेंड भी हुआ और मेरा ब्लेंड भी हुआ। प्लांट एमिंग का रिवर का रैम्बिट यस पार्टी ब्रो अमीर पार्टी रिवर का रैम्बिट है साइफर कैम कर मैं कांटेक्ट करता हूं का रैम्बिट है पोस्ट ब्लड गेट ग्रेट हाउस चलो चलो मेरा अल्ट वन है एक और डाल बी पुश करे अरे भाई स्मोक किधर है? अरे खत्म हो गया भाई जब तक अपन पुश चलो सिटी दोनों सिटी भाई एक तो किल नहीं मिल रहे मेरे को। चलो वापस ही चलो। मैं पूरी हेल्प कर रहा हूँ मेरे को किल नहीं मिल रहा, मेरे को ही वेट कर रहा हूँ साले। बता तुझे स्मोक गायब हो गया, वेट हो गया, वो मंत्र जादू कलंदर हो गया बे। Two here, two main. चल स्मोक डाला है एक और टॉप रैक यार इतने सारे वीडियोस है ना, इतने सारे क्लिप्स है, कौन एडिट करे? मैं पूरे मैच में खाली 6 किल किया हूं मैं। इससे अच्छा सेंटिनल चेंबर खेलता था उसके मार। चेंबर के साथ पीछे खेलते अबे घुस के खेलता है और ले ले तरल वन मार्केट मार्केट कैसे मारे भाई सब लोग? चलो वापस एल्बो लेना वो साइफर चूतिया उनका कुछ भी स्पैम कर रहा है और मार भी दिया उसने उनको। तो देखो और भी बहुत फाइट है। ए
ये भाई अभी ये वाला राउंड दे दिया ना अपने को कम मिलेगा आराम से ये वाला राउंड निकालने का कैसे भी 35 करने का अपने को जी ब्रो क्या बनता है गुड मॉर्निंग एवरीवन 4 हाँ रुक जाओ अल्ट मेरा अरे मेरा एक अपर दो स्पॉन राइट में लास्ट बॉल में रखो भाई मैं ही था भाई कल वाला भाई लास्ट में बोले मजा ही आ गया भाई पर भाई 402 रेडियंट कौन था सामने से रेडियंट था कोई I think I need to try the laundry shop. भाई इनकी गलती नहीं है बेचारों की they tried their best यार sometimes you win sometimes you learn we never lose bro I don't know what you guys thinking, but I really want to win. I really want to Command League, and I cannot do it only by myself. I need you guys, I need everyone to do it together. I need like good IGL. what is this hairstyle I need good superstar from NA. I need like the best aiming duelist. That's camera. I need the robot. And a good course, and I need everyone. Let's give our best. I guess there is a chance for my A chance for us to go my Vietnam. It feels different now. Now it feels different. If nothing else, you have to be 2-1. Work quietly. That's quiet. Too long. Speak now already. 3, 2, 1. Lead it. गुड इवनिंग व्यूअर्स और तुम्हारा फिर से एक बार एक और नए मीम रिव्यू लेट्स सी आज तुमने ZTX पर क्या सबमिट किया है भाई कंप्लीट देखियो ओके भाई पक्का भाई इस बार पूरी देखूंगा बस गाने ना हो बीच में गाने वाली मत दिया करो गाने वाली मुझे काटनी पड़ जाती है और जिसमें बच्चे होते हैं वो भी मत दिया करो बॉयज विल डू एनीथिंग टू हाइड देयर मिस्टेक ओके पूरी देख रहा हूँ तुम्हारे कहने पे अभी ये जो गाना चल रहा है ना पीछे मुझे काटना पड़ेगा ये मीम भी अभी गाना चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में और ये मीम कटेगी देख लेना तुम आसान से व्हाट अ मीम कि मैं भाई मजे करूं इसमें ऐसा क्या था मैं देख के कहूं वाओ व्हाट अ मीम क्या कौन है तुम्हारे जैसे डिडंट हेजिटेट इवन अ बिट ओके मोदी घर घर मोदी जय श्री राम राहुल गांधी को मौका देंगे वो तो हमारे जैसा भैया उसको क्या मौका देंगे हम कोई भी के लिए होगा जो मुझे भाई प्लीज डोंट डिसरिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड योर कम्युनिटी बाय कंपेयरिंग हिम विद यू भाई मुझे लगा थोड़ा सिंपैथी दिखा रहा होगा भाई बेशरम लोग है भाई राहुल गांधी इज द गोट लेट्स सी द रिप्लाईज इग्नोर गाइस इग्नोर इजी भाई ये क्या बिहेवियर है आपका मैंने क्या किया She's new here.
Give her some time, she'll understand. About देखो वाइपर खेल रहा है ब्रो. Thank you. Love you, player 5. option. I have to wash my hands. I'll wash my hands. एक क्या बिहेवियर है आपका? मैंने क्या किया? She's new here. Give her some time, she'll understand your style. तो इसमें मेरा नाम क्यों है? इजी भाई ये क्या बिहेवियर? मैंने क्या किया इसमें? वेरी बैड. मैं ऐसे हाथ नहीं उठाता किसी भी लड़की पे कभी भी. बेल्ट उठाता हूँ. शादी में Try my best to play the Zowie up to its optimum utilities, bro. But I can't promise anything. Hello, my bitches. Let's go B. दिखा दी पहली बार में औकात दिखा दी अपनी. पूरा फास्ट करते हैं. जेट ना डार्क चलेगा. सो सीधा आगे जाके ऊपर मैं बॉल डाल रहा हूं. फ्लैश कर दो इसके बाद. Very dark. Sniper. I have both mollies. पीछे खेल रहा हूँ. Wall down. मेरा सीटी देख करेगा ना. पीछे सीटी होल्ड कर ले. ओके कोई होल्ड नहीं कर रहा कुछ. ओके. Oh my god. Timber house. Why? Don't complicate it so much. Wow. पहले कौन देता था ना बी पे जब थे तब जीत जाते. अब ये बोलने की जरूरत नहीं है. क्या लेगा रे?
That's weird. Bye. So what? Jetter. Bro, can you plant? Fuck the Flank, window. Spike down B. My ult ready. Sheriff it is. अपने पीछे से थोड़ा दिमाग किसी ने सुन रहा है you heard him tunnel इसने भी इसको सुन लिया उसने भी इसको सुन लिया and he'll come mid now Cypher gets a बी चलो हमें बी एंट्री मिल जाएगी साथ में Let's fight. Cypher drop दे देगा था उधर I'm one shot bro सब पे wall down one match one last elbow side let's play with the new skin bro a little bit बी पे हल्का सा फेक कर सकते हम लोग रेना और साइफर इधर रख या साइफर स्टे रेना साइफर रेना जेट को अंदर जाने दिया एंटर करने दिया तो यूटिल डाल दिया फिर हम लोग पीछे चल हां पीछे मुझे कॉल दे जरा पीछे जाने यप ठीक है क्या मैं वॉल डालते होल्ड कर यू वांट टू Oh fuck! Viper there. Just go. Spike down A. I have a Very nice. One enemy. One enemy remaining. Last opening. Opening. Let's go. Starting a main. Easy. Off it. Repeat करना भाई जब off है तो. Safe kill the Viper. Not picking. Left side. Might pick. Default खेलें. Let's play default. Off ले ले. We'll get a pick. फिर cypher तेरा win है फिर I'll do. I'm playing with you cypher. Mid smoke कर रहा. So drone करियो मेरी call पे. Okay drone.
Fight. मैं ड्रोन करता हूँ. AT so. One push, flank. Sova mid था, Viper chamber. Chamber dash, Viper tunnel, Sova was there. Can you walk up with me? Can you walk up? 80 on Sova. Chamber 120. Dolo. Sova 80 Viper. Can you walk? दोनों इधर bro, दोनों. Can you come back? Come with me. Don't fight. Come. I'm holding your main. Just go back. Okay, let's run it. Sova was mid. Yeah. 25 seconds. Come. Spike down mid. Seconds left. Rena, not planted for you. 80 tag. NT. Not over here as well. Alhamdulillah, here as well. B पे फिर से fast करें. Can we? Yeah, come fast, be. I'll try to take second now. Never let go. Someone just swing with me on back. Be back. Arena swing करना. Arena. रुक जा. Arena slow. One mid. One flank cover. So the card. Right here. Reveal in 4. Oh shit, one backside. Almost ready, bro. Level 10 until we're home, yes? Again, B is we got side. वो रहना चाहिए. I can drop. और जेट हमेशा फ्लैंक करा साइफर. ट्रिप लगा के तो पीछे चला जाएगा. You wanna go for? So I can drop, bro. Go. Drop me this. Drop it. Jet is low, bro. I believe. Left side. Jet back. Then a chamber.
तो भाई काम करेगा बीच में ना डोंट ड्रोन जस्ट अर्ली रिवील कर दिया कर बैक अभी नहीं ऑल साइड कर सकते हैं जेट आएगा walk not One stairs. No one close. So what? B should be empty. B खाली होगा. B खाली. Right here. Spike down B. One mid, one flank. Jet flank. I have the spike. Stealing area. इनकी और क्या इधर जा रही है वाइपर फिर से दिखा लगा Can you play slow? I'll pick off you. Do you guys want to buy a Rico? I can offer. Bro, वो ना ड्रोन थोड़ा लेट हो जाता है फिर वाइपर रेना आगे क्लोज आके बैठ जाता है तब I cannot dash. Yeah, अभी आ. Wait, Reena, wait. Behind this wall. Spike down B. Just play slow, bro. Cypher B पे वाइपर भी होगा. wait keep walking okay Cypher ult कर yeah I'm just Ignis आ गया. One mid doors. Just plant it, bro. Plant it. So yes, by you. Right here. My ult is ready. One enemy remaining. Oh, windows. Last round in the half. Sova come. Sova. Can you one bounce dart here? Single art. You want to play? Let's play. Wrong dart. Three here, but two more here. Viper and Sova. Jet open B. Up. Chamber is open. Chamber and Jet both. Chamber next kill.
Oh, I hit them on the head. Get back. I'm serious right now. I hit him on the head. So many bullets. मेरे साथ Zowie साइफर प्लेइंग elbow Go ahead. elbow सब elbow देखते हैं तेरी प्ले नेस्ट कर एक मिनट मिड और हॉल्स दोनों खिला अपना डाल के हॉल से बी में E clear. जेट इन inside the right. One minute. Get all. Chamber mid, Viper. Viper main. Viper spawn. Main. One main. Main. Can you come and defuse? Can come. Nice. कुछ भी निकला around here. Don't give them time to reposition. Do you need help, Cypher? Yes, sir. That's what you handle. तीन है गेम ब्रेक द डॉट Right here. mid doors. क्या ब्रेन डेड है भाई दोनों पक्का भाई दोनों भी मैंने देखे होंगे ग्रांटेड तो इतना ज्यादा वाइड चेंज नहीं करना चाहिए था okay that's okay I kind of deserve this because I am winning. So dark break. Leaving area. A can you just dart bro can you dart bro Planted.
low. If only he could have waited just one more minute, or I could have just reloaded. Amen hold मत कर सबा, amen retake में खेल, I mean एक retake में खेल. तेरा album नहीं देख रहा मैं, साइकिल मुझे बैक साइड ही खेलेगा. Coming B. Easy side, just don't die, just don't die. I should have expected him. Let us hunt. It's overhead. One enemy remains. Nice window. ताकि मैं तेरे को स्मोक कर रहा हूँ. Perfect smoke अंदर. Complementary. I will dart away. You can kill them through smoke. Okay, yeah. Don't fight for side रहना. बस इधर से या pyramid से खेल ले. Wall up करेगा तो You want to play? Let's play. 3 mid. मौका ही नहीं मिला भाई. Zaza.
ढोल बजाने गया था, घर पे किसी ने बीवी बस यही सोच कर काट लेंगे। वेरी बैड गाइस, मैं ऐसे किसी की बीवी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसे नहीं, वेरी बैड। उंगलियां और एक अंगूठा होता है सर, मैं तो पढ़ने आया था। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये हमारी मिडल फिंगर है बच्चों। अभी नहीं, अभी कोई मजाक का टाइम नहीं है, अभी कोई डबल मीनिंग का टाइम नहीं है बच्चों। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है बच्चों। सर लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं मेरी, तुम्हें पता है? ये देखो सर, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस चीज के अंदर रहने से ना, इस चीज के अंदर रहने से, ये देखो मैं बढ़िया टैंक बनाता हूँ। ये क्या बन गया? कहा था ना सर लाइव स्ट्रीम देखते हैं। ओके, गुड जॉब सर, सही सीख रहे हो, ड्राइंग अच्छी सीख। क्या चल रहा है मैच में अभी? It's like into it. VCT. Team plays just off the strafe shot too. Very nicely done. Hey. Oxy's passion is through the roof right now. Do you guys also want to watch? Everything about Okay, in his first games. Now we're going towards C. It looks like here with MIBR. Oxy wanting to push out towards mid there. Still has the judge. They're fine with keeping these close range guns and allowing MIBR to encroach a little bit closer. MIBR spread in the 3-1-1 right Hold on. This door game to be played ever so slowly. Something that we didn't see too much here for this door revolving from C9 on the attack. MIBR is trying to play that mind game a little bit more. Even the alarm bot being pushed up at the entrance of the B site. So for C9, still a question mark. Do we actually have players that rotate through the revolving? Let's watch it together for now. मैं मेरा तो वैसे ही 20 सेकंड डिले है। क्या ही देखोगे मेरे में? Get a contact play within the A site. Thrash now being used towards that C mount stopped. No really early rotates yet. This is just Mazine going for lurk plays. Now the dog comes behind the door. Nightfall coming out from the defensive side of C9. Oxy just holding close. The big battle now comes in towards the revolving door at the tree. Flash to come out. Zeppa playing the off angle, avoids the flash for the kill. Efarzido answers right back onto Oxy. Advantage for C9, but we're still looking for the plant. Everything's getting delayed so far because the Thrash got picked up. 10 seconds left. This might be it. RGL gets that first pick, and now there is no time. Enemy remaining. It was a very weird round that we saw here on the attack from RBR. Yeah. Seems like they weren't confident to try to work and hit that A site. I think those are the rounds before where we saw MIBR saving, but the game a bit too tight for that at this point. You don't really want to have a big save like that just to keep your weapons here. They wanted the round. So we'll see once again. Nobody is playing 67. Everybody is playing 4:3. A nice hide. Vanity actually has been alive for a lot of these rounds towards the end, being able to make calls, being able to use that util to be sure they can retake sites. So that positioning has helped a lot with him being alive towards the end of these rounds. Pushing towards A. Hey, everybody is playing 4:3. Knowing about it, but they're going to meet and spawn. I know Dizzy and Prowler is close though on the call for MIBR. Mazine was trying to launch that flame but gets popped instantly. So this will now force MIBR to move quickly within this C site. Lure of eye that you have for MIBR. A plant will be a nice little one as Alarm Bot forces out now the nano swarms to delay the plant from MIBR, which then, look at this push from C9, all of them towards down. MIBR trying to push back towards the CT. Big paranoia to come across, plant still comes in no matter what. An assist from the wingman to get the clap onto RGL, allowing Oxy to get his second ace of VCT Americas. The iBuyPower ace comes through again. Man, we're going to have to get some shipping on these because if you're following at iBuyPower on socials, they'll be giving away a PC every iBuyPower ace. And at this point, we're going to have to write thank you cards to Oxy. Oh my gosh, the rookie
absolutely exploding. I think they said Super Saiyan. Doesn't that take like 20 episodes? This guy, one episode right now. 20 kills pretty much. Holy crap, he is absolutely cooking right now. And that was pressuring. और कोई भी नहीं देख रहा क्या? I'll just remove it. कोई देख तो नहीं रहा था ना? I'll just remove it. 3 1v1s. Look at that. Recognize me. That's Super Saiyan 4. That's definitely Super Saiyan 4. They got to remember that they have been in control for most of the maps that have been in this series, with Cloud9 being able to bring it to a third due to some hard work here. And now Oxy has just completely come online again from that first game, second fragging, and now has top fragged the past 2 games. This one not even over yet, and he's 4 from the next. 10-8 here. MIBR now looking to change things up. There's too much momentum with 3 rounds now on the side of Cloud9, and there's 4 ultimates to be used by MIBR. If this round gets snuffed out by Cloud9, that might be 13 for them. That's a great point here to call the timeout to stop that momentum that C9's been building, especially after that ace that you saw from Oxy. The economy is not too good here for MIBR. They have to go for a rare half buy. With Vandals, they have ults to work with, so you know that this is definitely an Did I go? for MIBR that they have to convert. So off this timeout, no early aggression, not trying to use anything. For C9 instead, it's for them to move out. Ooh, and that's a great call for MIBR, staying towards the spawn, punish them, thinking that C9 with that confidence will overcook. Exactly, and they have a little burnt on the edges for that push. And looks like it's going to be a quick one. Seekers out towards C, and the rest of the hit comes through on the KJ util. Ooh, counter nano swarms, but Jake couldn't get the pick. They're good. That might stop the bleeding right here for MIBR. Even coming out with a flawless would be huge. Nice utility to push them back. Another nano swarm in. JZZ just spotted one towards the back of spawn. But Zephyr runs out. The trades come across, but Vanity once again stuck in a 1 versus 2. He's clutched it before, and the Boombot's gonna spot him. The spike's down out in the open. Exactly. I'd say positioning here for Vanity if they don't double swing him. Could be, if they get on top of site, they might make Vanity push into the Viper's pit, but it doesn't look like they're in position for that. I mean, you do it towards spawn. Oh, it's a satchel instead for the double swing. Nicely done for MIBR. I mean, to win a round like that and not having used too many of those ults. Yeah. I mean, from what MIBR was doing on the previous rounds, we saw Mazin actually putting an ult down right next to another member of C9 to solidify a round. And these ones are very important to do so. It was just a blast pack and a double peek on that one. So they saved the ultimate. And like we said, they had 4 to use. Only needed 1 to get through that round. Really, the Seekers coming in. Artisan's about to be on top too with his showstopper. So they could actually unleash a lot of hell in these next few rounds. They stave off that loss. The econ's still good for MIBR, and C9 goes back to this push towards Rubble, gaining ground and giving less space for MIBR to play with. And less space, even a That's what they're doing here now. Confirm that nobody's moving and staying behind towards this A site, but once again, it's MIBR using satchels, but not breaking too much util. Turret comes out. Artisan's the one that's creating that space to waste that KJ util. There's a pit, but they have a Nightfall and a Showstopper on top of this. Vanity goes in. We answer back though with the lockdown on the attack, and there is that trade-off. And JZZ just lines up a few as they're trying to run back towards the waterfall. That might be it right there for C9 to just hold it back for a little bit more. I mean, if Jake and Whippy could do a little bit of damage here, but they're also low in the economy. Vandal upgrade for Jake, and both of them will decide to fall back. An incredibly pivotal timeout from MIBR just a few rounds ago. I think what they did was they basically scheduled how to use these ultimates. They said, all right, this round, look to get this ult in with the Seekers. We take B. This round, look to get in again. Use the Viper's Pit. And they still have another ultimate to come in here. And I think Artisan's very close to his, too. Maybe one off if he didn't get a frag there. So this could be a showstopper to come up and bring them to 11-10. MIBR has unfolded this arsenal. Everybody is playing 4:3, bro. Oh, that one was good. JZZ on top, just clotheslining people with that Phantom. INHUMAN भाई आप तो यूरो में हो ना.
हेलो 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 ब्रो हेलो भाई कीजिए वो जा सकते हैं साइफर ब्रो प्ले 2 ब्रो कीजिए साइफर नहीं आता ब्रो चेंबर खेल सकते हो खेल सकता है तू भाई डुलिश खेल सकता है प्ले 2 ले ले भाई डुलिश फिर पहला गेम है ब्रो छोड़ रहा है ट्राई करता हूं खेल के बाद में खेल की बात मिला है मैं Can on both extremities here. There's no alarm bot or turret or anything to see any pushes towards B. I mean, for MIB Armed, they've rarely moved within that location, unless it was with judges. C9 trying to go for. But for us. Yes, frenzy skin. Frenzy skin है इसी बात. एक मार्केट सिटी रेना वो लॉग रेना मैंने सिटी लॉग रेनी के नीचे अपील कर लिया रेना लो मेन पे ओमन को मैं देखता हूं तुम लोग साइड मेन स्मोक कर दे मेन अरे भाई गाइस जब मर जाओ चुप हो जाओ खेल लेंगे क्या भाई हम तो एडवाइस ही दे रहे थे भाई साइड कोई था ही नहीं फर्स्ट लेन था एक सीटी मतलब मेन था कैट एक कैट ये दो कैट एक मेन Player standing. शॉट नाइस शॉट हो गया
तीन शॉट, दो शॉट उधर जाना चाहिए उसमें मतलब। कैट है -87 145 J. सो या ना सो या मैं भी ऑफ करना सो या तो भाई मार्केट पे लगा दे हां सो हेवन के तो बोलूंगा इधर रिवील दे देना मैं यहां पे स्मोक दे दूंगा। अरे ट्रिप नहीं है क्या? ठीक है सो नहीं है भाई। ओके यस ये देख ले मेरा मार्केट ड्रोन आता है। क्या ये बंद हुई है? मार्केट में वन वे कर दिया लगा ले यहाँ चुप जाता ना मैं तो कहते हैं ना लालच बुरी होला है। तो सेम कर भाई सेम कर मैं इधर देता हूँ गार्ड ठीक है। हां जब बोलूंगा तब वो जस्ट बट डैश करेगा तेरे हमेशा ही टिक आने जाने बी केयर मिड है भाई मिड है डोर बंद करो आराम से एक स्मोक में इवन गया बीमे ने क्या एक मार्केट है जेट दो भी मेन एक भी मैंने एक स्पोर्ट्स फर्स्ट लेन आई एम कमिंग फर्स्ट लेन तू मरना मत वन मेन होल्ड ऑन ब्रो बस जिगल लेते रहे लास्ट साइड वैंडल उस पे गन पे दिखाई पीछे देख क्या भाई राउंड कुछ भी निकला शरीफ के शॉट से नहीं लग रहे इसमें ट्रिप पे तो यहाँ पे लगाइयो मिड में टेम्पर इधर आ
मैंने यहाँ पे पीक लेके ना टीपी कर जा पीछे। Just hold, so just hold. रैम यहीं पे कैसे लेना? इधर सेकंड लेन। I'm holding man. उसका साइड अल्टा चिल मारना। हाँ चिल मार वही जाने दो ना। भाई अभी हक दे सकते हो? अब कर रही है तो यहाँ पे तू यहाँ पे खेलोगे, यहाँ खेलता क्रॉस फायर खेलता है। Wait. एक और भी मेन, दो भी मेन, एक और भी मेन एक और है। जेट था, आ गया जेट साइड। -80 है जेट। साइड कैंपस के बंडल तो बात नहीं, इसके बाद नहीं चैंपियंस है। मैं अल्टी मार देता है, अल्ट मारने का मौका तो मिल नहीं रहा। मैं अल्ट मार के ना अगर बी में आएंगे तो ब्लाइंड कर दूंगा, फिर भी ले तू चैम्बर कॉल दे दूंगा ब्लाइंड करके। जब ब्लाइंड होगा ना उसके 2 सेकंड बाद अल्ट वो सॉरी रिकॉन रेडी रखना। हाँ रेडी है। इधर आता था ना। हाँ भी 1 3 हो गए। क्या है कैट नीचे कूदा क्लोज। बीमेन में स्टक है वो। इधर लेफ्ट की राइट। लेफ्ट ये जो अंदर देखे बीमेन नहीं रे। पीछे खेल लेन। हाँ चिल सो इजी। साइड कूदा शायद। देख रहा तेरा अरे बीमन तो नहीं गया ना वो। हाइड कर। 10 seconds left. ओमन में नीचे वहाँ पड़ी है। ऑफ किधर है? बराबर भाई क्या बचाया गेम में तेरे को। मैंने 10 फ्लैश फेंक दिए। यहीं पे रहे थोड़ा सा ना पीछे खड़ा होता कि ह्यूमन ब्लाइंड ना हो। मैं यहाँ से ब्लाइंड दूंगा, वो ब्लाइंड होंगे, नहीं तो पीछे मूव कर रहे होंगे। स्टेप पे दूंगा। ब्लाइंड नथिंग। ड्रोन मार रहा साल है।
smoked A भी. Market. Bro, jet. Rena. Okay. तू खेल के मार. मैं mid pick कर रहा हूँ. निकालो भाई निकालो. वन निकालो भाई निकालो. भाई आपको बाय नहीं देगा तो किसको देंगे ब्रो? हाँ भाई. तो ये बंदा भाई बाकी सब तो ऐसे ही है. अरे. A shot. ये शॉट घुस गया रे. ये शॉट हो सकता है. ब्रो क्या? तोड़ना रे. तोड़ दे भाई तोड़ दो. हाँ की चूत तो मैं 12 HP पे नहीं पिक कर सकता. I'm sorry. भाई चेम्बर तो अलग ही लेजेंड है तो कैट ही छोड़ दिया ब्रो. अरे स्मोक कर दिया उमन ने इधर. ये देख इधर स्मोक कर दिया. मैं किधर किल लूँ. किल हेवन आ गया मेरा. वैसे पर टीपी है ना तो क्रॉस करके भी पिक ले सकता है क्या? टीपी बाद में लगाया रे हेवन. माफ कर दो उमन, माफ कर दो. भाई तो मुंबई से है तो कैसे माफ करूँगा भाई? तू माफ करेगा मुझे? तुझे तो बोलो भाई. यार यहाँ पे पीछे रहे. बस यार. A main. तो रिकॉन की तो अभी मत के. मैं ड्रोन कर रहा हूँ. इधर से आ रहा है बड़वा. ये लड़का है. ये हेवन है शायद. हेवन. भाई क्या डराया उसको? आई उसको लगा यहाँ पे. उसको लगा तू यहाँ पे होएगा. इधर कहीं पे होएगा. इतनी देर से दिख गया. स्टिल वो जेनी के इधर वगैरह खोलता है. अरे वो दिमाग लगा रहा था. वो सोच रहा था कि इसको लगेगा कि वो यहाँ पे नहीं है. हाँ पीपे के सेटअप होएगा. ये चलते ना. मैं फुल अपना ड्रोन फ्लैश लूट ले रहा हूँ. यार ड्रोन चाहिए क्या? मैं तो अपना बोले क्लोन की बात कर रहा था. वो फ्लैश है ना उस पे क्लोन है ना तो शायद मेन ले लेगा तू यूरो मेन तो ले लेगा तू अकेले. ब्रो मैं साइड के नीचे वाला पोर्शन देख लूंगा. ठीक है मेरा ये वाला देख लेना पोर्शन. राइट भाई तूने यहाँ जाना है. ए मेन शॉट ही है देख के. क्लोज फ्लैश करो. अरे ऐसे देख के पीछे शॉट है भाई. बात कर ले. हेवन 2 शॉट 3 शॉट. हेवन इधर ओमन मेन शॉट. भाई चेम्बर भाई स्किल तो आपकी में है. मैं देखा मारा क्या. टी पे वैसे अपन ना इजीली घुस सकते हैं. वेट करना थोड़ा सा. मैं ना टीपी मारूंगा. मेरा टीपी को यहाँ तक जाने देना आगे तक. और जेट तू यहाँ पे डैश हर बार. तो कंप्लीट वाला गेम प्ले ब्रो. कर रहा हूं मैं.
अरे मागे और एक कभी एक कभी और एक आया देखिए मिला है तो उधर अरे वे को मार जाके वुमेन स्मोक स्मोक है Which gun? वो है शॉट के सामने रख एक गार्डन है भाई घूम अरे सोवा कहाँ गया तू मेन गेट एक दे आप लेवल ले तू नाइस शॉट दो टिकॉन मेरा मेरा अंदर बैठ नहीं चिल मार भाई अंदर बैठ तू मेरे पे मार्शल है उन्हीं के पास आराम से खेल ब्लाइंड है चिल मारा सुनो केजे 70 टैग है केजे 70 हां हां अभी आराम बोत लो 90 80 अभी नहीं था ट्रांसफर मेरा गलती है मेरे को नहीं करना था सॉरी अबे मैं ले लेता दोनों को वो साइड है स्मोक कहाँ किया तो स्मोक तो नहीं रखा था कहाँ गया स्मोक अरे नहीं मैंने थोड़ा अंदर किया था क्योंकि अगर मैं यहाँ स्मोक करता ना तो उसका हेवन अंडर हेवन ब्लॉक हो जाता अरे कुछ नहीं होता एक एंगल कॉर्नर वाला पकड़ा हुआ था उसने वैसे ये तो इसमें बंदे करते थे ना कॉर्नर पे चल कोई बात नहीं मैं मरेगा तो मेरा मार्शल ले लो भाई चल फिर जल्दी मार आई टेक इट मिड शॉट देखो मैं मिड देखो अरे बी पुश बेस आ गया क्लोज है इवन निकल ओमन लेफ्ट में तेरी शॉटगन आई की बताता हूँ यहाँ पे स्मोक कर और फेक टीपी कर दे क्लोज को अरे यार जेट तेरे इसमें बुलेट्स होते ना मर जाता यार का ये ट्राई करते यूरो का क्लोन भेजो पिक करने के लिए स्वागत भेजो इनको करते जीत जाएंगे आ जाओ मिड लाइक देखो उन लोग का भी मेरा फ्लैश नहीं है राउंड नहीं है क्या शॉट रन देना इधर से ही दूं क्या नहीं ये ओमेन का कुछ करो रे सोवा यहीं से दे आगे तो मेरा ड्रोन है ना शॉटगन खेल रहा होगा ओमन यार भाई तो जा ऑफर है और क्लोज लेफ्ट शॉटगन है यहाँ पे ओमन का बैक नाइस सुना पिकअप ले लेगा ये चैम्बर रुक जा ए शॉट आ रहा है उसको ले ले चल भाई सो ए शॉट जेट ऊपर है जेट ऊपर है ए रिकॉन दे मार की चुद रिकॉन दे 10 सेकंड यही नहीं ए जाओ ना केजेबी पे सुवाई से सुवाई एंड पे खेलना कोई भी आई शॉट हेवन ए जाटू सो आप एक मत दे उसके कांटेक्ट पे लेना बिग्स
राउंड है भाई, राउंड है। फिर क्या थोड़ा स्लो खेलता है। मेरे को बिग और को बिग बैक एंड करता हूं। होल्ड करो, पे साउंड मत देना। स्टार्ट में इधर एक डाल रहा हूं, रहना पुश करता है। रहना ऑफ कर रहे हैं मार्केट क्यों? पीछे करते हैं। मार्केट एक मार्केट है। शॉट ले। दो मार्केट। वो मैं आ गया। हाँ 2 मार्केट। नाइस और के आराम से खेल हेवन नाइस हेवन के स्टेट प्लांट है। ये मार्केट है। तुम लोग का गेम है। अल्ट मेरे पास अल्ट करूं? कर दे भाई। नहीं मत कर हेवन होल्ड कर रहा हूं मैं। ये मेन हां इतना शॉटगन ही ले, कोई बात नहीं। मैं हिट करता हूं और फ्लैशेस करता हूं, मेरे साथ घुसो। एक घुसेगा, बी घुसेगा, बता कहां घुसेगा। या वो शॉटगन मेरे को दे दे। ये ले वेंटल ले तू। हां शॉटगन बाय करो भाई। मैं यहीं से अल्ट करूंगा, ठीक है? चल मारना, पीक मत लेना। एमएन कोई भी पीक मत लेना, कोई भी पीक मत लेना। मैं प्लांट स्पाइक दे, मैं प्लांट लेके आता तो मेन खेल मेरा तेरा अल्टी है ना। कोई भी मत पीक मत लेना। वो एक मिड से आओ ना, पर लेट मिड से आना। एमए यहां जा। क्या ऑफर है? एक 2 शॉट गए पीछे। आ जाओ साइड आओ। ये रहा। राइट। अरे हेवन वो तो क्या देख रहा है? मत क्या वो उसके अंदर होता। चेंबर अपना पोजीशन मत देना, तू बैठा रह, चिल मार। पर है ना छोड़ने के लिए। नोवा बैक हेवन से नीचे। हेवन मामा चुदाओ। ये कौन है? फ्लैश है एक फ्लैश। लाइन के रोमन। बैठेगा वो स्टिक कर रहा है। भाई भाई मैं तो कुछ भी पिल जा रहा हूँ। बोलता है ना मेरे को माँ मत चुदा पता नहीं कैसे, मतलब अनइंटेंशनली चुद जाती है। सुनो यहाँ पे ना क्लोज वो खेल रहा है, क्या नाम है तो उसका? ओमन। हाँ चिल मार मेरे को ना टीपी डालने दे अपना, थोड़ा सा पीछे तक जाएगा, मैं फ्लैश करके टीपी करता हूँ। मैं इधर ब्लाइंड दे सकता हूँ उसको बोलेगा तो। हाँ नहीं अभी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्लो करके खेलो। जेट तू अप ड्रॉप करके डैश करना। ये अपर मिड बॉटम अपर। चल भाई ड्रोन देना, सो ड्रोन दे। व्हाट अरे क्या और एक इधर है रे। एक हेवन है। क्या लगी नहीं थी बुलेट्स भाई, प्लास्टिक की है यार, बुलेट्स ही नहीं लग रही। किसका अल्ट है? ओमन का अल्ट है।
आ जाओ जाओ, सुन बी पे घुसने का ट्राई करते हैं वो। मैंने इधर सुन, एक स्मोक बताता हूँ। मार्केट में ना ऊपर पे स्मोक करना, ठीक है। सीटी स्मोक करना। जेट तूने यहाँ डैश करना, ठीक है? तू यहाँ डैश करना, अभी रुक के जाना। मेरे वो पहले मेरे को क्लोन करने दे, फिर सुबह को ड्रोन करने दे। और रोमन अल्ट मार, दोनों स्मोक करके। मार्केट एक चल मार। अरे एक और पीछे फ्लैग। और के -80। हेडहंटर। टीपी था क्या? नहीं था टीपी। अरे मैं बोला तो जेट भाई वेट करने को। अरे हाँ भाई मैं स्मोक में मर गया बहुत। अब वही मैं देख रहा तुझे, तू पिली जा रहा हूँ, उसे पीछे भी नहीं हो रहा। पीछे सुबह ने ब्लॉक कर दिया। पता है क्या हुआ, उसका स्मोक इतना वो था ना कि मैं लेफ्ट राइट हो रहा हूँ, स्मोक ए पे करो। मैं फेक कर रहा हूँ बी पे। नहीं मेरी बात नहीं, थोड़ा फेक कर, मेरे को टीपी मारना था, मैं निकलता हूं। चल फिर आजा जेट अप ड्रॉप करके डैश करना। ओके डन। यहाँ पे जाके जा। कैसे यार नहीं जाना क्यों है? अरे मेरा बोल क्या सिटी एंड मार्केट। एक मार्केट एक सिटी। काय करू बेंचो भाई तभी बोल रहा था फेक करो ए पे। और ए पे कौन कर साइट वगैरह फेक नहीं करते, मेडी करते हैं। मेडी का बीट है। अरे बैक साइड होल्ड करते हैं। यहाँ पे पता क्या, बी खाली था, यहाँ पे जाता तो बी खाली था। बी वाज क्लीन, दे वर प्लेइंग ऑन रीटेक। आप भाई कर लो ऐसा कि नेक्स्ट भाई आ जाए। भाई 6 किल के बाद क्या लग गया भाई? ए भैया मैं आ गया। यूरो ड्रोन आ रहा है। कैट मैं कैट स्मोक कर रहा हूं। और एक आ रहा है। और ये भी है 16 यहाँ पे। मार दे इसको। एरा गाइस ये ओमन ने बढ़वे ने किया तो अल्ट किया। अरे तोड़ दिया। आजा। अरे सिटी के अरे एक मिड में मार। लास्ट सिटी आएगा शायद, सिटी आएगा, चिल मार। तुम्हारा बाप आ रहा है, आराम से खेल। फर्स्ट लेन आ सकता है, मेरे को पता नहीं है वो कहां है। नहीं है, वो सिटी आएगा। आपका राउंड है भाई, तो मतलब को कौन क्या फर्स्ट लेन आएगा? कोई बात नहीं ब्रो, क्या राउंड निकाला भाई, मजा आ गया।
अपन भी भेज रहा बी फेक करते हैं और फिर से बी एग्जीक्यूट करेंगे। मिड देखना तुम, मिड पुश आएगा, मिड पुश आएगा। क्या करना है? चिल मारो भाई, चिटवा करके पी लो। मिड लो भाई लो कांटेक्ट लो। बीमेंस स्मोक दे। मिड टॉप आ सकता है। सारे शॉट ओपन करो, सारे शॉट आओ। मेरा से एक फ्लैश है, जल्दी आओ। ठीक है आके करेक्ट लगा के लो सारे छोड़ो उसमें, साढ़े नहीं होना है के साथ। नाइस वन यार Spike down A. Player standing. चेंबर साथ में ही आना था मेरे भाई। हां मैं ए पे को मैं बी पे फेक करके आता हूँ। ए पे रहना, ए पे सिर्फ ओमन खेल रहा है यहाँ पे शॉट ही लगा के। सो तू आर्म लेना, प्लांट लेना प्लीज। पेनल्टी है भाई। किल मारना है पे। ड्रोन कर रहा हूँ स्टार्ट। बैट नहीं बैट सो बैट बोल रहा है भाई। जेट ऑपर इधर मिड बॉटम। जेट ऑपर है मिड बॉटम। चलो चलो और लेने दे मेरे को। चल अल्टी के पास नहीं फ्लैश है। साइबर खेल रहा है। वापस चलो अब फास्ट चलो। ऊपर मिड बॉटम पहले बोल रहा हूं। कोई बात नहीं, चल सो आई मीन पुश हो सकता है। आके मिड लिंक के को जिगल देना। स्मोक क्या स्मोक है? आज बस पोस्टमैन खेल लो। जेट अच्छा घूमने जाना पड़ेगा। बस आराम से गिर राइट पे फर्स्ट एक सिटी है। किल हाइड करो अभी 7 सेकंड हाइड करो। 3 सेकंड में रिवीन है, चल मार। क्या गया? ठीक है कर देंगे टाइम में पहले। ए ऐसा मत करे। जी भाई क्या मीटिंग कराते थक दिया रे। इसे रेस खेल लेता मैं। एक मिनट आ रहा हूँ मैं। और मिंटू भाई
भी गंदा क्यों था भाई मैं हिट करेंगे then we go and grind pal world bro joy boy Blind push after throwing up the dizzy, falls back instead. कौन जीता इसमें Showstoppers up. Fuse has not been lit just yet, and it looks a little chaotic for them to get into the site. Showstopper down. Try to get a timing through that. A nice shot from Oxy. Acing down with a second headshot of the JZZ. Whippy's still alive. he could have done it Double backstab here. So the door being opened up for Mazine to fall back within B. And FRZ will cut the rotation. The thing with only having really one path to victory round after here, we said it was pure take for C9. Corner is held by a member of MI. A lot of impact within the round. There is that. Some stay, he's still. Sangle on the top for Vanity, so technically, potentially even a 4 versus 1 for the retake. Nice angle on the top in front of. 4-3 में जाता है यार C9 there. So they stop that and reset the money over inside them. Big toes there at that Artesine head. Out. Still that ultimate for Jake. Can't really use it too much unless you're repositioning with the Omen. A nice early fade out. And they get that Prowler some good information. Ooh, door open? The door games. They start. Rare moment here for MIBR to work towards his B site, and C9 just wanted to fight that right away. Now continuing with the one-ways, they're kind of just leaving Pin holding back towards the spawn still. But Mazine scale up, lurk, and break the alarm bot. Vanity is already rotating across. A little delay on the door open. Nicely played with Thresh goes out. Just bring it back for re-grab after a minute. And then they'll be back into this one. They'll dart through, and this is potentially even just another fake to break the baby door. Hobbit now broken. Execution towards the B site. Oxy playing close, tucked in towards the heavens. Now moving within the pit with Zeppa together. Both of them spraying as they did get at least one within the seas. Boom Butler trying to clear it out, and then a Thrash moving forward, right through, does not get a pick, but Zeppa gets a spray down onto. Spike now down as Whippy gets another one, and FRZ's alone all the way back towards Rubble. Spotted now by Oxy, and Oxy's chasing after it to get that pick. भाई Oxy क्या खेल रहा है भाई Columbia and just other matches that they've few maps with playing further back. MIBR found a way to shut it down quite a bit in the first few maps with playing further his own. The team is there to support as much as they can with the utility, give him the space he needs. All right, possible final round here as Euroman bro support my team. We're on our third map of these two in their first go around here in the 2024 season VCT Kick-off. The towards C is going to be the hit, and it looks like a retake for Cloud9 fans. MIBR is digging deep in their pockets here, backs against the wall. The buy is broken, and with that aggression you saw from Cloud9 towards that A site, MIBR is pushing towards C. They even want to fight towards the waterfall. Holy. They're going for it right now, and they're trying to pinch within the B site. The lineup from Jake. Crazy pressure. That is not going to be good here for MIBR, as they feel like their hands forced to plant within the C site. Jake just got eyes on them from the shadows, so they're pretty good to wait this out and wait as well for Zeppa to get here along with Vanity, and they are going to nail this site. Paranoia is not there, smoke to use though. Guardians, all that's left. RGL gets that first pick and a second one. The flick on the third will not happen as Vandy closes the series. They're waiting for me. MIBR felt like they were in the driver's seat for most of the time. The timeout. Oxy को भाई ऐसे उड़ा दी. Most of doubted like it. A good one, I should say, series into this game. What a good one, I should say, series. This game was a back and forth one. But undoubtedly, man, I was voice tomorrow because that man was cheering after every round. Dang. Bro, that's Zeppa. I thought Zeppa is a girl, bro.
Viper, play from behind, bro. I'll start and we can kill them through the smokes. Viper will be. हाँ 105 साइफर महाकाल वाला फील्ड लेकर आया है साइफर एक HP है Jet back side. दोनों पिलर ये लाइन अप अच्छा है Sova is a good agent, bro. Why have I never played Sova before? I'm just learning to play Sova. और मिंटू भाई क्या हाल चाल? Viper will be again. Okay, B. Carol's. एक मिनट है वाइपर है मिनट One Viper mid. Spike down B. Planting B. Spike planted. Viper is 1-on-1 plan. I don't know Hiding behind that. B main में hide कर दे यहाँ पे. There was one B main, one side. Just drop some guns. Pick vandal, take it off. Yeah, run. Behind you. Bro. Oh, give me the vandal. Take. How you doing? Thank you. Everybody playing it. Are you impinges, Jet? I need to play because I have still one guy. Sounds it. Viper will be. Nothing here, just rotate. Open your smokes, open your swarm grenades. Watch elbow. Open the swarm. Already. Half ball. Two city. Both city. Last city. Never mind. 92. Thank you. Bye. Go race with Maggie. I can drop that for you. Can you sell Sell Viper? karo. Wait, let me flash me. 1 minute. Coming up.
Cypher is holding outside A. They're already up. I think his elbow. On his elbow. Spike planted. And a 40 jet. Built up top. Dead. I have reaper mid. एक yellow है आगे. -140. What are we doing? If they're taking one side, just fall back on that. Need a drop. Outside A, multiple. Can थोड़ा क्या? Not in it, not in it. Can you guys watch my mid? One that I saw. They're going B. Going B. Okay, can I be? Wait, I cannot. Ball right. की तरफ जा करना वैंडल दो ना जिसको फैंटम चलानी है भाई दो ड्यूटी सिक्स साइड पे क्यों खेल रहे हैं साइफर ये क्या नाम है तेरा अरे मैं ऑफ करूं मेरे भाई फेनिक्स तुझे ही खेलना भी खेलना चाहिए मेरे भाई नेक्स्ट राउंड से भी खेलना नहीं खेल ले यहीं खेल ले लेकिन गवर्नमेंट में क्या लॉजिक है इसमें एमएन कुछ साउंड ब्रेक मिड हॉल रिकॉर्ड Oh, Cypher mid. Spike drop. Spike down. Oh fuck. Spike drop हुआ है यहाँ पर ये lobby. Player standing. Yeti jet. Last ये lobby था. ये नहीं. अरे भाई वहीं छोड़ रहा था भाई सुबह पहली बार खेल रहा हूँ मैं 63 का हिट मारा उसको मैंने अरे 1v1 में इतने पास से अल्ट कैसे कर सकते हो तुम यार अरे छोड़ने वाला था भाई एक्स दबा रहा था एक्स शूट ही नहीं रहा था अरे आराम से क्या हो गया चिल्ला क्यों रहा है अरे माइक का थ्रेशोल्ड ज्यादा है समझ ले भाई तो नहीं आ रहे कलर करता है
फ्लैश चलेगा मिड है एक्शन है Spike down A. सिटी में गन पड़ी है येलो है शायद एक Spike planted. अभी यही खेल लो भाई, बी कोई मत खेलो। Get out of my way. Standing ahead. और ब्लर कर बैठा है हार्ड कर रहा हूँ बचाओ बचा दिया भाई बचा फ्लैशिंग ओह फक बस He's here. ऑफ ले ले भाई, ऑफ देने यार ऑफ लो उसकी चलो सबसे बढ़िया तो यार If you're not a good shot today, don't worry. 50 डाल दिया मैंने उसको। नो रिटेक पे छोड़ दो भाई। अरे यार मार दिया उसको जब वो एल्बो आ था ना, तभी खेला मैंने शायद उसको। क्यों साइफर? Why are we guys playing a चलो मैं तो बैठ के था Carol's माँ का लौड़ा है यार भाई सुनना सारा यूटिल है, फिर भी सब उधर ही लगाना कीजिए, हॉल्स में लगा दो ना कलाम बोट मेरे भाई। ये साइफर काउंट करो ना, ये एल्बो रिकॉन दे एल्बो जा रहा हूँ काउंट कर क्या पैनिक करवा रहे थे हराम के पिल्ले हमारी टीम वाले, क्या पैनिक करवा थे। अब मिड बॉटम नहीं इधर ही है साइफर ले अरे नहीं येरा ऊपर चढ़ा है। मैंने छोटी जीत जाना, मैं प्रूव और ना हार गए तो ये वाला राउंड भी बैक साइड क्या डिफेंस मारना मैं भाई, डिफेंस देख रहा हूं भाई, that action भाई, that action
have ult. I'll just alt elbow. I'll hunt their cypher. I'll go with him. I'll recon mid. Yeah, recon mid bottom का दे दे हाँ. हाँ वही दे रहा हूँ. Bottom का नहीं है यार मेरे पास. बॉटम भी ये इधर दे देना, इधर लगेगा ना जहाँ पर साइफर का कैम होता है, वहाँ पर मार देगा. हाँ साइफर वही ओके. हॉल तो नहीं हुई. हॉल पे होगा एक. हॉल पे. Two more main. Two main. मार रहा हूँ मैं. Player standing. हाँ नहीं. Spike planted. Remaining. My ult is ready. वापस अल्ट कर. मत कर. ए कर दिया था ऑलमोस्ट. अरे हॉल हर राउंड बोलता हूँ मैं. हॉल देखो. हॉल तो पूरा इग्नोर करते रहते हो. जेट पुश हॉल. Go. Just walk from left side like this. शॉट लेना तेरे को. ड्रोन दूँ मैं यहीं से. मिड वो. मैं तो जा रहा हूँ एल्बो. आजा एल्बो जा. Healing area. दो मिनट. दोनों मिनट लास्ट. ये देखो ना, ये क्या ट्रिप है. Switching sides. क्लासेस के नहीं सीरियस. कहाँ चलना है? बी चलना है. बी चलना तो लेट मी ब्रेक हिज ट्रिप्स. बी फास्ट करना है. हाँ मैं रुक जा. यहाँ का ट्रिप और यहाँ पे शॉट डाउट मार रहा हूँ. जहाँ भी ट्रिप होगा टूटने के लिए. यहाँ पे एल्बो देख लेना. राइट साइड फ्लैश करूंगा. राइट साइड फ्लैश करूंगा. वाइपर एल्बो देख लेना. देखो स्पाइक क्यों मेरे को दे. हाँ देख ले. क्या तू देख. एक का 5 वापस उसको. One nest. आगे दो आ गया वैसे टीम. भागो 105 साइफर. कितना चूतिया इंसान है. हर राउंड शील्ड लेता है. हर पिस्टल राउंड. अटैक में भी डिफेंस में भी. मार भर दे. भाई ये कैसे. एस दिख गया होगा उसको. एस तो आगे कौन सी एस लगी होती है भाई. हाँ आगे कौन सी एस लगी होती है. गाइस मिड पे मारते हैं उसको. कैसे मारेगा भाई. वॉक. चिकन तोड़ना उसका आएगा. और नेक्स्ट पे जेट है. बस
बस पिक लेने की जरूरत नहीं, अपन हॉल जाएंगे। ओली मोली, वन पुश। आ रहे हैं अपन। Guys, can you like stop shouting? Me? Yeah, I guess. Spike down mid. Coming. Eji, can you put a backstab it? Here. Carrot or something? चलो Cypher यहाँ पे. Cypher and Viper both are here. Let's go. Good mission. We push. What? How? Sova is here, Viper is here. Sova and Cypher are here. रेना का पता नहीं. रेना अकेला होगा यहाँ पे बी पे. जल्दी जाओ, घुस जाओ. रेड ले लो एक दूसरे का. कहाँ चला गया रिकॉन? बैक तब कर तो प्लान करने वाला दे रहा हूँ तेरे को। अरे स्क्रीन. सिटी. क्या है निंजा? Don't peek. अरे उस साइपर पे ये मैंने सोवा पे हक दिया, तो उसने देखो छोड़ के देखो पर किस्मत में लिखे हो. मैं क्या बोलूं, कुछ बोला नहीं. बी पुश मार्क करो ना. No, I'm good with guarding. सत्ती होता. फिनिक्स सेल चला ले ना. मार. वाइपर बोल रहा हूँ. वन मोर एक येलो कूदा. अरे सोवा तुम पीछे का रिवील क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं यार तो भाई बैक साइड में एक मिड है, डबल डोर. बॉल नहीं बोला तो सही. एक पिरामिड होना चाहिए. मेरे पीछे देख ले. मैं तो देख रहा हूं. हां देख रहा हूं. वॉल अप कर. उधर कहीं वो मिड है रे. आई थिंक को दिया जाने तो 2 सेकंड. एक तो रिकॉन आइस बॉक्स के देता है. क्या पता कहां जा रहा है. भाई स्किल है ये भी भाई. आ जाओ वीसी पैसिफिक देखते साथ में. करता हूं. चलो वो लगाते हैं उसके बाद. मेरे को सिर्फ एक मैच या 2 मैच सीखने. शुरू हो गया मैच. बोला इसके अंदर है. जल्दी टैग कर. पीछे का सेव है. जल्दी जाओ और मार दो. जल्दी जाओ और मार दो.
अरे जब इतना मैंने कॉल भी दिया सामने स्मोक में है। उसके वजह से नहीं आ रहे यार। अरे तो रुक जा ना, मैं ड्रोन दे देता तेरे को, सारा यूटिल अपने पास, पैसा पूरा रखा। बेटा पिक लेते हैं। क्या हाल है भाई, कैसे हो? ये वजह चलो, ये भी हो रहा है अभी। या तो तुम मेरे से आ जाओ, मैं यहीं पे हलचल में जाता हूँ। मैं मेरे से आ जाओ केजे, मेरे इनके साथ जाओ, केजे इनके साथ जाओ। हो गया अभी। नहीं जेट भी पे। हेलो हेलो ले जाए पिक मत करना पिक मत करना हम पिक मत करना जेट भी पे ऑपरेटर है ना। ये where are you? अल्ट है वापस। बढ़िया भाई। अल्ट है तो मेरे को ड्रोन करने दे, 1 सेकंड रुक जा, ड्रोन के पीछे जाइए फिर। नहीं मैं डरता नहीं हूं। यार तेरे भी नाइव्स है, एक उस पे और ले ले। हां नेक्स्ट राउंड काम आ जाएगी। और बैकस्टर देख लेना एक बंदा, केजे पहले इनिशियली करा के ना, मैं बैकस्टर देख लेना। रिकॉन दे, बस रिकॉन दे, वो छोड़ उससे हट। रिकॉन दे, बैक साइड है क्या? One mid, one B push. सर आपको साथ में करना पड़ेगा कॉज आपके वॉल का इनपुट चाहिए ना। वॉल के बिना कुछ नहीं होगा। बी आओ बी तो थोड़ा डीप शॉट मिड से आओ ना, मिड से आओ ना, मिड पे से आओ। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग बी पे करो, मैं मिड से भगते आता हूँ। भगते ये रिकॉन दे मेरे को। ये रिकॉन दो, किल मिड डोर होल्ड करना, किल जाए मिड डोर होल्ड करना। बाकी तुम 3 इधर से आओ मेन से। सो वो रिकॉन एल्बो से नहीं दे सकता क्या तू? कहाँ भक्के जाना अब? खाली है ना? कितनी कवर आया भाई? एल पे खेल रहा हूँ। अच्छा go I will play on L. चिल मारो एक एल्बो आ जाएगा। जैसे नहीं एल्बो है, नहीं आएगा भाई, तू चिल मार ना। नहीं आएगा। सिटी था सिटी मिडोल Head है, सीटी नहीं है। टनल जिगल बगल आप ठीक है? तो अल्ट मत करना गलती से। ओ तक दिया मैंने भाई। कैसे मिड से आओ। ए मेन से मेरे को ड्रोन करने दो। जाओ मिड से आओ। ड्यूलिस्ट मेरे साथ केजी आ जाएगा सिर्फ। केजी यहाँ पे अपना लॉकडाउन लगाना। अरे जेड भाई मिड से आओ ना, जेड भाई।
लॉकडाउन की जरूरत नहीं। वाइपर कैन यू वॉल लाइक दिस? Close है, close है. लगाओ. दो है. एक और है, डबल एक और. One more. एक और है बैक साइड है. बहुत बढ़िया. पीछे देखो वाइपर. ये है यार. I can. तो आ जाएगा मत कर. मेरा भाई बहुत ज्यादा लाउड है क्या? I can buy jet. रिक्वेस्ट कर ले भाई. तेरा और ट्रोल नहीं होता वेबकैम माइक वैसा है तेरा. ऐसा है. अरे मिड से हो ना उससे. वेबकैम नहीं माइक बोलते हैं उसको. वेबकैम का माइक भी होता है. वेबकैम का माइक ही चल रहा. गेट भाई मिड से आओ. ये पलट गया. ये लो रे दिखते नहीं है. फिर बार खेलो. मिड आरो ले. Enemy remaining. Backside. इधर है मेरे close. I'm coming. ओए ये है ना वेंडर को स्लीप. भाई क्या करा. मत चला. अल्ट आ गया वापस. और तू बी में जा, बाकी सब एल्बो आ जाओ. मैं यहाँ से ना ये नेस्ट का वो देता हूँ रिकॉन. सारे एल्बो आ जाओ. उसको बी में जाना है, उसको अल्ट है. अरे तभी तो मैं रिकॉन दे रहा हूँ. यहाँ से रिकॉन दे रहा हूँ ना. बहुत बुरा पिटोगे तुम लोग. ऐसी वॉल करके जाना है. तो फिर स्मोक के साथ जाना जेट के. नहीं तो मिड डोर से पिटोगे बहुत. अरे नहीं पिटते. बहुत पिटोगे. मादर चोद में को बचा लो. मेरी बहुत बुरी शॉटगन लेके बैठा है ना. दो है. तीन है यहाँ पे. तीन है पीछे हो ना. तीन है. अरे इधर आना कीजिए. साथ में तीनों उधर तो. ओए My fucking god. चल. मैंने सिटी 6 रहना ही. Let's do mid 2 here, right? Watch out. तो कब से बोल रहा हूँ भाई. भी जाना ही क्यों. चलो इट्स ओके. सबका जेट सामान पूरा आ गया भाई. ये तो रिक्वेस्ट कर सकते हो. लास्ट राउंड है. केजे के पास है पैसे. फोन यहाँ से तो होगी नहीं. यहाँ पे एम करके रखना जेट. केजे यहाँ पे एम करके रखना. ठीक है मेरे भाई. यहाँ पे से पीक ले सकता हूँ. मैं लेफ्ट जाके ड्रोन दूंगा. एम करके रखना. और कुछ कह रहा है यार. यहाँ पे साइबर क्या बढ़वा. केजे कम बैक. पुश करेगा. आजा कोई बात नहीं. मेरे एक्टिवर्स कोई बात नहीं भाई. कोई बात नहीं. कभी हार कभी जीत. मैं तभी तो योरू खेल रहा था इस मैप पे. फिनिक्स अच्छा खेला भाई. पर इस मैप का एजेंट नहीं है फिनिक्स ना. कुछ खास कर नहीं पाया. ऊपर से मैं सोवा सीख रहा हूँ. अभी खत्म हो गया क्या अमेरिका से.
भाई Pacific's best teams will punch their tickets to Masters Madrid, where top 2 teams from वाइपर करना है सही में भाई Level of 8 will battle it out against each other. Qualification for Masters Shanghai and champions will be determined based on the performances in the international leagues. Which brings us to the champions points. Starting this year, teams will earn 1 point for each win, Kick-off, International League, and Masters events. Teams with the highest amount of points from each league will qualify for Valorant Champions 2024. Moving on to patch updates. And then we have the tube. 2 boxes have been placed by the wall, and now there's a window near the end towards the B tube. Good luck holding mid, everyone. Last but not least, snow pile. With the additional containers on the right side, this area now is a single lane path, which means the rotations will be easier to predict. And that's what's in the box, the new ice box. But we also wanted to hear from the user, so we're gonna have a special chat with ta-da! This is the president of the Korean Valorant scene. Can you please introduce yourself? 소개 부탁드릴게요. 한국에서 이제 스트리밍을 하고 있는 스트리머 김대모라고 합니다. 반갑습니다. Yay! This is our Korean streamer Kim Demo. Now, right off the bat, do you like the new Icebox? Yeah. What do you play on Icebox? I play Yoru. Yoru. That's it? Yoru, done? Only Yoru? Yeah, only Yoru. Yeah, only Yoru. Rate the new Icebox out of 10. I think 0. 0? Yeah. Why? Not much change. Oh, not much change. So you give it a 0. It feels like no change has been done. Okay. Well, in your opinion then, what other maps need to नहीं आएगा स्ट्राइक पे नहीं आएगा I think Sunset. Sunset? Yeah. Okay. Balance is not so noob. Balance is so new. Yeah, so noob. Okay, we need for balance in Sunset. Hear that, Riot? Well, thank you for the interview. And there are still plenty more to talk about regarding the new season, but that's not for me. That's for the guys at the desk. So over to you, Victoria. Thank you, Jen. It's going to be a super fragalicious year at Valorant Champions Tour Pacific. It's kick-off time where all roads lead to champions. I'm your host, Chubby Ninja, and with me I got my analyst, Will. Was that really the president of Valorant Esports? I mean, well, not Valorant Esports, but Valorant overall in Korea. For those of you who don't know, the gentleman who just interviewed, his ID is Dwenmo, and he's actually part of Team IM. He's going to be playing in Challengers Korea coming up alongside the old DRX Zest. So he's been around for a bit. I'm interested to hear his opinions there. He's got some hot takes. We'll see how those carry through for the rest of the year. I mean, he's got that ear piercing. He definitely looks like a Euro main for sure, at least for me, you know? But Quack, I mean, when we walked into this venue, it's Icebox theme. What do you make of the whole stadium this year? I mean, when I woke up and I came be here, right back. looking at the design of everything, it's almost like we're actually an Icebox. It's cold out, and then the design of everything just looks so cool. I almost want to pick up this Gecko and go like, dude. वॉल्यूम ठीक है जरा चैनल पे तो तक मैं 1 मिनट में आया Little homie, go. Little homie, don't punch little homie. Oh my goodness. All right, What do you mean you don't want to plant the spike? All right, let's talk about that. But leave him alone. The old Arctic map is back. The question is it going to be Nice Box or Nightmare Box? We're going to look at how the teams have been doing. What do you make of this, Will? Is it going to be Nightmare or Nice? Well, this is, for one thing, this is obviously based on their past performances, like cumulative throughout. So I think certain things are kind of skewed. For instance, like Paper Rex, they're going to have high win rates on every map anyway throughout their career. So do they really prefer it or not? That's a big question. But I would say the teams who used to struggle on it, the big question is all of those teams have gone through major roster changes. Does that now enable them to take advantage of these map changes? It really comes down to the calling, in my opinion, more so than mechanical skill. Yeah, definitely. I mean, the coaching as well, and how the new compositions can come into play. I mean, now that we've got Gecko buffs and everything as well,
there could be a lot of changes. That's right, with Wingman there who you're abusing on the desk. Sorry. Okay, now Icebox was not the only map with a facelift. Lotus also had some changes. Now here are the agent picks from previous pre-patch. Killjoy ranking at the highest at 88%. What kind of agents are we expecting to see on the refreshed Lotus? Honestly, hard to say, right? I mean, Sky is definitely one of the biggest talking points that we will have so far. Deadlock. Will's already Sorry, going something was into caught in my throat, yeah. If we focus on just initiators, I do think maybe Fade could come into play a little bit because Lotus changes. There are so many more like gaps and corners that you need to clear out. Prowler could be very useful, but still, you want flashes. Yeah, I mean, this is going to be one of those maps where Sky was so dominant. Does she still remain good enough to be a solo initiator? Because with 3 sites, now not being able to go on those cooldowns and refresh those guiding lights, how much do they value, right? The actual utility of that skill versus the timings that you can have with some other agents. Now, one more map had a little bit of a change. Breeze over in Bermuda. They can never seem to make up their mind if those halls are going to be closed or open. Well, it's open this time to make that absolutely clear. Maybe not in all regions, but it's definitely open here in Pacific. But let's talk about guns. Outlaw. Now, this is the real game changer. It's a double-barreled rifle that sits between a Marshall and an operator. How do you think this is going to play out with all the Pacific teams? Well, I think the biggest thing is simply the fact that this weapon exists is a big deal, right? Because now Discord है ऐसे 2 मिनट रुको भाई you can't try to डाल do दो something crafty with the half armor. And also, if you're in those rounds where it's like, well, we could go for a half buy and try to build up our economy, simply the idea of, well, what if they buy the Outlaw? I think that's the real threat. And then obviously we see, certain players that are going to make great use of this here in Pacific. I think we're loaded with Outlaw and Operator players here. I mean, come on, it's Pacific. We've got so many great aimers in this region. Those 3 names that you just saw are already definitely some of them. And you can just think about the Outlaw as that option that they have. There's so many mind games that comes with this. Yeah, that's right. I mean, how do we counter something like the Outlaw with players like Laz and Ye so strong with the Outlaw on Chamber, and now when you have this gun, this double-barreled rifle coming in, how is this going to go? Yeah, and I mean, there's just a lot of uses for it. Hopefully we'll see it during the games as well so we can touch upon it further. But, I mean, even this team that we're seeing, right, getting ready for their first match today, they've got several players that can make good use of that weapon as well, like Xcure, like Saya player. And, of course, one of the players we mentioned everyone's been waiting for his return to Tier 1. It's Ye alongside players like Scary. This entire roster of Bleed, very excited to see them here in the arena. Yeah, new Bleed design jersey as well. I mean, it definitely is just one of the biggest opening matches that we will have. Outlaw, Ye could definitely use him. I mean, he's going to be that strong aimer. आना खा लूँ भाई मैं फिर आता हूँ Discord में ना Ye as well, right? That's right. I mean, this needs no introduction, but we need to introduce him anyway. Now, right now, we're looking at his 2022 optic. मैं बाहर से फ्राइड राइस लेके आया था घर पे मम्मी ने पराठा बनाया हुआ था तो मम्मी को भी मना नहीं कर सकते तो अब फ्राइड राइस और मंचूरियन along with आलू पराठा cheers. Now, the big question everyone has is, was that because he couldn't keep up with the meta and the skill level of all the other players? Or was it simply kind of this meta and compositional, maybe some chemistry, things like that, as he had to work with new teammates? And the big question for me is, this year, here on Bleed, this is where he proves, is the 22 Ye the real Ye, or is it going to be the 2023? The 2023 human Yeah, the human Ye. No longer El Diablo, that's one thing. Now, after 608 days, बस 5 मिनट दो मैं खाना खा लूँ we've seen a change on the रुको आता हूँ That's a long time. Flashback is in, RV and Zest are out. अगर Discord ज्वाइन करूँगा ना मैं तो फिर आपको ही मजा नहीं आएगा देखने में रुक जाओ मैं आता हूँ This is something that can give a very structured DRX a lot more flexibility. Of course, we saw Foxy 9 last year. We know how strong he can be. Insane duelist, but then sometimes it just kind of goes off the cuff, and maybe sometimes you want a little bit more structure. You want someone who can control off of that. Flashback is someone who can come in to balance all of that out. That's what I think. You'll have a team that can just kind of play off of each other that much more better. Like, they can adapt to each other that better. And my biggest hope is, you mentioned, obviously, Foxy 9 sometimes kind of went off on his own. The problem was his team wasn't there to support because that's not their style. Now with Flashback, hopefully they actually lean into that a bit more because both of these players are clearly very gifted mechanically. Now this is a sibling rivalry that we are here to see. The Susantees
Jason and Kevin Susanto facing off. Paper X Forsaken and T1 X Accurate. Now, Forsaken's known as one of the best players in the Valorant world, but his older brother comes in with his own street cred in the world of FPS games, doesn't he? Huge street cred. I mean, you know that he can be such a strong offer. They played in AVL and they had such a great performance as well. They did lose to PRX though. Yeah, but he did put up better stats than Forsaken. Right? Okay, I just want to point this out, okay? Obviously, small sample size for Xkillz, but I think the fact that he has that confidence to say, I might be the new kid on the block in Valorant, but I know that I have the mechanical skill to keep up with everybody else. He's not backing away from any fight here in I'm VCT the older Pacific. brother. I got that experience. Sit down, respect me, and let the game talk. Now, last year we had 10 teams, and this year with the addition of कहाँ से मिंटू भाई आवाज आ रही है? आ रही बराबर. I'm feeling upgrades across. ये कैसी रीजन नहीं आपकी? Paper X, where I'd say was more of 6 घंटे तो मेरे को बस में बैठा रहा मैं. 6 घंटे? Are we going to see a huge stylistic difference in this year's regional gameplay with all the roster changes? I think the biggest thing we're going to see is much more aggression. A lot of these teams have either picked सही है भाई सही है. मेट्रो से लगा फिर ये आधा 40 मिनट ऐसे कुछ. दिल्ली में कहाँ पे रहते हो आप? दिल्ली में अपना हौज खास है ना. हाँ हौज खास. हाँ उससे 10 मिनट की दूरी पे एक और मेट्रो स्टेशन है, वहाँ रहता हूँ. हाँ सही है सही है. हौज खास सबको पता है इसलिए हौज खास बोलता हूँ पहले मैं. ऐसे बोल दो सीधे समझ में नहीं आता किसी को. I mean, well, so many of these groups just look so scary and interesting at the same time. I mean, I'm just looking at Team Secret and Talon, for example, right now. क्या लगता है कौन जीतेगा? And with all those changes, like the पहला मैच T1 versus expecting more aggression, बीट का है. and I अच्छा. just feel, you know, you want to see some of the teams from last year improve. टेलो नहीं है तो BFM, for और कौन example. है? Talon और bleed. Talon versus bleed. अब अभी तो पता नहीं bleed में ये था कि नहीं, अभी आया शायद ये. पहले खेला था. ना इस साल आया. लास्ट ईयर Cloud9 में था. हो सकता नया अभी रोस्टर है इनका, मतलब एडजस्ट होने में टाइम. ब्लीड जीतेगी, ब्लीड जीतेगी. ये है तो भाई कुछ भी हो सकता है. चलो ये है इसलिए मैं ब्लीड की तरफ हूँ इस बार. मैं भी. देखने मजा आएगा. I think things could be unpredictable. I mean, yeah, you just play that one match in the semifinals. That determines whether you go to Madrid or not. And then, of course, you go to the finals. Now you're also fighting for those championships. You're the first team to get that first step towards champions, which, I mean, who knows where it's going to be. Normal जो 4-5 सेकंड का होता है वो तो होता ही है. That's the big goal at the end of the year. Who knows where it's going to be true, though, and that's just the thing. I mean, every single match counts, and that's why starting things off with this one. मेरा आवाज कैसा आ रहा है? Oh my goodness, T1 Perfect, perfect. I'm just writing the मेरा भी माइक सेटअप कर लिया मैंने. Oh wow, okay, just slow that down. Okay. This is सही है भाई. This is an incredible first matchup. T1 has so many new players replacing their old roster. Bleed, first time here in the franchise here in Korea with us. Now, EagleS is also stepping in to Bleed. He didn't play with them last year in Ascension. Not so much, but he was definitely a huge part of the Singaporean scene. Finished military service and then came back to it. Aim is still as sharp, and that's something that we did see from Bleed when they played at Riot 1 in Japan. But the other whole thing is just the fact आपका कौन सा माइक है वैसे? कंडेंसर है कि कंडेंसर ही होगा? कंडेंसर लगाया नहीं हुआ, ब्लू येटी है. That's right. Now, Saya Player and कौन सा? they have faced off. So these two teams have Blue Yeti. You know, since Bleed has ascended, but Saya Player and Ye, they got some history. I mean, they go way कंडेंसर back, के right? So in the year 2022, वैसे where माइक Ye अभी आते हैं क्या? was undoubtedly the best player. हाँ हाँ. One of the players that was always putting up a fight or at least ये अकेला माइक ऐसा कंडेंसर लग से खरीदना पड़ता है. माइक ही बहुत अच्छा है. मेरा तो कंडेंसर है. नाइस. अभी नॉइज सप्रेशन एकदम सही आती है इसमें. That's true. We don't really know for sure just yet, given the composition of Bleed as a team. You know, you still got Darian, who could be that chamber/duelist, and everyone else along with it as well. I mean, EagleS definitely will be kind of that sentinel for the time being. But if we look at T1 at the least, you've got Carpena as the IGL. How does that change everything up? I got Saya Player with his अरे जल्दी शुरू करो भाई. like position अभी तो there. मैप सिलेक्ट करेंगे फिर बैन करेंगे ना जाने कौन कौन We mentioned से. the जनरली three-player कौन से बैन changes, होते हैं मालूम है? the T1 player lineup.
कॉम्पी में How are you अब feeling खा about रहे हो ना that? खाना Well, खाते I रहो think सुनते रहो खाली overall बोलना it's मत। a good change for the long term, right? It kind of really मेरे ख्याल pushes से this team to be much more content आइस बॉक्स तो बैन oriented, करेंगे take ये fights लोग। a lot more confidently. कल से Also खेला seems नहीं like है they built a आइस good बॉक्स atmosphere. बैन होगा। That's what we saw at AVL. कल I के mean, मैच में additions like Rossi, who अभी was सुबह really there एनआरजी to वाला make देखा sure था the मैंने या momentum doesn't दूसरा कौन सा stop. था And उसका I honestly think one of क्लाउड the 9 biggest से था values Carpe brings to हाँ the is that veterancy. He's एसेंट not शायद shaken. बैन He's किया था never उसने। shaken regardless of individual or team score. And I think that बाइंड those बहुत two खेलते members हैं। are really going to keep them together. Obviously, Xcurt a big part of that as well. मेरे को लग रहा है ये खेलेंगे Bleed is आइस they बॉक्स। don't have as much history, especially not देखो in मैं बता Valorant. रहा हूँ So are कौन you कौन सा able to मैप ये keep लोग up with खेलने that वाले pressure हैं। in something like a best of 3? और I बाइंड think होगा they definitely proved themselves at Ascension. You और know, we were अपना all there. We kind of saw that स्प्लिट scary का clutch बोलूँ for कि sure. But now that they बाइंड are होगा here, they स्प्लिट नहीं still have होगा। to prove themselves. They have to prove that they can hang with the big dogs over in the international league. बाइंड While लोटस we were looking at players like Scary, maybe Ye's return. और एसेंट ये तीन हो गए। Crazy Guy was one of those guys, one of those calm and collected देखते हैं IGLs क्या like प्रेडिक्शन है Carpe. मेरी। I think he had a lot to say about that. Yeah, no, I love that you brought it up because I don't think Crazy Guy gets enough credit for the success of Bleed so far. I think he's one of those ideas where you can definitely see the calling, you can feel the impact of the calling in game, and now you have a player like Ye. If that chemistry has been built up, oh, we've got some high hopes for Bleed. Yeah, that's right. I mean, Crazy Guy is the only Vietnamese representation here in Pacific, so I think it's really exciting. Now, we're talking about Bed by Sire player and Ye. Here are some stats from the last time they both played. Yeah, obviously, you know, Ye's stats, they kind of went all over the place throughout his career, so take that साया with a grain player of ये भी salt. बढ़िया But player है। Saya, I think that's the real highlight of this one, is that regardless of the roster he's been on, Saya individually has always performed up to the hype and potential. And he's इसके लिए always had काफी that एज हो drive, गई। he's shown it. Now, ये की versus Saya once again in a very different region. मैं बहुत with पहले different देख रहा teammates. उसको मतलब How do they line up जब against मैं each तो other? And I फॉलो also नहीं करता wonder, था you know, एक do मेरे they को have maybe a 6-7 little bit of महीने beef हुए अभी going way वेलोरेंट back शुरू kind करे of हुए। North America? उससे पहले से मतलब इससे पहले का इसका टूर्नामेंट देखा था। Bit to say, but also just Ye's playstyle, I think, is something that could fit into Bleed's whole system really well. Now, coaches are definitely going to have a big influence on this. T1 has also announced an addition of another coach under Autumn. Yeah, Data has joined. I saw him in the arena as well, so clearly kind of been part of the system to prep here for kickoff. So T1, another team that's building out the coaching staff. We have some big disparities there as well. That's right, and over on the other side, we got Lagia, who also has his long history of accolades coming from FPS games. Let's go have a chat with him now. Thank you guys. I'm joined by the two coaches, Autumn and एक काम Ligaya. करो आप Now, उधर ही करो। first of all, Autumn, मैं डिस्कॉर्ड पे चला के देखता हूँ ठीक है। क्या चीज? डबल डबल आवाज आ रही ना तो वो कंफ्यूजन हो जाती है। 어떤 감독님 일단 ठीक है। 블리드를 개막전 상대 उसको म्यूट कर दो ना स्ट्रीम को। या चलो मेरी स्ट्रीम म्यूट कर दो। मेरे वाले की आवाज सुन कर दो। मेरी क्या वो हो रही है क्या? डबल हो रही है क्या? एक हो रही है क्या? एक को नहीं मतलब अब डिस्कॉर्ड पे भी हो ना। अच्छा हाँ हाँ स्ट्रीम तो बंद कर दो भाई मेरी। ना मैं म्यूट करके देखता चलो। 내실을 다지는데 좀 신경을 많이 썼거든요. 근데 내실이 꽤 잘 다져졌다 생각하기 때문에 ये मैं एक काम करता हूँ। स्ट्रीम चला देता हूँ। well, yeah, there's not a lot of bots रुको on रुको। the new roster, so when we were getting ready for the matchup today, when we're in the preparation process, we decided to make our game more solid instead of focusing on the counter strats, and I think we came in very heavily prepped, and I think today's going to be an easy. यहाँ पे देखो स्क्रीन शेयर करी मैंने। T1's going to be the first वो बंद कर दो। What are your expectations? 그러면 이제 블리드는 퍼시픽 첫 상대가 T1이 됐거든요. 오늘 어떤 경기 예상하시나요? उसको बैकग्राउंड में चलते रहने दो। कोई दिक्कत नहीं। उधर म्यूट कर दिया। my players, so yeah, we will do our best, have to show a good match for the viewers, everyone watching here and at home, so yeah. इसका रुकना माइक्रोफोन का सेटिंग्स इसको मैं जरा करता हूँ। 굉장히 자신감 있고 또 선수들을 믿고 있기 때문에 오늘 2대 0으로 승리를 가져갈 수 있을 것 같고 또 경기력 또한 좋아서 보시는 분들 그리고 응원해 आपका तो 주시는 तगड़ा नाश्ता पानी हो गया। 상당히 만족스러운 경기를 보여주지 않을까 बस यार नाइट शिफ्ट की बात यही है। Today we're expecting a घर का फायदा है ये। operators now Autumn, Saya and चल के खाना आता है। notorious operators, but man घर पे रहने का यही फायदा है ना चल के खाना आता है। तो बल्कि मम्मी सो रहे थे सुबह
मेरी नाइट शिफ्ट होती ना, ऑफिस से आता आता मैं फ्राइड राइस और वो बनवा लाया था, मंचूरियन। सुबह आया, मम्मी ने अभी पराठे बना दिए, कह रही ये भी खा। तो मिक्सचर सारा मिक्स कर दिया, फिर फ्राइड राइस, मंचूरियन और सब्जी होगी और आलू पराठे सब खा दिया। अबे इसमें मैंने डिफॉल्ट लगा रखा था, इसी वजह से दिक्कत आ रही थी। अभी देखना। अब तक यार वही खेल लेते, थोड़ी पहल वर्ल्ड ही खोल लेते हैं। पहल वर्ल्ड खेली आपने? ये क्या चलाने लग गए? पहल वर्ल्ड देखिए, खेली आपने ये वाली गेम? ना देखा तो हूँ स्ट्रीम करते हुए लोगों को, खेला नहीं है। जाता हूँ मैं। कह रहे थोड़ा सा क्या सीन है इसका, मतलब थोड़ा एडवेंचर वाला सीन है ना? हाँ हाँ घूमते रहो। दिखाता हूँ। पोकेमॉन जैसे लगता है मेरे को तो। पोकेमॉन ही है, वही गेम है। क्रिएचर वैसे दिखते हैं उनके। जब तक वो चल रहा है तब तक ही खेल लेते हैं। खेलो खेलो आप, मैं तब तक देख रहा हूँ। यार इसमें ना यार मेरा यही कहीं पे था, अच्छा उड़ा दिया था। मैंने देखो अपना क्या बोलते हैं स्ट्रीम के लिए वो अपना बनाया था वो थंबनेल, दिखाता हूँ। बहुत अलग सा बनाया मैंने तो। एक सेकेंड, ये 되게 오랜만에 경기를 하는 느낌이에요. 이런 정규적인 경기는. 이번 첫 경기만 저희가 ये देखो 좋은 결과를 만들어낼 수 있다면은 아마 क्या चीज? 이번 대회뿐만 मेरा थंबनेल देखना। 되게 의미 있는 한 해가 될 것 같아서 오늘 무조건 이길 수 있도록 열심히 하겠습니다. सही है भाई, सही है, सही है। ओगी की डबिंग करके आवाज निकालूंगा मैं तो। बढ़िया भाई, कंटेंट बनाओ। वही तो, मेरा मेन फोकस एंटरटेनमेंट पे और ये कंटेंट बनाने पे रहेगा। खेलने का मतलब पर्पस इतना नहीं है, बस बंदे साथ में होने चाहिए। ये कौन सा है? अच्छा ये तुम अटैक भी करते होंगे? आ गया, पास आ गया। अरे 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 ये तो बहुत वो एक दूसरे को मार रहा है आपस में। जाओ जाओ। In terms of his own branding, but we should know that he said, well, we're all great players, right? It's not that he doesn't have hope in the team succeeding, but is El Diablo back? That's a very high bar. So I thought it was a nice answer. I really dig it. It's a lot of pressure. I mean, the guy has to come back and prove himself again. You know, there was that. If you look at his VLR page, honestly, like it's a bit of a red carpet. So maybe we can start seeing a little bit more green now that he's with this team. How does he fit in? How does he work off of his teammates? You know, what role is he going to play? We still don't really know which agent it's going to be. There's some, speculation as to it's going to be Chamber again, or I don't know. You got to imagine the Chamber is definitely an option, right? We're seeing it be used by a lot more teams on a lot of different maps. But also, for anyone who did watch, like Bleed put out a mini vlog, kind of coming to Korea, getting ready during media. He's doing a huddle, and he points to Darian and says, like, our best duelist. And then he goes around, right? ये वाला ब्लीड का जो दिखा रहे हैं, ये किसी और का था ना पहले? क्या? अभी बता शायद ही पहले। जो बात कर रहा है माइक पे। अरे अब चला गया, मतलब मैं थोड़ा बैक करके देख रहा था। All red. It is all
red. I'm shocked we're all aligned on It was this. just Lunar लीड Near. कर मैं भी नहीं था Very पता नहीं auspicious match one आधे से ज्यादा तो बायो ही लगते हैं मेरे को So we got एक myself, नावी में दो एक predicting नावी a का bleed win ओनर है या and कोच है शायद William हाँ going for नावी का कोच और टीम लिक्विड का कोच दोनों की शक्लें सेम है दोनों ट्विंस हैं A lot of the matches are here at VCT Pacific Kick-off. I think we have some of the more closer matchups throughout all the different regions. But I just have to go off of, okay, T1 already proved to me what they're working towards at AVL during the offseason and some other tournaments as well. And they've shown growth during the offseason. Also, even though it seemed a little haphazard at first, every roster change they made during the offseason seemed to always evolve them one extra step. Now, I'm not doubting anything about Bleed, but simply we haven't seen anything, and a lot of it seems to just ride on mechanically. Yeah, mechanically, can all, not just Yeti, can all of them perform up to the expectations with potential role swaps? I'm not so sure because T1 is no pushover. Yeah, I completely agree. T1 has been continuously upgrading. We've seen this last year going through the 2023 season. As they grew throughout the season, they just perform better and better. इंटेंस गेम प्ले देखने कोई नहीं आता भाई सही बता रहा मैं decided असेंडेंट to इमॉर्टल complete बहुत this है time. I रेडिएंट know तक they जाने are का कोई the सवाल new ही नहीं team है this year, the new kid on the block. But why did you pick Bleed जिनको for this match? खेलना है That's भैया just the thing, क्या you know, बोलते हैं it's अपना like, how can you say, कॉम्पिटिटिव you में know, जाना है we're not sure if Bleed's उनकी gonna- अलग बात we है saw them at Ascension. That's my main thing. मैं तो सोच I लिया do मैक्स think टू मैक्स T1 मेरा is also really असेंडेंट experienced. रखूंगा They have grown a lot. I love असेंडेंट what I अगर saw पहुंच at गया AVL. तो ठीक है But I also उसके बाद से मैं really सिर्फ love what I कंटेंट पे saw ध्यान from दूंगा Bleed अपना at Ascension. एंटरटेनमेंट हो Sharing गया with the clutch was मतलब definitely one बकचोदी thing. तो नहीं You know बोलूंगा there's that क्योंकि मेरे से बकचोदी individual गाली गलौच वाली potential, होती but रही also just the fact that और मैं Ye बोलूंगा भी coming नहीं into this roster, he's got that sort मतलब of मेरा भाई जैसा एक है smooth, बंदा वो पड़ोस में रहता है वो controlled kind of aim. Not उसकी so एज ही twitchy, अभी not like 13-14 साल की है example, but that's अगर something बोल that दिया fits तो पता चल based जाएगा on सबको with Ye as the coach. You know, it's this very controlled, इसलिए मैं technical करना sort नहीं of चाह रहा मैं कर smoothly, पाऊंगा मैं flowing throughout the entire map. And then if that comes into Bleed, you know, on the बस defensive अभी side रात or में on शुरू attack, करूंगा they can definitely pick things apart. They could ठीक है भाई अभी आप क्या करते हो पढ़ रहे हो कि वो काम करते हो जॉब करते हो नहीं भाई जॉब की तैयारी कर रहे हैं बस मतलब प्रिपरेशन चल रही है एग्जाम की बस और कुछ नहीं। मैं मतलब इतने टाइम से कर रहा हूँ प्रिपरेशन मैं सोच लिया थोड़ा साइड में ये भी करता रहूँगा थोड़ी देर मुश्किल से 4 घंटे स्ट्रीम उससे ज़्यादा नहीं इसकी तैयारी कर रहे हो आईएएस की आईएएस की तो नहीं मेरा गवर्नमेंट एग्जाम की हाँ कह लो छोटे मोटे एग्जाम जो भी हैं किसी को नहीं छोड़ना है बड़े बड़े तो इतना मैं टारगेट कर नहीं रहा छोटे मोटे एग्जाम्स हो गए अपने जेई के I mean, in terms of your predictions, how hard are you expecting T1 are to we win starting this? to do like little मैं भी तो लग गया बस 40-60 like 70-30 मेरा एक सब्सक्राइबर है मैं उससे बात करता हूँ आपकी रॉन करके आता है चैट में याद है वो रॉन उसका जेई क्लियर हो गया है जे डबल ई हाँ JEE क्लियर हो गया उसका अच्छा IIT का हाँ बढ़िया बढ़िया फिर कौन सा कॉलेज मिल रहा है कुछ पता है उसका पता नहीं यार वो उससे बात करना जब आएगा तो IIT का तो ठीक ठाक मिल जाएगा उसका रैंक भी कम था मेरे ख्याल से 98 बता रहा था पता नहीं कितना रैंक बता रहा था भाई टॉप 100 में तो क्या ही बात है फिर तो सीधा बॉम्बे मिलेगा मद्रास मिलेगा और क्या Bleed can study up on how T1 might operate. Hold on. If T1 brings out the same exact compositions with the same exact executes, yes, you're right. I think Bleed will absolutely win. I 100% agree. Well, let's see who the teams actually want to face off this season. We did a poll with each one of the teams and asked them who do you want to Bleed face versus off DRX this kick-off. And it's इसका एक और बंदा है ना DRX अच्छा DRX का कहाँ है T1 का है followed by DRX and R. ये क्या सीन है Kings Global Esports, they know who the true opponents are going to be this year. VCT DRX Pacific. अच्छा ये वोट्स वाला बता रहे हैं फिर 3 बंदे ऐसे आएंगे नहीं ये क्या चाहते हैं कि इनके अगेंस्ट ना खेले While obviously I have high hopes for a team like RRQ, you gotta imagine that DRX and PaperX are still लेकिन PRX तो होगी नहीं अच्छा PRX का भी अरे नहीं ये इनसे पूछा ओपोनेंट से कि भाई ये ओपोनेंट्स किसके अगेंस्ट नहीं खेलना चाहते तो मैक्सिमम टीम ने कहा कि हम PRX के अगेंस्ट नहीं खेलना चाहते लेकिन इस वाले में किक ऑफ है ना मतलब PRX से मेरे ख्याल से कोई मैच है नहीं क्योंकि PRX तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है PRX हो गई DRX हो गई You know, DRX and PaperX both picked each other as well. It's like they can't get enough of each other. Well, I mean, DRX, surely. I'm sure that is. भाई मैं बता रहा सबसे सही टीम टाइम की बात होती है लेकिन विनेटिक्स से अच्छी टीम नहीं है कोई
first reverse sweep to happen. INHUMAN अच्छी टीम नहीं है, ये बात एकदम सही है। भले वो लास्ट वाले में चैंपियंस में नहीं मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्वालिफाई बोल रहा मैं, सेमीफाइनल बाहर हो गए थे शायद। Now, we were talking about a bit about the mood here in Korea. लेकिन बहुत सही टीम है वो कमबैक मतलब करना जानती है वो टीम। Favorite and long-time kings of Pacific, of the Korea region anyway. How's the mood now in Korea with all the Korean teams? We're finally seeing a bit of a shift, you know? It used to be like, okay, no matter international results, we always got to hope for DRX. DRX is the only hope for Korea, etc., etc. And now आपके टोटल जो पीसी बिल्डअप किया उसमें कितना खर्चा आ गया टोटल? यार मैंने तो काफी पैसा लगा दिया। जो मेरा स्ट्रीमिंग पीसी है 2-2.5 लाख तो मैंने उसमें लगा दिया था सारा, मतलब मॉनिटर और ये पीसी वीसी सब बनाने में। और जो मेरा अभी नया वाला बना है वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 के आसपास। नया वाला बना मतलब स्ट्रीमिंग और गेम जिसमें खेलते हैं उसकी बात कर रहे हो ना? 2 पीसी है मेरे पास, एक पे स्ट्रीम करता हूँ, एक पे गेम खेलता हूँ। गेमिंग सेटअप के लिए अलग। हाँ लिखा तो हुआ उसमें मैंने, हाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में देखा मैं, यही पूछा। तो जो गेमिंग वाला वो 4.5 लाख तक पड़ गया था टोटल, सारा कुछ मिला के। मॉनिटर 360 हर्ट्ज मॉनिटर है ना मेरा, 55 का तो मॉनिटर था मेरा, 55,000 का। हाँ तो उसका वो क्या है अपना रेजोल्यूशन? एक सेकंड देखता हूँ। 1080p है। तो इतना महंगा कहाँ था? 40,000 के अंदर है इसका रेट शायद। 360 हर्ट्ज है ना भाई, बेनक्यू है। हाँ Zowie अरे बताए इसमें 360 हर्ट्ज का मेरे ख्याल से इतना कुछ फर्क नहीं है। आप 240 और 2K लेते ना बेस्ट था। वही है भाई, पहले कोई था नहीं ना बताने वाला इतना। मेरे को था कि भाई मेरे को लेटेस्ट लेना है, 360 हर्ट्ज था उस टाइम पे लेटेस्ट। मगर चलो फिर 240 हर्ट्ज 2K बेस्ट है, 40,000 में मिल जाता है। बल्कि इंडिया में वो नहीं आ रहा 540 हर्ट्ज, वरना इसको बेच देता मैं 40-45 का बेच देता और मैं 540 लेता। अरे रहने दो, काय पीछे पड़ रहे हैं। देखो आप स्ट्रीम कर रहे हो ना, उसके हिसाब से देखो आप। अरे मेरे को ना कम्पिटिटिव का शौक है यार, भले ही मेरे को किसी टीम के लिए नहीं खेलना, पर मेरे को एक कम्पिटिटिव खेलना ना, मेरे को कम्पिटिटिव ही खेलना पूरा। और मेरे एफपीएस भी आते हैं ना इतने, मतलब 500 एफपीएस आ जाते हैं मेरे वैलोरेंट में। तो 240 हर्ट्ज भी ले लोगे ना, उससे भी रेडियंट टच कर जाओगे, इतना कोई नहीं है। सबके पास क्या इतना भयंकर पीसी सेटअप होता है पहुंचे जो ऊपर जाते हैं। यार वही बात है ना, वो फिर बंदे पूरा दिन ग्राइंड करते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ग्राइंड करने का। वीकेंड पे तो खेल पाता हूँ मैं। really solid. It allows her to be much more viable on different maps, but her attacking side is still so weak that you have to play her as an initiator, which means you probably still want someone else to be able to lurk very efficiently. And then how do you juggle the comps, right? So as an agent, I think she's okay, but as a compositional value, the question mark's still there. Yeah, the trap, the sonic sensor, that's the one that's 11:30 बजे शायद it's still always, it leaves a little bit more to be desired. But the barrier mesh and the grenade that you threw out, sorry, the name, it's still something that has a lot of creativity behind it. I think there are chances where you can kind of combo it off of other utilities. मेरे को लगता है 10 मिनट लाएंगे, आप बैठो तब तक मैं आ रहा हूँ। Which is, I know, something that Vic has done in her own games. There are a lot of things that you could still do, just maybe not yet the most viable for a pro play. Yeah, I mean, we've seen it pop up here and there in the Challengers Leagues as well, especially in Challengers League South Asia. We've seen it pop up several times as well. So there's some value there. And like you mentioned, it's a lot of those mini set plays. It's a lot of the mini executes that you have. But again, it's like, well, who are you taking out to put in Dunlop? That's always the question. What kind of maps would we see her on? Yeah. It's hard. I mean, I feel like Ascent is always one of those like classic ones where you could always just use it and have the wall up, the barrier mash to block things off. But, you know, when you think about newer additions like Icebox, how much are you really going to do? Yeah, I mean, I think Lotus is also in the pool there. Well, I'm hearing it's time for the official VCT Pacific Kick-off. Are you boys ready for some Pacificing? Yes. Yes? Are we ready? Let's go. Ladies and gentlemen, it is game time. I hope you're ready over at home. Let's go, Pacific.
यार कितनी देर में चालू हुआ किसी को पता है क्या? कोई देख रहा है स्ट्रीम? Out of the sight, but and the mode strong. VCT Pacific में सबसे बढ़िया टीम कौन सी है मेरे हिसाब से? तो मुझे लगता है DRX PRX तो है शायद, फिर भी पता नहीं। गियर खेल तो रही है। पेपर एक्स है तो मैच कब है इसका? अच्छा ग्रुप सी। चलो भाई फेब को है 19 फेब 11:30 किससे होगा? जेनजी वर्सेस RRQ है उसमें तो जो मतलब जीतेगा मैच उससे होगा पेपर एक्स का। ओके और कोई क्वालिफाइड हो गया ऑलरेडी? कितने टाइम ले रहे हैं ये लोग? अरे तुम्हारा स्ट्रीमर भाग गया भाई, इसको बुलाओ यार। कहाँ चला गया? Introducing the players. Last year was a warm-up. This year, they're taking चलो फाइनली शुरू होगा। prestige, the pedigree. They're on a hunt for a trophy. T1! ओ भाई T1 एक्सक्यूरेट। Ascension winners. A new addition to Pacific. Wherever they go, blood ये will रेटेड be T1 shed. They're bringing the king of ये किधर है? अच्छा पहले नंबर बता। Bleed Esports.
चल भाई दिखाओ कमाल। मेरे ख्याल से मैप आएगा ज़्यादा बाइंड आने चाहिए, एसेंट आना चाहिए और लोटस, ये 3 मैप आएंगे इनके। बाकी बैन होगा, आइस बॉक्स होगा, आइस बॉक्स बैन होना चाहिए। और कौन सा बैन करेंगे ये लोग? सनसेट, हाँ आइस बॉक्स, सनसेट, 3 मैप शायद होते ना बैन। ओके एक और कोई होगा। मुझे तो 3 मैप जो खेलने वाले हैं वो यही लग रहे हैं, लोटस, बाइंड एंड अपना एसेंट। Here we go. We are going into map picks 1 and 2 bans for 3 the first 4 series of 5 today. Oh, let's go. I am so curious what these two teams are going to bring because we've had a fairly good idea of what T1's been preferring in the offseason. No surprise that they're taking out the icebox. You haven't really seen much of it from any of the teams. The question is, Bleed, kicking things off with some long-range battles on the new Breeze. That's what they love to do. That's what they're good at. So the question is, can T1 really control the map enough that they block off all those tiny gaps? But now Lotus coming into play. एसेंट बैन कर दिया, ठीक है लोटस पे गया, सनसेट भी बैन होगा ऑब्वियसली, आइस बॉक्स भी बैन होगा, बाइंड भी आ जा रही तेरी, बाइंड भी बैन कर दिया। For both teams on these maps, I mean, T1 was no pushover on Breeze, even at ABL. The way they're playing it, the way that Xkillz was taking over space, even as a harbor, really trying to tighten up the map. My question is what's Bleed's answer to that, other than just go get kills with the operator? I mean, that was the most obvious thing to इतना me. पता था मुझे आइस बॉक्स और सनसेट तो नहीं होने वाला है, Of operator. ये तीनों मैप तो बैन ही रहते हैं हर बार। एसेंट पे शायद कभी कभी introduce and kick off VCT Pacific, isn't it? You gotta have the outlaw. I'm hoping that we'll get to see that, but now Split as the decider. लोटस लिया है। I mean, this definitely could go either way. We always say that, but this is definitely just one of those things where both teams are showing off what they are good at on their own map picks. Once it comes down to Split, though, if it does, who's gonna show up on top? Man, I'm very curious how T1's going to look on Split, because the way they were playing during the offseason, right, taking over space one by one by going for these mini set plays, by going for the chaining of utility, that actually works a lot better on these larger maps because you can force them into one side. You can really tighten up the map by going for contact. But on Split, the moment you get contact, the round is over. So my question is what kind of composition do you have ready? I mean, is it double duelist? Because that's doable here for T1 and both sides. भाई चैट में प्रेडिक्शन बताओ यार अपनी अपनी, जिसको भी लगता है क्या स्कोर पे मतलब खत्म होना चाहिए। मेरा हाफ पे 5-7 है, 5-7 पे खत्म होगा, ब्लीड लेगी लीड 7-5 मतलब। Talk about those contact plays, and Bleed is a team that hopefully knows how to work against that. I think one thing's for sure, all of us here want to see Split, because that is the one we have the most questions about at the moment. Now, like you said, well, the question now is really, what are the agent comps are going to be like? We have so many questions about this team. Who's going to play what role? Is Ye going to be playing the Chamber Sentinel role? Is he going to be playing the Duelist?
half में there's rumbles of Ye spamming a first lot of half में तो ये KO होगा during the offseason in his own games, and obviously KO, one of those agents that has कौन सा consistently मैप था been अभी picked शुरू on हुआ Breeze if you're going for the Breeze double ना initiator. If you're going for double initiator at all, I think KO has to be part of that composition. But the real trade-off is मेरा तो double prediction initiator or double controller. That's always been the question when it comes to Breeze. That's definitely one of those things on the map. But while Will gives actual and accurate analysis, I'm just going to talk about what's fun because AVL are you the T1 fun playing. one? Yeah, I'm the kind of fun one because they played Yoru on Breeze during AVL. Are they going to do that again? And is that going to be effective against Bleed, or was that just kind of like a thing that they did for fun in the offseason? Yoru's a big possibility. I mean, if you watched AVL at all during the offseason, you'll remember Forsaken's Yoru getting 6 ultimates against DRX. एयरटेल वाले परेशान करते रहे फोन कर कर teams have been trying it as well. I think Yoru has value. I think we're going to actually start to see Yoru be picked up a lot more often than we're used to across all the different maps, right? Things like Bind, things like Breeze, even Lotus to a certain extent. But what I saw from T1's Yoru, it didn't really convince me. Obviously, lot, right? yeah. There was some time since then, so obviously they could prep a lot more during that. They could really tighten up the utility. But for T1, I'd like to see something different because while Gskillz Harbor was fine and he was using it in ways to take space and get contact, I think he could do a lot more if he was a different भाई कितना दूर रखता है ये कीबोर्ड I माउस don't know if we're going to see ISO. I feel like Euro is finally making his mark, or we're expecting to anyway. But do you think ISO is going to have any showings? Maybe not so much. So still like really like fun to play, right? You get to shoot the orbs, you get the shields, a little bit of aim labs here and there. But still in pro play, I mean, especially on a map like Breeze, I could see you trying to push off of the contingency shield, but the undercut, the range is just, it's a little bit tough. And although you can be a really cracked aimer, what we need on a map like Breeze is a lot more map control. Viper definitely has to be in, and you need a lot more, you know, combos and set plays. It's funny that you mentioned the limit of the skills and the range, because Breeze is actually one of those maps where I would say Reyna would provide a lot more value actually than yeah, ISO. Like, this is one of wow. those maps, and we've seen it before, right? Teams who have pocket Reyna picks, they've made it work. I mean, Depp was one of them on Zeta Division in the offseason back at Riot 1, had a great showing on it against DFM. So I think Reyna, potentially a possibility, not between these two teams though. I think they are going to go fairly standard. It's just, is it double controller or double initiator? Now, one thing that we haven't spoken about, there are stats, but one thing that does impact a lot of the win or losses is the mood, the mental that these players are in. Do you guys get a sense, like the player room is right by our green room, do we get any sense of how they're feeling right now? Well, so we passed by some of the T1 players actually on our way down to get ready. So this was like minutes before they had to get ready to get on stage. And I haven't seen Rossi be like this focused, right? Because obviously during the offseason, it's AVL, right? It's offseason. It's not counting towards your VCT record, but very focused, very calm and collected, not just super jovial. Obviously, you can tell that kickoff matters so much because you want to get this win, you want to get to Masters Super Grid, you want to get the early championship points to have a head start in 2024 going all the way to champions. You want to kick things off well. You don't want to, you know, start off with a bit of a slump. So that's the other thing for Bleed as well. I mean, looking at their mood, you know, the coaching can be a little bit, maybe a little bit serious at times, and Tough you can love. feel that. Yeah, definitely, right? What they talked about with Ye. आगे I क्या do think that that's something that could also help them. Scary is a guy that really, you know, operates off of that pressure. You can see him praying at times, and he gets really intense, and that's something that gives him that clutch potential. So things could be a big clash. Another scary ace clutch today? I mean, those are always a treat. Those are always a treat. Now, Bleed, with so many new players in franchise, I'm sure they must be really serious, really pumped up, and a little bit nervous coming into this first match. I mean, Breeze, coming into Breeze, what are your... Are we going to do a map 3 is my question. I think we very well आगे could. क्या? I Hello? think this could very well go to a map 3. And I actually think if you're a Bleed fan, this map draft is pretty good because here's the thing. You're going to want to use the Sova on Breeze, right? Most Crazy guy. definitely, yeah. 100%. And Crazy Guy loves to play that, so he's very good with the Sova. And even on Lotus, right? Especially with the Sky changes, we're seeing a lot more teams now start to experiment with the Sova back on Lotus. I know people are still split on that and Fade's still an option, but I could see Crazy Guy doing great things with the Sova and the Odin, which he also uses very well. So I think this actually works in favor of the IGL for Bleed Esports. Definitely Now, does. after this,
whoever wins is going to be facing off. We also got in this group, a very exciting group A, by the way, Global Esports and Zeta. How do you think this is all going to play out moving on from here? And this is the first match that's going to determine a lot of things. तो 4 मैच है सीधे शायद. I mean, I think it's going to be tough to say for sure. 11:30 Whoever wins this one, if they're going to go up against either Zeta or... भाई मैं 4-5 काम कराया अभी तक इनसे, वो ही नहीं हुआ, मैच स्टार्ट ही नहीं हुआ. मैप हो गया ना. हाँ वीटो देख रहा था मैं, ब्रीज, लोटस और स्प्लिट. हाँ. I mean, if you're watching the emerge videos on the VCT Pacific channel, लोटस एंड you can see स्प्लिट get तो a sense for कौन how सा every वाला one था? of these players feel, especially for a guy like C9 वाले में शायद खेला था. He wants to frag. लॉन्ग वाले. बस ब्रीज इस बार ले लिया इन्होंने. And I think Benkai is going to surprise and remind a lot of people that he used to be a really फर्स्ट हाफ में देखो 7-5 होने वाला है, ब्लीड लेगी, एडवांटेज होगा ब्लीड के पास. Bring back the fragging on top, a little nice dollop of fragging onto that dish, and I think Global Esports will surprise more people than they were expecting. However, I mean, चैट में बात नहीं करते क्या लोग आपसे? उर्दू बंदे भाई, देखते रहते, कोई बात नहीं करता. ए शर्म आ रही कि नहीं देखने वालों? अबे लगा करो कुछ. साले ट्विटर पर के देखने से कोई मजा नहीं है. औकर है. अरे बातें करने में मजा आता है मेरे को तो. मेरे में तो 3-4 बंदे आ जाते हैं, बातें करते रहते हैं और क्या. ये भाई really tighten up on what we didn't see so much last year when they were really slow and they had some mistakes kind of operating off of assumptions. मेरी तो कंटिन्यू मैंने अपनी 4 व्यूअर ऐसे ढूंढ दिए जो रेगुलर वाले हैं. and have the protocols to work with these. ये भाई एक मेरे जाके 2 बंदे मैं बोल दिया हूँ कि ऐसे ऐसे करूँगा, इतने टाइम करूँगा, तो वो रेगुलर वाले हैं. And maybe the off season being that long, दो रहते हैं नॉर्मल. now that come back into 2024 feeling a lot more refreshed. I mean, you saw in those trailers. पता है आपको, आप स्ट्रीम भी करना चाह रहे हो, लेकिन सीन ये है कि आप जॉब करते हो ना. बात वही है भाई. बात वही फंस जाती है कि स्ट्रीमर बनना पड़ेगा तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा. कि सिर्फ वीकेंड पे स्ट्रीम करने से सब्सक्राइबर धीमे धीमे बढ़ेंगे, लेकिन वो व्यूअर जो रेगुलर वाले आते हैं ना, वो रोज करनी पड़ेगी आपको. करूँगा यार, मैं थोड़ा ना अभी 3-4 चीजों में फंसा हूँ. मैं मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड से या अगले साल की बिगिनिंग से मैं रेगुलर शुरू कर दूंगा. मतलब एटलीस्ट 3-4 घंटे रोज क्या करूंगा. अरे अभी सुबह के टाइम भी नहीं मिल रहा हूँ ना, तो थोड़ा टाइम तो मतलब थोड़ा रोज करते रहो. 2 घंटा कुछ भी हो आके कर दो बस. तो एटलीस्ट रोजाना रहोगे तो रोज वाले बंदे उस टाइम आपको देखने आया करेंगे. कोशिश पूरी रहती है भाई, बट अभी कुछ ना चलता रहता है, तो देखता हूँ, ट्राई पूरी करूंगा. स्ट्रीम का तो यही सीन है भाई, रेगुलर रहोगे तो काम होता है बस. And when you have people who are on the highest tier of gameplay mechanically, utility-wise, what is the step to improve from there? And it's just good vibes. So that could have been like the missing piece for Zeta as well. You know, bringing back to this, of course, the first match that we're waiting on right now between T1 and Bleed. Again, that's a big question for T1. They added an extra coaching staff, right? Coming from North America once again. लग रहा है इनका वो पीसी सेटअप क्या बोलते हैं, पीसी टेस्टिंग चल रही है ना, पिंग वगैरह ये सब देख रहे होंगे, सेटअप कर रहे होंगे. So a little bit of chemistry with Rossi for a brief moment, but I would say more so it's what he. ये रॉसी नाम क्यों ले रहे हैं बार-बार? एक रॉसी करके कोच आया नया. अच्छा. Now, does the coaching staff chemistry work among Autumn, Stunner, and Data all together? And then how does the team gel with that? Because we've seen Autumn's interview during the offseason. Last year's roster did not gel with the entirety of the coaching staff between Autumn and Stunner. So that's now on Autumn's shoulder to say, we need to be one family, we need to be one team, and all go towards the same goal. I wonder if it's going to be a case of too many cooks or just lots of good data. Does T1 have the biggest coaching? No, DRX still holds that. अरे हाँ नहीं T1 ही थी शायद. कौन सी टीम थी? Technically has the most if you count. टेलोन में शायद एक बंदा आया था ना रॉसी करके. And DRX technically has 3 for the but they're up there. हाँ T1 में तो आया था शायद. Contrary to that, Bleed does not. Bleed's got Lakia and then you got Omnis as the analyst. AVL में खेला था शायद ये बंदा. T1 थी शायद उसमें तब. हाँ थी. पेपर एक्स भी थी ना, सेंटिनल्स ने हराया था.
in that interview that they just had with Jen as well. अफ्रीका लीग हुई थी ना अभी, You know, this is my team. तब आया था नया बंदा आया था T1 रॉसी You know, करके। maybe prove yourself, but still, you guys are इन लोगों को मालूम नहीं था तब, तो ये लोग रॉसी के जो एसके रॉसी है ना उसकी चैट में लिख रहे हैं यू डिड यू जॉइन TLN1 esports, जबकि वो कोई दूसरा बंदा था। It is a huge deal. It's a very big deal. But, you know, no favoritism there. In fact, Lugia, I think he filled in for one of the off-season tournaments even. And that is how invested he is in his team. He can play. It made me chuckle during the interview when he's like, well, I have a lot of faith in my teammates. I'm like, oh, you're still living in the Ryan 1 days a couple months ago. But I like that because while Ye is a great player, you don't want to build just around the newest player that gets added. You want to have faith that the core, the direction you had is the right direction, and Ye's the right ingredient to add to that mix. Also, I think Lugia's coaching actually proved itself quite a bit at Ascension as well. I mean, going in 3-0ing Scars, who looked very dominant as well, was a good showing in terms of pret and in terms of counter-stratting as well. Well, with that, we are so excited to see the first series. Guys, go get a snack. We're going to go on a quick break, and when we come back, we're going to see a little bit of T1 and Bleed face off. फिर ब्रेक ले लो। गेमिंग लैपटॉप नहीं यार, नहीं है कोई फायदा थोड़ा नहीं है लैपटॉप लेने का। नहीं काम है, लॉन्ग टर्म के लिए लैपटॉप बेकार है, 2 साल बाद बेकार हो जाता है, वो परफॉर्मेंस नहीं रहती। और गेमिंग में तो होते ही नहीं भाई, एफपीएस आते ही नहीं उतने। क्योंकि मैं मान लो मैं भी करना चाह रहा हूँ स्ट्रीमिंग, ठीक है, अब स्ट्रीम भी करूँगा तो वहाँ साला प्रोसेसर मेरी ले रहा है, फिर गेम खेलूंगा उसमें भी ले रहा है। आपके तो वो तो स्ट्रीम करते हो तो 60 एफपीएस ही आते होंगे आपके। तो मेरा है तो 144 हर्ट्ज का स्क्रीन। अब देखो अगर मैं स्ट्रीम भी करूंगा ना तो गिर के मेरे 90 तक पहुंच जाते हैं कभी कभी बीच में, ये सीन है। 100 ऐसे चलता रहता है। नॉर्मल खेलो तो 120 तक आते हैं, थोड़े बहुत मतलब इंटेंस सिचुएशन हुई 120 तक पहुंच जाता है। स्ट्रीम की वजह से 90 100 ऐसा होता है। ये कौन सा आ गया पल्सर? पल्सर माउस भी बनाता रे, वायरलेस चार्जर कोई नहीं लेने वाला। रेजर और ये सब लॉजिटेक ही ज़्यादा फेमस है। मेरा खुद का लॉजिटेक है। उसको टेबल बढ़िया है। यार ये महंगा बहुत बेचते पर ये ना, देखिए 25-30 हजार का सेटअप होगा ये, टेबल और खाली चेयर का। यार गेमिंग चेयर यार सहीदार है, बहुत महंगी देते हैं। इतना कुछ होता भी नहीं गेमिंग चेयर में भाई, वही तो 20,000 की चेयर होती खाली। 10,500 और डाल के ना 4 बंदों 6 बंदों का सेट का सोफा आ जाता है 30,000 में। यही है मेरा, यही है 2566 के, यही मॉनिटर है मेरा। क्या टेक्निकल डिफिकल्टीज वो नहीं था ये। Hello VCT fans, I'm extremely excited to introduce Valorant Champions Tour Pacific 2024. Last year's VCT Pacific run was amazing, with our players showing their unreal potential on the global stage. भाई ये वाला जो क्लच किया था ना इसने, समथिंग क्लच तो नहीं था, मतलब वही कि 3 बंदे जो मारा था इसने। लाइव मैंने तो लाइव देखा था, ये ऑफिस में बैठा हुआ था मैं। इंसेन भाई, स्प्रे ट्रांसफर उड़ के जो गया। सेमीफाइनल था ना मेरे ख्याल से, ये सेमीफाइनल था कि फाइनल था ये? ईडीजी से था, तो नहीं था, सेमी था, क्वालीफायर था मेरे ख्याल से ये। तब जीई भी थी नहीं थी,
and champions will begin नहीं in जी तो August पहली as the बार हो गई थी culmination of global competition for 2024. फिर LCQ आया था लास्ट चांस क्वालिफायर वाला उसमें की मैच हुआ था उसका बार हो गई थी format where teams are separated into 3 groups and the team to come अब out in पता first नहीं in each group goes straight जी to the में playoffs. कुछ रहा नहीं अब मेरे ख्याल 3 से teams who finish second will play in a single round robin where the winner मैं joins तो the वही एस playoffs की as a वजह से single देखता था कि elimination भाई format. इंडियन बंदा अपना After ऐसा intense battles सपोर्ट during करना VCT है Pacific Kick-off, the top 2 teams will advance to लेकिन इतना Valorant Masters बाहर Madrid. कंपटीशन है ना Now वहाँ let's रह ही look नहीं at VCT पाएंगे Pacific Stage 1. Each team will be split into 2 groups of 5 alpha teams and 6 omega teams. Alpha अपने teams वाले will play सर्वर में against the तो omega teams in a टॉक्सिसिटी single से round robin. फुर्सत नहीं है The बंदों को top 3 कहाँ teams से will आएंगे emerge from each group, advance to the playoffs, and will play in a 2 double सेकंड ट्रिगर नहीं elimination होते round. गालियां भरना शुरू हो जाता Here, the top 3 teams will be punching their ticket to Valorant Masters Shanghai. सामने वाले बंदे ने मार कैसे दिया ट्रिगर हो जाएंगे तुरंत VCT Pacific और वो क्या Stage 2 टेंडर has the लेने आया same तुम्हारे पास format as Stage 1, but this time the alpha teams will शूटर गेम compete खेलो against मारे each या other नहीं in their own group. Same goes for the omega teams. The top 6 teams with the best performance over the course of Stage 1 and Stage 2 क्या हाल है will make it through to the VCT Pacific. कहाँ पे घर पे The top 3 teams in playoffs and the अच्छा मुंबई ऑफिस में highest championship points. चल ठीक है मुझे लगा घर पे होगा मैंने वो केक मंगा रखा था मामू के लिए Championship points are चल ठीक है भाई ओके ओके कर काम कर system in 2024. Teams will earn championship आपका कोई points फ्रेंड to नहीं है qualify for Valorant Champions है है every year. डिस्कॉर्ड में बुला लो उसको कि फिर अच्छा देखो अभी साथ में अभी तो मुश्किल They earn 3 points if they win हेलो kickoff in Stage 1. Teams will also earn 3 हेलो points whenever they win a Masters event. The goal ultimately is to reward नीचे teams who have been the most consistent throughout the year. Only the best of the best will come out on top. The tide is rising and teams will collide and define their destiny in Valorant Champions Tour Pacific 2024. We'll see you all in Seoul, South Korea. I think 2023, it's not too bad, but very sad for us. It was not good because we didn't qualify to single master. Not good enough. RRQ की टीम है Wasn't great. Quite tough year at first, but with more time we can bounce back and become like dark horse to everyone. I think from the outside perspective we were quite underrated, so in that sense we maybe performed better. इनकी भी टीम अच्छी है RRQ की Like in-house expectation, we definitely अच्छे didn't प्लेयर्स reach हैं where इनमें we wanted to. We felt like we needed to make improvement. मतलब DRS की टक्कर की टीम है ये भी With the confidence with this roster, that's why I think we just need to practice now. The first thing on my list was we need a consistent entry fragging. That's something that we lacked, and I've spoken about it openly. So the first name on my list was Maxim, aka Jemkin. It feels good to move to Korea. Jemkin To make visa, but I'm glad that I'm here. ये बंदा किसी और में था शायद Insane. Every time on attack, I just do something and then he just entry and then he just kill 4 and then kill 3. Sometimes you see a duelist like after he get 3 kills or 2 kills, they just gonna rush to go more to find some kills, right? But Jemkin, he never overhit. He's very disciplined. Like after he got 3, he wait for his teammate and then maybe we decide what's next. I bring more firepower to the team and I'm very talkative. I speak a lot during the game, so I can help my teammates. So yeah. Another thing is that we're looking for a flash initiator player that can actually frag and can potentially help IGL. RRQ 팀의 에스트레아라고 하고요. 저는 이 팀에서 세컨드 폴로로 플레이하고 있습니다. Mechanically is like very talented in aim. Second calling also is like very good decision making when to call this, when to dog, use util. Overall is like best initiator player in Apex. 제가 생각했을 땐 제가 약간 못 온다고 생각을 안 하거든요. 곧 데뷔 시작하니까 보여드리면 되지 않나. One of our first trials we did was Jemkin and Estrella together. I don't think I've seen. भाई चला दो अब तो चला देना चाहिए इनको कितने बेशरम बंदे बोला ना वो टेक्निकल डिफिकल्टीज वाला इशू आ रहा है इसको कुछ ना कुछ सेटअप कर रहे होंगे RRQ에 때라고 이제 생각할 수 있는 इ유는 साला इतना क्रिटिसाइज किया था अपने को 두고 보면 알겠죠. अभी हुआ था अपना
बाहर की टीम आई थी बीच में, बहुत लंबे लंबे गैप लिए थे। यहाँ पे भी होती है भाई गलतियाँ। We found what we wanted, what we needed. I hope we qualify for everything. Yeah. अरे We are बस still the underdog in Pacific, but 2024 is for us to make it मैं all of the जल्दी सो गया रात को, ठीक है। सुबह था 3:30 बजे, एनआरजी वर्सेस दूसरी एक टीम थी, कौन सी थी यार, चलो एनआरजी साथ था किसी का मैच, उसका देखा था मैंने। वही 3:30 का अलार्म लगाया था, लेकिन उठा मैं 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे, लेकिन देख लिया मैच मैंने। सही है, ये बीच में इतना वो नहीं ड्रामा देखना पड़ा मेरे को, डायरेक्ट मैच में आ गया था। DRX Zeta वो जापान की टीम है। हाँ जापानीज है। अच्छा नहीं, मेरे ख्याल से लास्ट टोक्यो में वो होता है ना टूर्नामेंट, उसके दिखा रहे शायद हाइलाइट्स। ये क्वालीफायर हुआ था ना, उसमें क्वालीफाई करी थी ये LCQ में। RRQ का रहा था शायद। ये वाला बंदा साला मॉडल सा लगता है, लगी शक्ल ही ऐसी है इसकी। チームとしてすごい爆発するような成長を遂げる可能性ももちろんあるし、逆に多少リスクではあるのは間違いない。もちろん弱くなっちゃう可能性もあるし、ただこれでチームがもっと上手くなって可能性があるのならば、それはチャレンジしなきゃいけないことだと思ってます。I think for me, we have some freshmen that is like bringing new energy, and I'm अरे सुनो भैया, अब आप आज क्या है, सैटरडे है शायद, कल भी आपका ऑफ होगा। कल तो मेरे को शादी में जाना है यार। अरे कल शादी जाओगे? अरे रात को आ जाऊंगा शायद, मैं तो रात को स्ट्रीम करूंगा कल। कल रात को? कितना देर करोगे? हो सकेगा तो पूरी रात करूंगा, सुबह तक वो देख लूंगा ना। अच्छा पर वो मैचेस तो सुबह ही शुरू होंगे मेरे ख्याल से। चलो ट्राई करूंगा, मैं दिन में आ गया तो दिन में स्ट्रीम करूंगा ना मैं। वो तरुण रहेगा तो ऊपर। ओके बाय। मैं तो भाई अपने डुओ को ही देखूंगा, मुझे चाहिए फन। एक बंदा है मेरे साथ, वो कराएगा मेरे को। मेरे को शॉर्ट्स के क्लिप्स निकाला करूंगा, वहाँ से स्ट्रीम का लिंक वो कर दिया करूंगा ऐड, बस। いろんなこと今試し中なので、前とは違ったデータが見れるんじゃないかなと思います。対戦したいのは T1 ですかね。リズさんが入ってから強いって聞いてるんで、T1 をとりあえずは戦って勝ちたいです。基本的にどのチームも強くなってるとは思ってます。ちょっと怖いですけど、ぶっ倒すしかないんで、ビビんないで自信持っていこうかなと思います。My first goal is to us be a really consistent team this year, with no like ups and downs during the season, so we can fight all of the years for the Masters spots, also the champions. めちゃくちゃ応援してくれる人がいるんで、それの応援には応えたいですね。長期的な目標はそんなに持ってないのかなと思ってますけど、チャンピオンズとかは出たいですね。そこは間違いなく。最初の方はちょっとうまくいくかわかんないんですけど。We're gonna need time because it's gonna be their first year in the franchise, but they are like working a lot. So. パシフィックチームと戦うのが初めてなので、緊張しないように、弱気にならないように頑張ります。最終的には本当に強いチームになれると信じてます。There's gonna be a new Zeta. That's it. The new Zeta. इनका मैच है कब? कल है इनका इंडिया जी वाला, और उसका कल है कि परसों है? आज ही है शायद एक मैच इनसे। जेटा डिवीजन का आज थोड़ा ना। जेटा से था क्या? नहीं जेटा से थोड़ा नहीं था, नहीं आज ही है शायद, 3:30 बजे किसका ही था। एक सेकंड देख के बता रहा हूँ। जेटा एक सेकंड, हाँ आज है 17 है ना, 17 फेब 4 बजे से है।
सेक्टर डिवीजन इसका हाँ जी पक्का जी हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ ना अभी 4 बजे है। फिर तो भाई वो देख के सोएंगे। display over at the AVL. They have now had way more time to further integrate him into the roster even more fully. So I think that this is still going to be a very scary एक बंदा इनका चला गया कि ऐड किया नया PRX में। PRX में वो चला गया था ना जिंग तो खेला था नहीं इस बार चला गया ना, इस बार नहीं खेलेगा ना जिंग, तो वो मोनियट ऐड किया था। AVL में तो खेला था तब तो मोनियट भी था। मेरे ख्याल से ड्रॉप कर रहे हैं 5th मैन लिया है ऐसा इन्होंने, 5th बोल रहा हूँ 6th मैन। नहीं यार मेरे ख्याल से इस बार तो डिवाइड खेला था PRX समथिंग फॉरसेकन मोनियट और एक और था कौन था माइंड फ्रीक। हाँ उसका नहीं पता मुझे, दवाई का वो खेला था कि नहीं? खेला था डिवाइड खेला था। अरे उसके वीडियो मैंने कमेंट किया था भाई वो अच्छा सही है। Anticipated teams coming into the season. We've seen some glimpses from them back at Red Bull Homeground. It seemed like there was a lot of potential there. So I'm curious to see how they look, how ready they're going to be coming out on stage for the kickoff of VCT Pacific. I'm gonna save on this roster. I think what we can all agree are the 3 best players on Zeta coming in: Sugar, Zero, Depp, and Laz. I mean, that is a very solid foundation to build around. So you've got like these superstars. अरे भाई Sugar Zero ये बंदा भी कौन सा है पैसिफिक का खोल के देखोगे रैंकिंग में, रैंकिंग खोल अपने यहाँ का पहले टॉप में रहता हमेशा ये रेडिएंट में। कौन? Sugar Zero नाम देख कभी देखोगे ना तो टॉप 10 टॉप 20 में रहता ही है ये। यार मेन पता है क्या, सिंगापुर वगैरह के आसपास के जो रीजन के बंदे हैं ना, जापान हो गया, कोरिया हो गया, इनकी पिंग आती है 40-50 मैक्सिमम 60 मैक्सिमम। उस पे खेलना आसान है भाई, यहाँ से आती है 80 पिंग 85। थोड़ा पड़ता है पिंग का। तुम्हारे वहां से कितनी आती है दिल्ली से सिंगापुर पे? 70। अच्छा 70 के आसपास तो देखी है मैंने, लेकिन फर्क तो बढ़ता है। कंसिस्टेंसी मतलब 60 भी आए 70 भी आए ना, लेकिन वो फ्लक्चुएट ना करे, बस एक फिक्स आए मतलब। तो वो एग्जिट लैग वगैरह यूज करते हैं ना तो हेल्प करता है, वो पिंग फिक्स कर देता है, वो फ्लक्चुएट नहीं करेगी, एकदम फिक्स हो जाएगी। +2 +3 ऐसी होती रहती है बस। ये वाला बंदा जो दिखा रहा था ये रॉसी था। Let's talk about somebody else who was dominant in the Japanese scene last year. Jemkin now joining RRQ. This team, no hesitation. That gets him. I think that I'm with you. Bring in someone like अरे कहाँ गए, आ जाओ। To really overcome the odds and carry a team into victory when they need it most. I mean, Jemkin in particular, there was no fear. When I went and talked to him, I'm like, man, you're coming in, you're playing in the T1, you know, now you're coming up to the bigger stage. He's like, yeah, okay, that's fine. I'm glad to hear Jemkin feels that way. Another thing we should mention is it's not just Jemkin. Astreya's coming in. He can actually call for a team, actually lead a team in communication, and he brings that structure that you need to make sure that you're on track. Also, fairly flexible player. They've announced that he's going to be one of the initiators. It should make this team a lot more free on the map. I'm right there with you. It's one of those things where I wasn't expecting this, but then when I saw it, it started to kind of come together in my head. I'm gonna half buy on this team. I just don't know how it's all gonna fit together. I'm a little worried, the group that they're in and with the way that things are gonna shake out, that maybe they're gonna fall just short here in the kickoff. Okay, big changes. But there's been a couple of teams that basically revamped their entire roster, and one of them ये टैलोन में गवर्नर ये भाई YouTube पे देखना, ये इसका अलग ही सीन है भाई ये बंदे का। ये क्या मैंने देखा नहीं इसको, मैंने याद इसका एम बहुत अच्छा गवर्नर का यार। काम एम, जिसको काम एम होता है ना, जो बिल्कुल काम, भाई इसका एम वो है, बिल्कुल कामली एम करता है ये।
और सिर्फ हेड के लिए। प्रैक्टिस है भाई, इतने टाइम से खेल रहे हैं। यूएस में है, मतलब यूएस का प्लेयर है ये, पहले एनए में है पर वो उनके में खेल रहा है पैसिफिक में। तभी लगा मुझे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम किसी की स्ट्रीम पे इसको देखा था, एनए वाली ट्विच पे देख रहा था किसी को। हाँ So many unknown quantities still with Talon coming into the season that I think for me I have to save. I have to wait and see how this team ends up looking. आज टैलेंट का ही मैच है ना अभी। ये लीड का ये 4 बजे होगा सीधा। There's some potential there, but can they really bring this all together in time for this year, especially for kickoff? Okay, you're bringing in these veterans who are kind of the brains of the teams that they used to be on, right? We have Blaze King as well, who wasn't the main caller, ये बंदा ब्लेज किंग इससे पहले वाले में नहीं था, मतलब डिसबैंड जब लास्ट टाइम ये छोड़ा था तब ये खेलता था, अभी वापस से इसने ज्वाइन किया है जी। ये 3 बंदे नए आए हैं ना, ये भी अच्छा प्लेयर है। I'm right there with you. I think that this is a squad that could have a couple of upsets, could be very stable, but is this going to be a team that reaches for the upper echelons of the standings? तो शुक्र मनाओ भैया कि ये कोई टीम है इंडिया में जो इंटरनेशनल लेवल पे दिखा रही है, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस इनको थोड़ा मौके मिल रहे हैं, इन पे परफॉर्म कर देना, अच्छा नाम हो जाए। I have a lot of faith in Big Time and Spin as the coaches to try to get these guys into place. I really like the way they talk about the game. मेरे ख्याल से रोसी को उतना टाइम नहीं मिला, जब तक वो शाइन किया तब तक उसको कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, उसको ड्रॉप कर दिया टीम। Team secret. We just needed, some fresh firepower, a little bit more fresh perspective, and it's going to be coming with NDG. Let's talk about that player first. He used to be the 6th man on Now Esports, but didn't get to see him at Ascension. But I will say the couple matches and couple maps they played at Predator League, he looked very good. And he has some great moments to prove that he's got what it takes. When Envy is your top player with firepower, Team secret. he's not your duelist, like how is that going to work out? Not changing the core too much, keeping pretty much everybody together. Other than dubstep. अच्छा, आपको अभी तक मतलब सभी रीजन में कौन सा बंदा सबसे अच्छा लगता है? सभी बोल रहा हूँ मैं, मतलब डुअलिस्ट भी हो चाहे कोई भी बंदा हो। हेलो, कौन सा बंदा पसंद है, मतलब कोई भी रीजन का बताओ, मतलब मेरे कोई भी प्लेयर पूछ रहा हूँ सबसे बेस्ट सिर्फ एक पूरे उनमें सब में से। हाँ, सारे रीजन में सबसे कोई एक बंदा का नाम बताओ जो सबसे बेस्ट लगता हो तुमको। यार मेरे को सबसे मस्त तो जिंग लगता है। जिंग लगता है, PRX है। दोनों ड्यूलिस्ट है भाई, 10 ऑफ फायर पावर। जिंग अगर रेस खेल रहा ना भाई तो वो तुम्हें रुला देगा। टीम का सपोर्ट भी है, पर जब वो एंट्री करता ना भाई, वो ऐसे ऐसे फेरता। तो क्लच भी भाई, जो उसने राउंड निकाला था PRX के लिए लास्ट सीजन, हाँ 1 HP क्लच, हाँ उसकी वजह से वो जीते थे वो। भाई एक था और ये लाउड के तम लाउड में ही था आसपास, तो उसके में क्या था, स्क्रीम ने 2 बंदे डाउन किए थे। जब वो इस आसपास को मारने आया ना, तो अपड्राफ्ट किया। वो अपड्राफ्ट में उसने क्या मतलब जिगल सा किया, पता नहीं कैसे बचा वो बंदा, क्या मूवमेंट थी वो। स्क्रीम, अरे स्क्रीम वर्सेस आसपास चल रहा था एक तरीके से, तो जेट भी था ये भी था, तो मार रहा होगा तो आसपास ने हवे में अपड्राफ्ट किया। अपड्राफ्ट किया मतलब हवे में ही होता वो, अपड्राफ्ट किया और हवे में ही मतलब मूवमेंट सी दी, क्या मतलब देख के मतलब रोंगटे खड़े हो जाता, ऐसी मतलब वो था। लेफ्ट राइट इसके ट्रैक ही नहीं कर पा रहे। Okay, I have the mechanical skill to fit with this team. Personally, I'm going with
like a full buy on this team. I'm really excited that they can learn from what happened last year. One of the players that we haven't really talked about yet is Munchkin, who is also on this roster, has had experience IGLing in the past, but he's also there alongside Lakia, so you have really good... एक चीज है, अब सारे ना 4:3 पे खेल रहे हैं सब, हर कोई 16:9 पे 1% प्लेयर खेल रहे हैं, 90-95% प्लेयर 16:9 पे खेल रहे हैं. मैं भी वही करूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत FPS का इशू मेरे को भी हो रहा है. आज 10-15 FPS तुम्हारे यहाँ फालतू आ जाएंगे उसमें. वही करूंगा. 4:5 पे खेलता था शायद मैं पहले, या नहीं 5:4 था शायद. मेरे ख्याल से अब ये में वो बात नहीं है. ये यार पता क्या, ये ना फास्ट फ्लिकर नहीं है, CS से वो ना लो सेंसिटिविटी प्लेयर है ये. सपोर्टर अच्छा है बस, ये मैं कहूँगा. जैसे डीमन 1 है, आसपास है, वैसे प्लेयर नहीं है ना ये एकदम पास. भाई डीमन 1 तो अलग ही लेवल का. अरे पता क्या मैं बताता हूँ, ये डीमन 1 आसपास ये सब हाई सेंसिटिविटी प्लेयर है भाई. इनकी सेंसिटिविटी देखना, ये गोल गोल घूमती है. ये कि भाई सेंसिटिविटी लोवेस्ट है. अरे डीमन 1 की बहुत कम है, उसकी हाई नहीं है. 1600.1 पे गिरता है वो. इसकी इकलौता ऐसा बंदा है, मतलब मुझे लगता है इतने पे खेल रहा है, उससे भी कम पे खेलता है. जेंडर है, अरे वो बोलते ना पॉपिन करके नाम है ना, पॉपिन स्विंग. हाँ उसी से फेमस हुआ है. उसकी और कम है, 0.16 है उसकी 800 पे. 800 पे 0.16, पता नहीं कैसे खेलता भाई. My gut is telling me Zeta right now. I hope that those lessons that they learned at the end of last year are instantly put into place at the beginning of this year, and they're able to come through and get that second place spot. And it's really a 50-50 between Zeta and Bleed, but I lean more towards Bleed as well. They're a bit more hungry. भाई इतनी देर में तो सोच रहा हूँ मैं DM ही कर लेता. रुके हुए भाई हम लोग तो. चलो खेलो, आप खेलो, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा. अरे नहीं, बैकग्राउंड में चला के रखा हूँ मैंने. अच्छा आवाज आती रहती ना. खेलो तब तक DM देखो आप. मेरा लंच वगैरह आएगा तो मैं खा के फुर्सत हो जाऊंगा. बाहर से मंगाते हो लंच? टिफिन आता रख लिया बाहर रहने का. अरे बहुत. ये मान के चलो आधा घंटा तो लगेगा ही. मैं अभी हेडफोन पे शिफ्ट हुआ, मेरे पास हेडफोन थे नहीं, घर से लेके आया पुराना वाला मैं तो. क्योंकि इसकी साउंड इशू हो रहा था मेरे को. ईयरफोन है तो मेरे पास अच्छे, लेकिन वो साउंड भी पता चलती थी. बंधन कल कैसे मार जाता था, मेरे को इसकी साउंड नहीं आ रही भाई. मैं डॉल्बी और भी एटमॉस वाला सपोर्ट है ना, ऑन करके खेला करूँगा. अभी क्या किया आपने, कौन सा लगाया? रेशियो कौन सा लगाया अभी? अब सेट कर लो उसको जाके.
का आपको क्रॉसर बताऊं, वो ट्राई करोगे? वो टीम लिक्विड का नेट्स नहीं है उसका था, अच्छा है, मतलब स्प्रे के लिए अच्छा था। Yep. भी रेगुलर पे खेलो, बार बार चेंज क्यों करते हो? मैं तो वैसे ही ट्राई कर रहा हूँ, वैसे तो मैं 0.85 CS है ना, पर मेरे को आती लो सेंस पे खेलने की। मेरा तो मैं 0.27 600 पे खेल, मतलब 135 1500 अभी मैं ऊपर नीचे को लगता ही नहीं है। 400 इंटू वो खेल रहा हूँ, क्या नाम, 0.85। लो DPI में माउस कम मूव करना पड़ता है, लो DPI में माउस कम मूव करना पड़ता है। ना क्या होता भाई, नहीं मैं बता रहा हूँ कि दो चीज़ों का फैक्टर होता है, इन गेम तेरा सेंसिटिविटी क्या है और तेरा DPI क्या है, इन दोनों के बेसिस पे होता है। वो मतलब EDPI जो है ना, वो अगर सेम रखो, डायमंड तुरंत टच मार जाऊँ अभी के अभी। पहली बार ये मैं खेलता ही नहीं उतना रेगुलर, अभी शुरू करूँगा वगैरह में बिजी था मैं, तो नई नई चीज़ें सीखनी पड़ी। खत्म करो जल्दी से। नहीं दे रहा भाई। इस तरीके का भाई आपका गेम प्ले है ना, पब्लिक तो आराम से आ जाएगी, लेकिन वही है ना आपके रेगुलर वाला, अगर आप रेगुलर हो गए ना प्योर, अभी आपकी मतलब आराम से वॉचिंग आती है आपकी। जैसा सेटअप है भाई, ऐसा तो बंदे सपने में सोचते हैं, अपने में सोचते हैं।
अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ क्या भाई? क्या जय कॉपी कर लेता हूँ। क्या कर रहे हैं ये लोग? पता नहीं मैं क्या कर रहा है। सब लोग हैं। स्क्रीन को क्या हो गया? कर रहा ना मैं। ओह फिर से चेंज किया ना आपने? क्या बोल रहा? मैं कह रहा था जैसे रेशियो बदलते हैं ना, जैसे 4:5 कम हो जाता है ना, ब्लर से दिखने लगता है। होता है भाई। वही है वो CS से आता है। उधर स्ट्रेच हो जाए लेकिन क्वालिटी हो जाए तो मजा आ स्टार्ट हो जाए। गया? किलो किलो में देख के बताता हूँ। VCT Pacific will now have 11. नहीं सो रहे हैं ये लोग। ग्राफिक्स आपके लो रखे ना पूरे? लॉर्ड में एक चीज बताऊँ, वो ट्राई करोगे? जैसी बंदा दिखे ना, आप अगर बॉडी पे क्रॉसर आ जाए, पहली 2 बुलेट फायर करके क्राउच करके वापस मतलब करते रहना, जैसे बॉडी पे फायर करके उसके ऊपर क्राउच कर लेना। मूवमेंट देते हैं बंदे तो मारने का तरीका लगता है। कॉम्पी खेलने लग गया तो भाई है वहाँ पे।
ये वाला जैसे मारा ना दो गोली मारते हैं, बॉडी लग गई, फिर तुरंत क्राउच मारते हैं। जब तक आप क्रैक करके आते हैं तब तक डेड है। अगर खड़े रख के मारोगे तब तक तो हेड लग जाती है। मेरी तो लगती है देखो 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 RNG एक तो यार लो सेंसिटिविटी में ना ये 360 मारना ही बड़ा मुश्किल होता है। हाई सेंसिटिव में मतलब तो हाथ कंट्रोल रखना पड़ता है। क्या राइट में ऊपर मार लो खत्म कर लो। अरे स्ट्रीम का नहीं अभी क्या यार क्या कर रहे हैं? अरे भाई इशू है, टेक्निकल इशू को तो कुछ कह नहीं सकते भाई, सब ठीक होगा। いろんなことが始まって大会だったりイベントだったり最初は強そうなキャラクターかもしれないんですけどもう途中からいなくなってるんじゃないですかね。悲しいこともいっぱいあったしめちゃくちゃ辛いこともटीम डेथ मैच मेरे ख्याल से तो मिलेगा नहीं, पर देखते हैं मिलता है तो। You ready? You look different. Yeah, just a little. まあオフシーズンで多少ゆっくりはできたし、メンバーも変わって新しくリフレッシュにスタートができて、まあ来年が楽しみな感じですかね。まあなんか自分より年下の人が今まで1回ぐらいしかなかったので、新鮮な感覚で、まあ、新しい風感じ、本当にそんな感じですね。まあチームとしてすごい爆発するような成長を遂げる可能性ももちろんあるし、逆に मेरी फेवरेट रेजोल्यूशन तो ये है भाई, CS में खेलता था मैं इस पे। ただこれでチームをもっとうまくलगेगा आपको कि क्या ही चला दिया है। 16:9 ही है ना? नहीं 4:3 बिल्कुल ही चौथा कर देता, फाड़ देता बिल्कुल। तो भाई पूरे पिक्सल के पिक्सल फाड़ देता ये। ये देख रहे हो ये देख रहे हो टेक्सचर दिख रहे हैं पूरे। अरे वो दिखते हैं ना बीच में ब्लॉक्स, एक एक पिक्सल दिखता है भाई इसमें। कभी लो सेंसिटिव वही दे भले बंदा सर नजर आ जाता लेकिन वो साला ब्लर हो जाता फिर स्क्रीन। इसलिए एक तो लैपटॉप मेरा है ना, इसलिए स्क्रीन आ जाए तो ठीक है। 16:9 उसमें खेलने लायक है। स्क्रीन छोटा है ना लैपटॉप का। मॉनिटर He can do everything. Whatever we're gonna do, he's the one that okay, I'm gonna do it. I'm here for it. プレイスタイルはなんだろうな。 भाई क्या पिक्सल फाड़े देख रहे हो, नाम भी फट गए भाई सबके। मुझे इतना पता नहीं चल रहा है, आपको दिख रहा होगा सही से।
दिख रहा है डिफरेंस कुछ की नहीं अभी भी डिफरेंस नहीं लग रहा इसमें चलती है फैंटम ये लो मैं तब तक अपना लंच करता हूँ स्प्रे एंड प्रे पूरा चला बीमेन में कब से कम करके बैठा होगा भाई सालों ने FPS लॉक कर दिया इसमें 400 से ऊपर नहीं जा रहे छोड़ो भाई
bigger stage. He's like, yeah, okay, that's fine. I'm glad to hear Jemkin feels that way. Another thing we should mention is it's not just Jemkin. Astreya's coming in. He can actually call for a team, actually lead a team in communication, and he brings that structure that you need to make sure that you're on track. Also, fairly भाई इतना भी क्या इसका वो हो गया टेक्निकल में? initiators, it should make this team a lot more free on the map. I'm right there with you. It's one of those where I wasn't expecting this, but then when I saw it, it started to kind of come together in my head. I'm gonna half buy on this team. I just don't know how it's all gonna fit together. I'm a little worried the group that they're in and with the way that things are gonna shake out, that maybe they're gonna fall just short here in the kickoff. So, okay, big changes. But there's been a couple teams that basically revamped their entire roster. Warm up. And one of them is going to be Talon. Would never have been able to get. We've got Lenny coming over from Team Secret. You've got Dan joining after hosted Q1. It's been a lot. भाई कहाँ से बन जा रहे हैं?
bit more hungry to do this all, across all 5 players. Next up is Group B, DRX, Team Secret, DFM, and Talent. I mean, it's going to be interesting. Teams with a lot of changes. I think that I will still go with DRX to make it out first. But I think Team Secret definitely goes up in first here in this group. Now, whether they're able to go all the way to the finals is a whole different story, right? The not too many changes, that's what I think is going to carry them over into first place. But for whatever reason, I'm just feeling in my gut DRX. Okay, so we're a little split on the first place, but going into second place, we just have seen so little, and the little we saw from both DFM and Talent weren't that promising just yet. I think DRX is still stable enough to go up in second place. Should we just say our second place prediction on the count of 3? Together? Do it. Just at the same time? Yeah. All right. 1, 2, 3. Team Secret. DFM. Okay. For some reason, I just really like this DFM team. Maybe I'm just such a May fanboy that I believe that he can carry them over the line here. I think there's just too much talent on this team. If they can just kind of, really buckle down, get it together. This team really has a ton of potential in my opinion. Bro, Biggest concern again. are they ever gonna start this match? The prep go, they have to play multiple matches back to back to back. That's the one thing that's concerning me. But if that is something that they have tackled, then I don't think I have any cause for concern. The last group, it's going to be the reigning winners of VCT Pacific, Paper Rex, and then it is Gen G and RQ. What we've seen from Paper Rex across 2023, they should, and I think they have to be, your first place prediction going out of this group. I just have too much faith in Coach Alex. I mean, I think he's so good at getting the players to kind of believe into themselves and their own system. They're just too good, man, top to bottom. Once again, put all of the hopium I have left in RQ. Wow. Okay. But we talked about theoretically why they should look better, a lot better than last year. And this is where I think it gets even spicier, because you've got Paper Rex and Gen G remaining. We have the 2 inseparables of RQ and Gen G remaining. Okay. And I think that we have the harder decision, so I'm going to make you go first. That's right. Okay. And just like it happened in the earlier groups, I think this is one where, yeah, Gen G has a lot of potential, but all 5 players on Paper X have the X factor. Not only good aim, but they're able to clutch it up when it's needed. They're able to go for these 1v2s, 1v3s, maybe even 1v5s. So that's where I'm going to give them the edge and say Paper X still goes into, the potential play-ins and potential playoffs here for kickoff. I really think that this is the time for Texture. I think this is his moment where this is either it. Like, he's got to get it done this year, or he's just not actually that guy. He's not that duelist that we've talked about for a long time that could potentially be, the superstar. I'm big on this team. There's so much firepower on this team. I'm going to lean to RQ. I think that they have way more solid of a foundation to build off of. I think that they've done nothing but make positive moves. I think Gen G very much have done the same exact thing, but I'm still going to go with RQ. Who are your top 2 teams to go to our first international Masters Madrid in 2024? I'm going with RQ and T1. Okay. I think RQ and T1 have made sweeping improvements, and they're going to go to an international tournament to prove that Pacific can be one of the best regions. Okay, you're looking at me like, yeah, that's my turn. Paper X T1. I agree with you on T1. Paper X, I still think is going to be fine. It's not going to be quite that same look, I suspect, but it should be very, very similar flavor. For me, I'm also going to go with T1. I think that T1, they've just looked so very good. I think that they have a really solid foundation, and I'm expecting that they will be able to make it over to yet another international event. The team alongside them, though, I will go against you both because I am he can't get away from it. I'm going to go with Team No, it's DRX. I'm going to go with DRX. I think that I just believe. I just have the faith. Finally.
first week the guys came in, they weren't being too serious with everything. It's like seeing who's sitting next to who. The second week is when we really started practice. This year we have a lot of creative minds. People enjoy thinking about the game a lot in the team this year. Players are under a lot of stress, or they don't have the strategies in place to recover well. There's a huge risk of burnout down the line. It's important to me that they have the support they need to work as hard as they can. I want to build flexible players so they can adapt very easily. Because I think in sport, the people who adapt the quickest are the ones that will win. We encourage the guys to actually rest on that rest day, do what they need to do to feel recovered for their next week. When I was younger, I was always thinking about stuff like sitting down at like a stall in front of like the people cooking and stuff and just eating there. चोरी नहीं कर पाए अभी तक हो गया पागल आप अपने स्ट्रीम करो एक काम करो मैं तो बता दूंगा अगर हुआ तो ठीक है तो मेरा क्या टीम मैच में चला दिया मैंने चैट में गालियां भर रहे लोग पैसिफिक वाले में हमको बोल रहे हैं भाई ऐसी तैसी भेजी मैं इनकी ऐसी तैसी डीएम ही सही है एंगल चेकिंग और एम सही करने के लिए आप क्यों चल रहे क्या अच्छा एम है हाय सर ले कहाँ छुप छुप के रहते हैं 1.5 घंटा हो गया 11:30 बजे स्टार्ट होना था एटूड मारूंगा बस अरे तेरी रेना तो गिरा गिरा के मार रही है मिल गया वापस
चाहिए तो भाई गोली की लट्टी में क्या करूँ इसमें 130 कभी कोई समझ में नहीं आता इसका पता लिटरली कहाँ मारूं कंट्रोल नहीं कर सकते इस गेम में मुझे ऐसा लगता है या तो फिर मारो क्योंकि स्प्रे तो होने से रहा इस गेम में हर बार 120 लेना वो हर बार मैं तो पीक लेते ही मर जा रहा हूँ भाई पीक लेते ही वीडियो में यही थी मेरी टीम तो भाई पता नहीं कहाँ ही मर गई दो बजे पीछे आ रहा है हाँ कुछ भी मार दो भाई कुछ भी मार दो ट्रैकिंग इस गेम में होता है आपको स्प्रे करना बंद करना पड़ेगा will make it through to the VCT Pacific Stage 2 playoffs. The top 3 teams in playoffs and the one team यही दिक्कत है इस गेम में points will earn their ticket to Valorant Champions. जो पहले मार रहा ना उसकी गोली पहले लगेगी हां ऐसा नहीं होता हेड मार दो बस और कुछ नहीं होता Earn championship points to qualify for Valorant Champions at the end of the year. Teams earn 1 point whenever they win a match during stage 1 and stage 2. They earn 3 points if they win kickoff for stage 1. उनको स्प्रे वगैरह सही करना चाहिए Also earn 3 points whenever हाँ यार 120 की बात तो स्टक हो जाती है बुलेट्स लगती ही नहीं 2-3 मेरे को लगता है चौथी पांचवी लगती है अरे पहली 3 अगर मारी तो वो एक जगह जाती हैं बाकी 30 चौथी पांचवी फिर ऊपर भाग जाता है रिकॉइल यही सीन है अरे चालू कर दो यार The value under attack bro हर एक बंदे ने लिखा था भी चैट में क्विक अपडेट टैलेंट्स टीम बस वैन जो भी मतलब वैन होती है मेट विद एन एक्सीडेंट एंड द प्लेयर्स आर ऑन द वे टू हॉस्पिटल और बंदे कह रहे भाई अभी तो दिखाया था 5 मिनट पहले स्टेज पे सेटअप कर रहे थे स्टेज पे तो आ गए थे एक बंदे ने लिखा था कहता आई स्टार्टेड वाचिंग VCT Americas again. I ended up watching the entire 2 matches and these matches have still not started. वो हाइलाइट्स देखा होगा फिर वो ले देता हूँ I was silver when this stream started. Now I am radiant, but the match has not started. Spoken about it openly. So the first name on my list was Maxim, aka Jemkin. It feels good to move to Korea. It was hard to make visa, but I'm glad that I'm here right now. This guy is insane. Every time on attack, I just do something and then he just entry and then he just kill 4 and then kill 3. Sometimes you see a duelist like after एक बंदे ने लिखा guys chill they forgot to download the Windows. but Jemkin he never overhit. He's very disciplined. Like after he got 3, he wait for his teammate and then maybe we decide what's next. I bring more firepower. हमको बोल रहे थे हम लोग को तब भी चालू हो गया था So I can help my teammates. So yeah. Another thing is that we're looking for a flash initiator player that can actually frag and can potentially help IGL. RRQ 팀의 에스트레아라고 하고요. 저는 이 팀에서 세컨드 폴로로 이제 플레이하고 있습니다. Mechanically is like very talented in aim. Second Okay. calling also is like very good decision making when to मोड लगा use हुआ है dog, use util. Overall is like best initiator player in Apex. 제가 생각했을 땐 제가 약간 못 온다고 생각을 안 하고 곧 데뷔 시작하니까 ये आज अपन 1v1 करते हैं One of the first trials we did was Jemkin and Estrella together. I don't छोड़ भाई तुझे मार के मुझे क्या मिलेगा
of chemistry for the first time playing मेरा together, दिमाग so खराब that हो रहा made है me वैसे really ही। excited. I feel like we रुकना, can work on top of that आपने and then वो make देखा it था a VCT अमेरिका? champions qualifying team. हाँ दोनों मैच पूरे? पहला नहीं देखा, दूसरा देखा था। पहला वाला देख लो, हाइलाइट्स लगा लो तब तक, क्या पता तब तक ये लोग होश में आ जाए। मैच अभी तक 27 सेकंड में है। क्या? अरे कितना ही डीएम खेले आदमी, मैं तो 4 मैक्स टू मैक्स खेल के बोर हो जाता हूँ। And amongst the adults of the league, and I think we could surprise some punching above our age class. This year gonna be our year. अब चैनल को प्रमोट करना है ना, तो ये वाली ट्रैक मतलब ज़्यादा नहीं काम आएगी, क्योंकि कितना ही लोग मतलब करेंगे या नहीं करेंगे। आप शॉर्ट्स पे अच्छी क्लिप निकाल के डाला करो, थोड़ी सी फनी वाली, एंटरटेनिंग वाली, क्योंकि गेम प्ले रह चुका है, या तो आप इंसेन हो, दैट इज द मतलब अनदर थिंग, क्योंकि एंटरटेनिंग एक अलग चीज़ है। बंदे चिल करने ज़्यादा आते हैं, गेम प्ले देख के कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वही बात है ना, गेम प्ले इम्प्रूव करना अपने हाथ में है, देख के किसी का इम्प्रूव होता थोड़ा नहीं है। チームとしてすごい爆発するような成長を遂げる可能性ももちろんあるし、逆に多少リスクचैट में लग रहा है वर्स्ट कंट्री टू होस्ट VCT। ただそれでチームがもっと上手くなってもっと強くなる可能性があるのならばそれはチャレンジしなきゃいけない。ये पक्का ये इंडिया का लग रहा है मेरे। अपने यहाँ हुआ था तब बाहर के अपने यहाँ के चिल्ला रहे थे, अब बताओ और कोई है? सेकंड इसको बंदे को सेव कर दो। लाइव कर वहाँ सामने है 90? एक गोली में टूट जाता है यार। बंदे की हेड पे मरता 145 लगती है फिर भी।
गोली ही तो नहीं लगती भाई, ये समझ नहीं आ रहा गोली क्या है। बहुत गंदा है। डालो उसमें डालो भाई, क्या मतलब क्या? उसने भी 6-7 गोली मारी। गलत गन से अपने अंदर ले लिया इसको। लोग भी होते चले जाते हैं। अरे ये वाली गन पे स्कोप ओपन कर, लॉन्ग रेंज में स्कोप ओपन करके मारूंगा मस्त लगते शॉट। रेस देखो गन के लिए खड़ा हुआ है। इतना गंदा है हो गया क्या? खुद ही ब्रांड हो गया। ये भी सही है। मार के आते ना, अलग ही एकदम सेटिस्फेक्शन सी मिलती। भाई नबजी मैच देखना चाहिए। भाई लगता यार वो देख, वो मेरे सामने ना एम करते करते क्रॉस कर गया। क्या बोलूं मैं इसमें? किस्मत है भाई। देखो ऐसे बंदों को तो एक ही इलाज है, मेरी आंखों मार दे, अंधा कर दे मुझे, आराम जाते पिल्ले। कंट्रोल मजनू कंट्रोल। अंदर पूरे टैलेंट है। क्या कर रहा हूँ मैं? आज नहीं कल क्यों क्यों, ये तो एक बहाना है। इस बंदे को मैं 100 बार टहलते हुए देख लिया। हाँ ये नहीं हो रहा है। I'm right there with you. It's one of those. Can you give us a sick time, like 5 p.m. or anything? It started to kind of come together in my I believe we all are gonna this. Regions, acha. I don't have patience anymore. What the fuck is? Okay, big changes, but there's been a couple of teams that basically revamped their entire roster, and one of them. ए सुनो ना, आप एनर्जी नहीं देखा? एनर्जी लगाओ तब तक देखते हैं।
टीडीएम आदमी कितना खेलेगा? मेरा टीडीएम में सर दुख गया। अच्छा आपके पास आईडीएम है क्या? हाँ यार वो पुराना वाला पड़ा हुआ है। मतलब वो पेड वर्जन वाला खरीदा हुआ है? नहीं नहीं डाउनलोड कैसे दिखा रहा है? मेरे को तो डाउनलोड आता नहीं है। अरे वो उसका इंटीग्रेशन ऑन करना पड़ता है क्रोम का यहाँ जाके। ये देख सकते भाई, देखी तुमने पिछली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग? ट्रेलर तो देख लिया। नहीं मूवी देखी थी जो पहले आई थी, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग? ना ना बहुत मस्त है। अरे देख के स्ट्रीम पर तो नहीं लगा रहे हो? हैं? स्ट्रीम तो नहीं चला दी क्या? हाँ स्ट्रीम तो चल ही रही है। हाँ तो हटाओ ना, फिर इस पे आ गया तो ये तो आ ही जाएगा। मियाँ भी यही देख रही है, सभी यही देख रहे हैं क्या? आप कुछ सोच समझ के ना चलाया करो, क्या चला रहे हो? ये भी चल, अभी चल क्या जाएगा। देख रहे थे हम? एसी का देखने लगा था। अरे VCT एनआरजी वर्सेस अमेरिका किक ऑफ। किसका था लगाई थी एनआरजी? इन्होंने। अरे होगा इनका नहीं है, वो हाइलाइट्स डली हुई है, ये पूरा देखने की जरूरत नहीं है। ये रहा ये देखो 36 मिनट वाला। हाँ Let's go. Receive it. Here's the reaction though. Wall goes up now straight into the B side. The knife connect. No, it didn't. There's still one tripper. Free sight. 5-man retake. Backside control. Still the plant is there. Hold on, Demon One's alive. Everyone lock in. Normally these teams on the retake are going to battle for the window position. Oh my god. Oh my god. How many Furia players are ready to They're all here. And here it is. Crash. आपका करेक्ट वर्जन है क्या आईडीएम का? हाँ हाँ एनर्जी में सोम को निकाल दिया। हाँ उसका कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन होता ना, खत्म हो जाता है 2-3 साल में, पता नहीं कितने साल का सीन होता है। अरे वो तो रिन्यू करते हैं ना ये, डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस। इसलिए डीमन वन को ले लिया इनने। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ईजी वाले ने क्यों छोड़ा भाई, जब डीमन वन इतना बढ़िया मारा है। ख्याल से कुछ ज्यादा सैलरी मांग रहा था वो, इसलिए छोड़ा उन्होंने। एक सेकंड। हाँ तो पूछी बात। जैसा खेल रहा है बंदा वो हक बनता है उसका। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वो 1v1 मतलब फाइट ली है उसने, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। पता नहीं स्ट्रेट्स ये लोग दिखा रहे थे, 57% बता रहे थे। अरे तेरी ये कब का देख रहे हो? 6 hours ago। हाँ सुबह का ही है। Mouse jump. With the recon as well. Oh no. Hold on. Players in his face. Lots of chances, lots of opportunities. And it is देख रहे हो? भाई डिफॉल्ट वेंटल गोटेड है भाई, एक डिफॉल्ट वेंटल और एक ये अपना कैओस, ये दोनों गोटेड वेंटल है भाई दोनों। कैओस मेरे पास है ये, मैं भाई 1 महीने से वेट कर रहा हूँ कैओस मार्केट में आ ही नहीं रही। वेंटल में कैओस, वेंटल में कैओस, फोरसेकन ये दोनों, और फैंटम में रिकॉन। अच्छा एक मैंने क्लिप डाली थी 1v4 की शॉर्ट्स पे, वो मैंने उससे किया था अगला चिपके उससे। ये देखो This is kind of tough, bro. I'm not gonna lie. This skill right here is huge. Let's see how Victor peaks. इसमें गेम में सारा मूवमेंट का खेल है। Yeah, Mizura peaked. टाइमिंग का खेल है भाई, जहाँ तक मुझे लगता है सारा टाइमिंग का खेल है इस गेम में। नहीं वो तो चलो किस्मत की बात है मेरे ख्याल से टाइमिंग, लेकिन अगर 1v1 अच्छी तरह लेनी है तो वही मूवमेंट और क्या कर सकते हैं।
taking it to him. We talked about that jet head-to-head. Still Ethan is alive and kicking the IGL. The flank time. Everyone shut up! Everyone shut the fuck up! Everyone shut the fuck up, bro. क्या भी पड़ जाएगा इसको टैग. The server might be fucked up. Difficult, but it's steadily really just getting out of their hands here. What's happening? With the pit now falling, it's all down to just the one. It's Conan. That's what I'm talking about right there. What's up, that mother? ये ट्विच पे कर रहा था. देखो गाली तुरंत देते हैं. भाई ट्विच पे दे सकते हैं ना. तुरंत वही तो फायदा है ट्विच का. कुछ भी चलाओ गाना वाना कोई मतलब ही नहीं. Usually you go up there, you just get one shot. It's kind of ballsy, bro. अपने यहाँ की तो मतलब ही है. यूट्यूब वाले टी सीरीज वालों गाना चला तो अम्मा मरने लगती उन लोगों की. It's literally, he actually does not give up. Actually a good call by Furia because there's only one there, technically. Like one spawn. Oh, Victor's coming back in. एक बीच में एक मस्त क्लच था इसका. पूरा शुरुआत का नहीं देखा था. मैं लास्ट मैच देखा था खाली. Good for Ethan to not peek more. Wait, what? What? पता है अपने रीजन में यही चीज मिसिंग है. टीम गेम. जैसे ये बंदे साथ में निकल के पीक लेते हैं ना, साथ में पीक लो ये वगैरह करोगे. यहाँ अपने चौड़ में घूम जाता है. रेना के दम पे मारेंगे ब्लाइंड घुस जाएंगे. चलते. If you give him a chance to get the kill, he always gets the kill. Look, look, look. It's so free for him. What can you really do though with the stinger? Gotta get up into somebody's face. Wait. Hello. Last one left. Not a chance. होगी खोपड़ी. I can't explain Rockets. साइफर का सीन क्या वाला. मैं जब तक टोपी पहना रहता तब तक तो मार लोगे इजी. जैसे टोपी उतर जाती इसकी सर ही नहीं दिखता उसका सही से. इतना छोटी सी टकली दिखती उसकी. Ruby 4, the op on the post plan could be big. One. Good one to begin. All three are spawned. 3v3. What about who can get these first picks as well? Demon One's also holding the operator angle. It's a difficult Time is ticking. Still, he just needs to he's holding for so long, bro. Once more Khalil, still close. सब अच्छे बंदे होंगे खेलने वाले. इस बार मुझे लग रहा है सेंटिनल बहुत तगड़ा खेलेगी. क्यों? कल मैच है. अरे उनका देखा नहीं आपने परफॉर्मेंस. क्योंकि ये टीम का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है जो अभी रोस्टर है. मतलब नया कोई आया था क्या? जेल्सियस आया था शायद नया. कोऑर्डिनेशन बहुत सही है उन लोगों में. तो हर एक तो बंदा उसका स्ट्रीम करता है. हाँ ये भी कह सकते हो ओवर हाइप्ड है. ओवर रेटेड तो नहीं बोलूँगा मैं. टेंजवी भी है. क्या? टेंजवी भी है उसके साथ. हाँ खेल तो रहा है भाई. टेंस को नहीं छोड़ सकते ये लोग. कितना भी अच्छा हो बुरा हो. वो बंदा लिटरली उसका कुछ भरोसा नहीं. वो बंदा कुछ भी कर सकता है. सीधी बात ये है. टेंस अलग बाकी अलग. सबकी अलग अलग पहचान है. टेंस ने अपनी बनाई है बस. हेलो. Manifesting for the last round of the half. Here's the pit, finally down in play. So down. These two players, the double doors, Marth and Victor, got to try and play together here. Find these kills. All up to Marth. He will. Nice big round for Furia. That is an 8-4 half. So, that is risky. But like, really interesting. Let's focus on the match here. Let's focus on the match here. NRG were running a fake into B there. भाई इसकी बहुत तगड़ी वॉचिंग आ रही थी. हाँ? इसकी 70,000 के आसपास वॉचिंग पहुंच गई थी. सुबह मैंने देख रहा था. 94 के व्यूज तो इसी पे हो गए 6 घंटे में. तो वो डाला है ये तो हाइलाइट्स वगैरह बना के बाद में. ट्विच पे देखते हो लाइव वॉचिंग क्या तगड़ी आती है.
अबे लोगों को मतलब नहीं है कि आप कैसा खेलते हो कैसा नहीं खेलते हो, उन्हें मतलब है बस आप कैसे गाली गलौज तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन बकचोदी बोलते हैं हमारी भाषा में, तो बकचोदी करते रहो बस। ओ शॉट है, एक तो ये हर एंगल पे इन्होंने ये बॉल बैग बना रखी है, ऊपर की दीवारें हैं। वही तो कभी कभी गुस्सा आती है, ये हर एक के थ्रू बॉल बैग लग जाती है। याद रखना पड़ता है कहाँ से पड़ती कहाँ से नहीं पड़ती। People have ended games with 0 kills before. Damn, bro, you have 1 HP! Really off there, MW still lucky. Backing away, He's shooting back! There we go. Welcome to the big time! Is that cyberbullying? I don't know, but... That's my goal! That's my goal! It's 5v5! It's officially 5v5! Getting behind one of our youngest players here. Havoc's my goal! They're cheering. इसका नाम चिल्ला रहे हैं। हद है, पब्लिक भी ऐसी है। Have some respect, bro. 3v5? Alright, there's no way Fury will win this 3v5 retake, bro. I mean, Havoc is one of the three. Alright, I'm just kidding. That's fucking... That's actually... Apply this pressure. I take that back. They only really require a few players on site to do this too. There's no way. Might as well save. Yeah, Great mid lurk from Victor. Demon one as well. Yeah, into halls. Up deep in halls. Plenty of threats available here. Fury are going to be finding it really difficult to try and play this retake. Time potentially against them. Ethan making noise with the jump spot. Timing unfortunate. He can't do it, bro. भाई ये किल ही नहीं आ रहा उसका बेचारे का। क्या 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 बोला? मैं कह रहा हूँ हैवक बेचारा एक किल नहीं ले पा रहा ढंग से। मुझे फीरिया का ना ये तो गया। Dude, think about it, dude. Bro, he probably has like his family and his friends watching the game, and we're gonna sit here and like, dude, alright? We're cutting that out, bro. That's a decent We're bonus cutting that round. dude. They've still got money to That's be the able to last buy thing up you a hear me bit. say. That's the thing now. Watch this, Kale's about it. Wait, it's Havoc. Can he do anything with it? The I answer jinxed him. is no. Oh my god, I forgot it was him. I shouldn't have said anything. Piece that was needed. His final two players Bro, literally rolled out of bed into the match. The dart, everything to set it up once more. Initiators really helping it out. One last bullet. Not enough for it, but yeah, NRG. They've just walked Ethan onto site, kind of alone. He hears them though. There we go. Offload into Yolt. See if he can survive as well. This is revealed for about a moment. Here we go. Hunter's Fury into Ethan. Couldn't quite stop. मैं तो भैया ना डीमन 1 का वो देखा था मैंने एम रूटीन, जैसा है मतलब क्या है रेट अलग ही है इसका गेम है उसका। Just let them rip still the dash active on top of things still. I don't know about this. It's a weird round. Over peak. They can make the most Wait. of all of this here with time running. What? How? Man of the hour. You can't let them win this round, Fury. How do they win this? Insane. Got to be kidding me. MW. शॉट है। Dart doesn't scan him. Crash is gonna peek. Crash is gonna peek. There's one moment defining. It could be everything. The back-breaking round. Oh wait, Crash is walking up now. This one out, but the timing's here. Caught it to the side. Crashes. That timing is so trash for Crashies, dude. क्या बोल रहा हूँ मैं इस गेम में मैक्सिमम भाई टाइमिंग ही होती है मेन सब कुछ। अच्छा ये बताओ सीएस में फुटस्टेप्स आए देती आपको बंदे की? बिल्कुल अगर स्लो चलने लगे जैसे मैं वॉक करने लगो तो सुनाई नहीं देती कतई। वो तो सीएस में भी नहीं आती शिफ्ट वॉक पे तो। वही तो मेन है इसमें शिफ्ट करके पीछे से आके काट के चले जाओ। Fully alone. Rotate is late. Hey. Went for that? That is so ballsy. Wait, what is Ethan doing? What? Leave it up to Victor. What the f Can't happened? find any easy fight. And it's shut down in a moment's notice. Switch as the rest of his team gets close. Will this flash connect onto the backside player? That's Liazzi. Off around the corner.
Dark flash, everything being combined, even with the knife. Liazzi still holding his ground, still shot missed. He hit him. Players running his way up there. That's Victor. The split is good. He has taken out a kill. Still Liazzi. Play to watch for, really. What's happening? He's the one making these rounds Is more Havoc than there? winnable. Out to the side though. Does not expect crashes This in will that be 2 though. particular Still position. winnable for MW both. narrowly avoiding it as well. Bullet sailing. Oh, the angle whistling here. right over to his head. So close. Looking for the fight. Now with the ult offloaded. Gives him an idea of the positioning. Viper ult, 15 seconds, you can get the bomb. 16 seconds left. Actually helped him off the cross, right? It blocks the sight line and allows him to cross. Yeah. It's not really to play the post plant, it's just like a smoke. Wait. Trying to get himself there. Planning all the way there. Time Damn. available for the plan. Ult's gonna go down. Down to almost anything. Battle of the timing. Crashies has cross here too. Crashies reposition has got to be fairly. Does not use the dart, right? He does not use the dart. I don't know if they're expecting, but they expect it. They're looking, yeah. But it's not going to be a swing from see the jiggles. Crashies, he's taking a little bit back. MW. Yeah, but they play it too safe here or no? Wait, Iceman, hold on. Marv is low enough. 39 HP. आयुष ने प्लांट किया होगा ना कैसे बंदे हैं पागल ये एक एक एंगल क्लियर करके जाते हैं हर एक पिक्सल क्लियर करते हैं तो ये नहीं कि कहाँ बंदा छुपा है नहीं पता चेक करेंगे हर जगह स्लाइटली ऐसे तो भैया अगला मैच का पता नहीं क्या होएगा आज 3 है मैं ये देखो साइड में दिखा रहा है क्या साइड में देखो दिखा रहा है ना थंबनेल देखो T1 ब्लीड जेनजी RRQ Zeta ग्लोबल स्पोर्ट A1 3 मैचेस पता नहीं दूसरा कितने बजे से होगा Reposition to the back of the site using the Viper wall against him as he puts his own up though. Here we go. Round to the side. Shuts it down and brings energy to that 12th round. Dude, the pressure there is very high. I'm not gonna lie. W. Huge round for real. Yeah, look at their money by the way. Look at the Fury. Diligence isn't there. Look at that, Ethan. Not expecting. I believe that's one of the first. It's okay. I do the same thing honestly. They faked the A split with just the wall. ये इसने अपड्राफ्ट क्यों किया फालतू में पैनिक होता है यार इतना स्टेज पे प्रेशर भाई बहुत सब चीजें होती है ना पहली बार थोड़ा नहीं खेल रहे ये लोग यार सालों से खेल रहे वही चीज They're mollied off. They're orbed out, bro. What the f is we doing? Who called this mid round? Show me Havoc. Is what Havoc is playing there. The poor guy. What a shot, bro. Give him a break, man. They're contacting. But the cam is going to see all of this. They broke the trip and the cam, bro. Close to the corner, Khalil. Cage is up. Oh, they pinged them. They don't know about this guy close, but like, I don't know. This guy's posted. He's ready. अपने में तो यूटिल वेस्ट कर देते सारी फेंक डालो It's planted open for everything. And they have an op. Oh. Still walking a little bit wider. There it is. Lineups being used on offer, and this is when the time really starts to tick. Putting it all on the line here for Fury, and this could be the backbreaker, the round win just based off that alone. The lineup's bad. Slight miss to the side, but they don't want to stick it in the moment here. Still Conan pressing the advantage, pushing forward. Yellow. Khalil, he will fall half on it, and a shot. कर दिया That's so close. 13-10. That was so close. That was so close. What's up, dudes? I just want to give a quick reminder. If you haven't hit that subscribe. चल निकल देखा भैया कैसा लगता है कैसा लगता है जब कोई ऐसे क्या क्या निकल जाता है अब उसकी जगह आप रह गए देखो अब मैं खड़ा हूँ तो वो तुम्हारी जगह है मैं बोलता हूँ चल निकल भाई बहुत मुश्किल है भाई करना लगता है स्ट्रीमर होना भी बहुत मुश्किल चीज़ है क्योंकि देखने में इजी लगता है जब बैठते हो ना करने बहुत चीज़ें प्रेशराइज मतलब करती हैं अलग अलग तरीके से
व्यूज नहीं आ रहा है, वॉचिंग नहीं आ रही है, वगैरह वगैरह, मेहनत नहीं करना चाह रहे। अगर होना है भाई कामयाब तो तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ेगा। क्या डिफरेंट कर सकते हो? बस आज के ज़माने में यही सीन है। एक बंदे ने बोला था मेरे से, मैं शॉट डाला था, कह रहा था मैं वैसी वीडियो डालने ही सोच रहा था, तो मैंने काट काट के लिए बना दी ऐसी हेडशॉट्स की। वो कह रहा था तुम्हारी वीडियो क्यों देखेंगे लोग, और इससे बढ़िया वीडियो पड़ी हुई है। तो उसकी बात मुझे लगी थोड़ी सी सही, तो मैंने सोचा अच्छा क्यों देखेंगे, इसका क्यों का जवाब मैं ढूंढूंगा फिर। तो मैंने क्यों का जवाब ढूंढ लिया है, बस मुझे उस पर काम करना है। वही है भाई। तेरी वैलोरेंट में वो वाला सीन बहुत कम है, एंटरटेनिंग वाला। इतने स्ट्रीमर नहीं है एंटरटेनिंग वाले हैं, तो गाली गलौज तो मतलब बहुत कॉमन है। दिक्कत ये मेरे से गाली गलौज नहीं होती ज़्यादा, मैं कर भी नहीं सकता। आज अब टीम कैसे, बस यार रोहन भाई आ जाओ, जल्दी आओ, डिस्कॉर्ड आ जाओ। रोहन भाई हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप IIT में सिलेक्शन हो गए, पार्टी तो बनती है। कौन सा IIT में लेने की सोच रहे हैं वैसे? आ जाओ, डिस्कॉर्ड आ जाओ। एक मिनट ना, रिफ्रेश कर लें। भाई कितने बेशरम है भाई। वो नहीं स्टार्ट करेंगे। उनका चार्जर खो गया है। आओ डिस्कॉर्ड आओ जल्दी रोहन भाई। तेरी क्या सीन है यार, इस शक्ल देख देख के बोर हो गया मैं इसकी। ईश्वर बचा ले। ये मार दे। एक PRs के खिलाफ एनर्जी मतलब डीमन 1 ने किया था क्लच है वो वाला। गार्डियन से किया था, मस्त मारा था, 3 किल मारे थे, खट खट खट। Still has that paranoia. Can he cook anything up with that? Looks like he's going to try and use it on these lane players. Gonna need a miracle, but time maybe working on their side. Big omen blind triple. Three players colliding and still come down to just really the minute details. ये कम वक्त आज नहीं चालू करेंगे लग रहा है। Damn, they saved them so well too. Those smokes are so good, right? Wow. Hey bro, what's up? मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है भाई, आ रहा है। और सब बढ़िया बढ़िया। अरे इतना जल्दी स्ट्रीम कैसे किया यार, मैं पढ़ रहा था, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। अरे वो मैच आ रहा ना ये। अच्छा वॉच VCT, हाँ साला 3 घंटे से बैठे हैं, मैच स्टार्ट नहीं किया। 11 साढ़े 11 की टाइमिंग थी, 2 घंटा तो निकल गया। अरे व्यूज ले रहे होंगे और क्या ब्रो, मेरा तो पढ़ रहा था मैं, जो CBSE का एग्जाम है ना वो देना था। एग्जाम चालू होने वाले हैं। लोगों को IIT की दिक्कत नहीं होती, लोगों को CBSE में पास होने की दिक्कत होती है बस। हाँ ब्रो वही दिक्कत है ना, पूरे साल भाई ये किया अभी, अब लाइक सब यार थ्योरिकल हो गया, दिमाग खराब हो रखा है। हो जाएगा CBSE वाला मैटर नहीं करता। नहीं नहीं अरे हो गया ना NIT में तो लाइक कंफर्म है, तो दिक्कत नहीं है। NIT में कौन सी में सोच रहा? मेंस का नहीं नहीं ऐसा कुछ थिंक नहीं है, मेरे को जस्ट AI या सॉफ्टवेयर चाहिए, मिल जाए जिसमें मैं चला सकता है, बस फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना है। ठीक है, कुछ भी लेना है भाई, लेना है बस। सही है। मेरे को तो कुरुक्षेत्र मिला था NIT।
एनआईटी ब्लू जीतर अच्छा नहीं ब्रो मेरे को लाइक एनआईटी को ढंग का चाहिए नहीं तो फिर मैं ड्यू ही ले लूंगा ड्यू का पैकेज भी अच्छा है फिर तो अगर एडवांस क्रैक नहीं हुआ और एनआईटी अच्छा नहीं मिला तो फिर मैं ड्यू ले लूंगा या वीआईटी वेलोर वीआईटी अच्छा है फीस ज्यादा है बस वेलोर वीआईटी वेलोर हाँ अरे फीस का टेंशन नहीं है बाप ने बोल दिया का बेटा इतना अच्छा करके आया है बेंचो तब तो कुछ भी कर दूंगा तेरे लिए बस भाई बाप तो लगा ही देता है पैसा हाँ अरे कुछ स्टैंड आउट भी देगा और किस चीज में नहीं लगाएगा तो नहीं स्टैंड आउट किया ना पहली बार इतना अच्छा करा लाइक पहली बार में लाइक हाँ तो स्टैंड आउट किया यार बंदे के मेरे से ज्यादा बन गए यार मैंने उसके लाइक उसका है भाई उसके ज्यादा बन गए भाई 98 परसेंटाइल बना उसका मेरा 96 बना ये क्या हो गया भाई साला मैंने बढ़ाया उसे मैंने उसे पढ़ाया था तो वॉच पार्टी चल रहा है भाई कुछ भी है भाई देखते हैं आज अब तो मैं ब्रेक लेके आया था बकचोदी करूंगा थोड़ी देर फिर चला जाऊंगा मेरे को लगा रात को स्ट्रीम करेगा तो रात को पक्का आऊंगा आज नहीं आज दिन में और कल रात को कल रात को चल पर रात को हाँ ट्राई करूंगा वैसे तो दिन में आने की नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर लियो इसी टाइम पे और आज मैच तो आज ही है सारे कल आने का फायदा नहीं कल रात को ही करूंगा आज ग्लोबल सुनो सुबह सुबह मैच है लाउड वर्सेस सेन का सबसे तगड़ा मैच होने वाला है ये लाउड और सेंटिनल अच्छा पता ना अगर देख सको तो हाँ उठ जाऊंगा मैं 3:30 बजे है ना सुबह रुकना मैं देख रहा हूँ अभी बता रहा देख के टाइमिंग मुझे नहीं पता एनर्जी लाउड पहुंच गई हाँ 3:30 है मैंने शॉट मारा था उसमें कहाँ गई गोली बाद स्ट्रीम पे लैग कितना है कितने सेकंड का लैग है बाद स्ट्रीम पे इसकी मेरी है किस पे आपकी पे हाँ आपकी पे पूछ रहा हूँ लाइक 30 सेकंड पीछे है कितना नहीं कुछ भी नहीं 0% डिले अच्छा भाई स्ट्रीम स्नैप देखना अरे अभी नहीं वो जब वो वैलोरेंट खेलता तब तो लगाता ही मैं 20 सेकंड का या 25 सेकंड का डिले अभी तो वो वॉच पार्टी कर रहा था ना इसलिए अच्छा ये लोग मुझे चैट पढ़ के मजे आ रहे हैं बस उनकी और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं उनको इतना ऐसा लगता है फास्ट फॉरवर्ड करके ये लोग वीडियो चला रहे हैं वही तो अपने यहाँ मेरी फाइट होती थी 2 बंदे होते हैं अरे अपना भी ये साउथ एशिया वाला चल रहा था ना देखा नहीं भाई रेवेनेंट भाई कछुए से भी स्लो खेलते हैं ये लोग हाँ बिल्कुल एंड में आके खेलते हैं पट्टी बहुत बुरी इनकी मेरे को तो कुछ भी नहीं पता भाई मेरे को तो वैलोरेंट खेले अभी इतना मैंने डाउनलोड किया दोबारा लाइक सब कुछ किया इतना टट्टी खेलता हूँ भाई मैं अच्छी है भाई अरे वैलोरेंट गेम ही ऐसा है टाइम देना पड़ता है इसको अगर गेम नहीं खेला हो पहले तो और मुश्किल है नहीं खेला हुआ है मैं तो अच्छा खेलता था पहले लाइक 10th में मैंने अच्छा खेला पूरा कौन सा गेम खेला था नहीं मैं वीएलटी खेलता था अच्छे से अरे मैं छोटा ही भाई मैं बहुत छोटा हूँ मैं दिमाग में भी नहीं है भाई हाँ भाई वीएलटी कौन सा गेम है अरे वैलोरेंट पे बोलता हूँ मैं अच्छा अच्छा इसको 3 साल पहले आया था मैं तो भूल ही गया 20 का है ना ये 3 साल पहले आया था स्टार्टिंग में खेलने लग गया था मैं सीएसगो खेलता था पहले इंडिया में चलता है सीएस पहले था भाई पहले चलता है सीएस था इंडिया में कोई गेम नहीं इधर चला है सीएसगो इस वजह से चला क्योंकि इसमें क्या 5 स्ट्राइक मैन थे इसमें अच्छा पिंग अच्छा था लाइक ग्राफिक्स अच्छे वही सर्वर भी था ऊपर से फिर लाइक कैरी वारी ने इतना स्ट्रीम किया इस पे कि फिर तो चलना ही था सारे यार बहुत सारे मतलब फेमस तो पहले से ही था ये
नहीं हमारे साइड तो लाइक मेनली सीएसगो इसलिए चला क्योंकि कैरी ने सपोर्ट दिखाया था। मैं तो CS 2016-15 से खेल रहा हूँ। अरे उस टाइम था भाई मैं रोबोट फिल्म देखता था भाई टीवी में चला के। Like he unplugged his keyboard there. Yeah, just staring at the wall. No, I think he literally turned his I got my eyes. one. The rest of you, I give up. And look at this, slowed all the way down. NRG just holding with 3 players. I mean, when they don't hear the plant go down, they are so ready for the exploration somewhere else. 4 bullets. He's looked away for just a moment. Hold up, rifle, bloody hell, and W updraft. Avoiding the spam. He's in a really precarious spot. They have to double face this one now. आज इसकी वॉचिंग पहुंची थी कितनी 70,000 के आसपास। कल देखना 100 के क्रॉस कर देगी आराम से। क्योंकि कल है ना सेंटिनल है ना तब। अरे इंडियन वॉचिंग उसी से कम है क्योंकि लैन इवेंट चल रहे हैं ना अभी। खत्म तो हो गए। अच्छा ओमेन वाले भी चल रहे हैं। हाँ ठीक है दिन में चलते हैं ना। दिन में चलते हैं ना उनके तो लाइक इंडियन ज्यादातर उसी को देखते हैं बीजीएमआई को। अरे बीजीएमआई वाले इधर नहीं आते यार। मोबाइल गेमिंग ठीक है यार पर मेरे को नकली लगती है मोबाइल गेमिंग ना बस। असली गेमिंग तो पीसी पे ही होती है यार। ऐसा कुछ मजा नहीं है। बीजीएमआई खेल के बोर हो गया भाई। छोड़ दिए मैंने तो 2 साल हो गए नहीं खेला मैंने। पीसी गेम इज लाइक क्योंकि ना मोर लाइक ग्राफिक अच्छे होते हैं। मोबाइल गेम में इतना कुछ सेंस नहीं बनता है खेलने का। बस हाथ गर्म होते हैं। करने हो तो कर लेना फिर ठंड में। भाई मैंने आज इंस्टा वो किया एक्टिवेट दोबारा अपना लाइक इंस्टा चलाया मैंने। क्या अलग इंस्टा बन गया है भाई। 1 साल पहले यूज किया था। क्या अपडेट आ गया भाई। भाई रील्स रोल्स चलती है अब तो बहुत दबा के। भी आ गया तो मैं तो थ्रेड में तो इंस्टा से बिल्कुल कट ऑफ था भी है। थ्रेड का कम्युनिकेशन देखा मैंने कहा ये तो अच्छा चीज आया है भाई। फिर लोगों ने बोला छापरी है उधर जाना ही नहीं। ओके फैन में जाऊंगा ही नहीं। सही बात है भाई। नहीं यार कल इंस्टा चला तो लाइक इंस्टा का लिंक होगा ह्यूमन भाई। इंस्टा छोड़ोगे भाई व्लॉग डालो तुम सोलर जोशी वाले भाई फेमस हो जाओगे भाई। फैमिली दिखाया करो। नॉर्मल चीज़ सही है ये सब। मतलब ब्लॉगिंग कई बेकार लगती करना। दुनिया भर का ये ड्रामा करना पड़ता है। आज मैं इतने बजे ये करूँगा इतने बजे ये करूँगा कुत्ते को टहलाने जाऊँगा कुत्ते की दवाई लानी है। अजीब लगता है बहुत। तुमने वो देखे अभी क्या नाम है मिंटू भाई। एक ना कुल्लू मनाली करके डालता है एक बच्चे बंदे ने अपना नाम बच्चे का नाम रखा कुल्लू मनाली। वो व्लॉग्स डालता है। फिर वो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। कुल्लू मनाली बच्चे का नाम ये हमने कुल्लू मनाली को गलती से फोन दे दिया तो कुल्लू मनाली रशियन की वीडियो देखने लग गए होगा। अच्छा उसके बाद दिमाग है ना खोल के बैठ गया होगा। व्यूज के लिए उसको खोल के दे दिया। बच्चे को बदनाम कर दो पैदा होने से पहले। हद है। इसकी जनानी हर रोज कुछ ना कुछ मंगा रही होती है। और भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई चैट में लौंडे इतने हरामी कहते कि ना कुल्लू मनाली डिलीवरी वाले का बच्चा है वो रोज देखने आता है। भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ चैट ने बोला भाई। हर रोज डिलीवरी आ रही होती है उसकी। Gkills spots the movement. No, he could have readjusted and re-pushed the positioning there. कटाई कर दी उसकी। Everyone grouped up. Here's the lockdown. वो क्या चालू पता चला कुछ देखना। यार तो नहीं होगा भाई। हाँ कुछ करेंगे। ए रे राम
अगर लगे तुम्हें सही? अगर 2 बजे तक स्टार्ट नहीं है ना तो मैं बंद कर दूंगा यार, फिर मैं सो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये 3 मैचेस है तो 8 बजे से पहले उनका मैच नहीं आएगा फिर इंडिया वालों का, ग्लोबल स्पोर्ट्स का। मैं 2-3 घंटे सो जाऊंगा, तब तक 6-7 बजे उठ जाऊंगा, वापस स्ट्रीम शुरू कर दूंगा। तो मतलब नहीं इतना टाइम वेस्ट करने का, मैं तो अगर अभी बंद कर दूं। अब 10 मिनट देख रहा हूँ बस, 2 बजे तक अगर स्टार्ट कर दियो ठीक है। ठीक है फाइन, हम शाम को आ जाएंगे, इन्हें दोबारा पढ़ लेंगे ब्रो, यही काम है और क्या काम। C9 वर्सेस MIB, ये भी अच्छा था मैच। ये इंडियन बंदा है ना, ये करी। हाँ बाहर रहता है ये। ये साला रैंक 1 रहता है, हमेशा ही रैंक 1 रहता है। लास्ट सीजन भी था मेरे ख्याल से, उससे लास्ट सीजन भी यही था, रैंक 1। चेंज होते रहते हैं, पहुंच जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, कोई ना कोई बदलते रहते हैं। अरे नहीं, ये बंदा ना तीनों रीजन्स में रह चुका है। ये बंदा स्पेशली देखी थी, इसकी वीडियो देखी थी, यूरोप में गया था रैंक 1 बनने के लिए वहां पे, और शायद एशिया में भी। रुकना, इसके चैनल पे लिखा भी हो इसने शायद। रैंक 1 जा चुका, क्या ही फायदा इसका भाई पर ठीक है, बंदे ने यार कंटेंट के लिए आउट ऑफ द वे गया ये तीनों, ये वो रेडिएंट तीनों रीजन्स में गया भाई ये। I am 100% rooting for C9 every single round. Now my hair is messed up, bro. Fuck. ब्रो क्या लगता है वैलोरेंट के लिए सबसे मैटर क्या चीज करती है? टाइमिंग भाई, अभी बता रहा था, वही बता रहा था मैं इसको। ये देख टाइमिंग देख। टाइमिंग चेक ही नहीं करो, हमें क्या है, मत करो एंगल चेक। एक को मारा तब देखना चाहिए तुम्हें। अरे वो बाकी बंदों से फाइट ले रहे थे ना। और वो ऐसा मोमेंट होता है उसमें पता नहीं लगता। I like the bulldog buy, but I don't think we spray with the bulldog. That's my opinion, though. You're the pro player, Jakey. अब वो भी तो है, ये लोग क्या बोलते हैं, वॉक इन कर गए स्मोक के थ्रू आराम से, यूटिल यूज ही नहीं करी नेक भी। ब्लाइंड मारो, कोई यूटिल फेंको, ब्रो क्या बोलते हैं, रेजर का वो फेंकते हैं ना, बम बॉट, वो नहीं फेंका। वॉच पार्टी तो इग्लिश करती है भाई, तो सेक्सी वॉच पार्टी करती है वो बोलते हैं फिर वॉच पार्टी सेक्सी, क्या वॉच पार्टी सेक्सी क्या करेगी इसमें वो? भाई बंदे उसके हैं ना, पहली बार तो काफी टाइम से स्ट्रीम कर रहे हैं, तो बंदे इकट्ठे हो जाते हैं ना। मेन चीज क्या पब्लिक होनी चाहिए यार, वॉच पार्टी में पब्लिक नहीं थी मजा नहीं आता भाई। मैं बताता हूँ, इंडिया में अगर भाई लड़की हो ना तो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं भाई। यही तो दिक्कत है ना, और उसकी ना लाइक कैसे उसकी वॉच पार्टी में इतना एकदम से क्राउड आता है, स्ट्रीम चली जाती है। अरे मेरा देखता हूँ, लड़की हो, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, अगर जानती हो तो और ऊपर है। ये देखो, ये अन्य भाई, ये मैं जानता था इस लड़की को, 15,000 सब्सक्राइबर है भाई, क्या कंटेंट है इतनी नॉर्मल होगा भाई। GTA 5 खेलती भाई ये नॉर्मल, बस यही तो है। इसने अपना फेस भी नहीं दिखाया भाई, लड़की है, फर्क है। मैं भाई एक काम करो, मैं बताता हूँ आपको, आप माइक सेटअप चेंज करो, वॉइस चेंजर लगा लेता हूँ, वॉइस चेंजर लगा लेता हूँ। आप वो करो, और आप जब तक आपके ना कुछ अच्छे कुछ 100K ना हो जाए, जब तक फेस कैम ऑन ही मत करो, उसके बाद ऑन कर दो। जैसे तुम्हें तो पता नहीं होगा शायद, ये पता नहीं तुम्हें याद होगा कि नहीं, एक बंदा था, क्या नाम है, हरियाणवी बनता था फेक, वो बुढ़ा नहीं कहता था मैं तो मौज मारूंगा, वो जवान अरे मतलब पहले, हाँ तुम्हें पता था ना, मैक्सिमम जनता को नहीं पता था उस टाइम पे, मैक्सिमम जनता को लगता था कि वो बुढ़ा कोई ताऊ है और वो मजे मार रहा है। वो स्नैपचैट का फिल्टर यूज करता था। हाँ ऐसे लोगों को पता नहीं चला उस चीज का। यार एक्चुअल में टैलेंट होना अलग चीज होती है, और थर्ड पार्टी यूज करके यार क्या फायदा है। अरे इंडियन ना लक होना चाहिए भाई, लक नहीं होता दिक्कत होती है भाई। कंटेंट भाई, ये चीज है, कंटेंट बनाते रहो। एक चीज होती ना भाई, अर्पित बाला कितने टाइम से कंटेंट बना रहा था,
लॉकडाउन में सिर्फ उसकी वो हम पे तो है ही नो, हम पे तो आई नो एक एक वो फेमस होगी उससे भाई पूरा चल गया उससे चैनल। आप देख ले 500 के होने वाले हैं। अब वो लकी था उसका, और उसको पता नहीं कितने मीमर उसको पैसा मिलता है भाई, मीम कितने बनते हैं उसके ऊपर। वही तो चीज है। पर अर्पित वाला और कैरी मिनाटी साथ थे भाई। हाँ हाँ, एक ही स्कूल में थे, और मतलब ये स्टार्टिंग डेज में शायद अर्पित वाला ने हेल्प भी की थी उसकी, मतलब सेटअप करने में। हाँ, और अर्पित वाला ने छोड़ दिया था कुछ ड्यू टू स्टडीज के लिए भाई। हाँ वो लॉ किया उसने, फिर उसने देखा भाई मैं तो फुद्दू रह गया, मुझसे ज्यादा तो ये कमा रहे हैं। ये और तो अर्पित वाला ना ज्यादा कर देता है लाइक डार्क जोक्स, इतने वो होने नहीं चाहिए, मजा भी नहीं। वो नाइजीरियन एक्सेंट देखा उसका? हाँ, एक नाइजीरियन और एक वो वाला बंगाली। दीपक कलाल। बंगाली देखा? दीपक कलाल आस्किंग, कौन सा? नहीं बंगाली। दीपक कलाल वाला देखा था। दीपक कलाल के साथ है टेररिस्ट वाला, बहुत सेक्सी था भाई। हाँ हाँ, इससे बढ़िया अर्पित बाला क्लिप्स ही देख लेता है भाई। इनसे बढ़िया लगी मुझे क्या था, बंगाली लॉयर। Why, how would a Nigerian lawyer fight? As per the law. As per the fucking law. Stop thinking that I am a racist man. भाई बंदे ने देख बिल्कुल डिसेंट कुछ नहीं लगा रखा इसने, पीसी भी इसका ज्यादा बढ़िया नहीं हुआ मेरे को लगता है। ये ना अपने घर में कह रहा इसका ऐसा ही है स्टार्टिंग से अब तक, एंड तो कुछ चीज इसने ग्रीन स्क्रीन यूज करता भाई ये। The law. He will argue as per the law, as per the procedure set in law, by the guidelines of the council. Stop baiting me into this shit. Stop. Your Honor. ये करेगा ये कर। My client is not wearing the sentence that you gave him yesterday. कभी कभी तो सोचता है ऐसी स्ट्रीम बनाने लग जाऊंगा। The witness first said that my client stole his plastic water bottle sandals. ये तो देखा ही हुआ सारी। इसके बाद no more. हाँ ये देखा हुआ है ब्रो। एक ना दीपक कलाल लगा बंगाली। Is this what you get off on? Fucking find funny. Kilam. है? Is this what you get median? बंगाली चलेगा शायद। Is this what I am to you? A xenophobic comedian? A xenophobic man who does accents? Is this what you get off on? xenophobic मतलब? है? मेरे को भी नहीं पता भाई। Like this is what you fucking find funny? xenophobic जेंडर से रिलेटेड तो नहीं है। ये सुनना। नमस्कार जॉर्ज। बंगाली। আমি দেখছিলাম কি দাদা দাঁড়াও as per the rules फनी बनने के लिए कुछ करना पड़ता है बच्चा, कोई फनी नहीं। কি করছো এখানে? কি করছো? দাঁড়াও জর্জ, মিস্টার জর্জ, ये तो भाई ये ना मेरे ऑफिस में एक लड़की और भाई वो सेम ऐसी ऐसे करती है वो, तो ये तो मेरे को याद है भाई बंगाली करता है ऐसा, ये बंगाली करता। भाई मैंने फैक्ट बताया, और यही नहीं, मैं एक बंगाली शादी में भी किया था, वहां पे भी एक अंकल ऐसे करके वेटर को बुला रहे थे। ये फैक्ट्स है भाई, अगर कोई बंगाली होगा ना तो भाई उसको पता ही है ऐसे बोलते हैं भाई। नहीं मेरा पूरा स्कूल ना कर्नाटक और बंगाल साइड का था भाई, एक मैम थी वो भी ऐसे बात करती थी भाई। अर्पित बाला क्लिप्स अलग ही चीज होती है, तुम्हारे मुंह में चप्पल दे दूंगा ऐसा ऐसा कुछ भी बोल देते हैं भाई बंगाली में। वो लगा दीपक कलाल का सबसे सेक्सी तो वो है भाई। अभी आएगा ले।
दीपक कलाल एक्सेंट मैंने देखा हुआ है। भाई ने देखा हुआ है पहले। बार दीपक कलाल की आवाज निकाल दो भाई। आपको पता है वैसे दीपक कलाल के ना यहाँ पे ऑटोबॉट्स का टैटू है। ऑटोबॉट्स का टैटू। एक बार पुनीत सुपरस्टार ने उससे पूछा था ये जो तूने यहाँ लगा रखा है ये ऑटोबॉट्स क्या है ये। तो दीपक कलाल ने पूरी स्टोरी बताई। मैं जब बस में बैठता हूँ, मैं जब दिल्ली आके बस में बैठता हूँ, एकदम से खड़े हो जाता हूँ और बोलता हूँ ऑटोबॉट्स लोड आउट। Then he has his fucking penis out. टेररिस्ट वाला सही था इसका। टेररिस्ट वाला वो तो काफी सेक्सी था, काफी सेक्सी था। ये वाला इसके बारे में भी सोच रहा था। टाटा। अगर सपोज करो दीपक कलाल किसी टेररिस्ट हाँ। ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़ा वाला हुआ होता और उसको एक कॉल लगानी। अगर तुम ऐसे हंस रहे हो ना और तुम स्ट्रीम कर रहे हो, तुम्हें वैसे ही पता है तुम वो चीज बोलने वाले हो जो तुम स्ट्रीम पे नहीं बोल सकते हो। कि सारे स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो जाए। कौन है वो सिराजी हादी जो अपने अंदर 500 किलो गोला बारूद लेके राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में फट जाएगा। राजीव चौक हमारे साइड का। और पूरे दिल्ली में जो सारे स्लीपर सेल फोन देख के मैं कौन भाई इतना फनी कोई कैसे हो सकता है भाई, कोई कैसे हो सकता है? How will Deepak Kalal fight in court? एक्सपीरियंस भाई। अरे बिंग्स भी बहुत स्ट्रीम कर रहा है शायद से तो एक डिस्कॉर्ड पे। ये देखे टीम उनकी देखे। गोल्ड 3 चलो 50 नहीं 15 ही सही है। डन स्ट्रीम 15 तो मैं कर सकता हूँ। डन चैलेंज। भाई सभी स्ट्रीमर अब कुछ ना कुछ कर ही जा रहे हैं। अब ये तो फुद्दू काट रहे हैं। कुछ तो मैं बिल्टी क्या हुआ होगा। साइड गेम कुछ और चालू कर दो। मैं तो बोल रहा हूँ एक काम करो, तुम्हें बिल्टी खेल लो अभी। क्या खेल लो? क्या मजा आ जाएगा। क्या खेल लो? अरे वैलोरेंट। वैलोरेंट अभी तो पहले बताया मैं था। अच्छा एवरीवन अच्छा। गेम बताना इसने। अभी रुको, मेरे को 5 मिनट दो मैं आया। और तुम ये स्ट्रीम देखो। 5 मिनट में आया। ठीक है ठीक है। अरे देख के क्यों दिखा रहे हो मुझे बार बार? मिंटू भाई तुम क्या करते हो बाय द वे? मैं पास आउट हूँ बीटेक से लास्ट ईयर। ओह फक तो बड़ा है काफी भाई। बड़े रेस्पेक्टफुल मार्क्स से जो मुझे उम्मीद नहीं थी। कितना यू गॉट पाता है? मेरा आर्ट से वहां से पास मैकेनिकल से। आर्ट से कॉलेज कुरुक्षेत्र एनआईटी कुरुक्षेत्र। अच्छा अच्छा। तो तुम लाइक कब से फॉलो करता है भाई? हो गया इनके 20 सब्सक्राइबर थे तब से। ओह फक भाई ये तो वो है ओजी। मतलब शुरुआत में पहले व्यूअर था लगभग। वो क्या सकते तुम? अरे मैं लाइक ऐसे बना कि मैं ना पढ़ रहा था रात को, वैलोरेंट खेलना था, क्रेविंग हो रहा था भाई। पीसी नहीं था उस टाइम क्योंकि पीजी में था। मैंने फिर लगाया सर्च किया रैंडम क्योंकि बेसिक जो सबसे जिसके काम यूज आते हैं उसे चीज से बताऊं फिर रुको। मैं भी करना शुरू किया हूं अभी स्ट्रीम। That is insane. मैं भी शुरू किया हूं। अभी 38 सब्सक्राइबर हो चुके हैं एक हफ्ते में। मैं फुल्ली इंटरटेनिंग वाली स्ट्रीम पर्पस से करता हूँ ना कि गेम प्ले दिखाना, क्योंकि मेरे को पता है मेरा सीन वैसा नहीं है। ह्यूमन भाई का सीन अच्छा है क्योंकि इनके पास पूरा सेटअप है तो इनका तो हक बनता है भाई अच्छा खेलने का। तो मेरे पास वो नहीं है। ह्यूमन भाई तो भाई पिस्ड ऑफ हो जाता है। ह्यूमन भाई को छेड़ देना भाई स्ट्रीम पे, ये फिर थ्रो करना चालू कर देता है। देखा है मैंने। भाई वही तो तुम इतना अच्छा सेटअप लेके तुम्हारे सामने वाला पेल है तो मतलब क्या रहा है ऐसा सेटअप खेलने का? उस बात का भी चिढ़ होती है।
देखो मैं तुम्हें तो फ्लैट Blood कर देता हूँ। showers 3 or 4 rounds in हाँ a मेरा row भी which वही is सीन है that's okay. They might think maybe they खेला ही get नहीं है agree फिर तो मैं बस sure बंदे ढूंढ रहा हूँ साथ के लिए कि जो मतलब सिर्फ फन के वजह से खेलेंगे बस फुल्ली मतलब बकचोदी करके लेकिन मैं गाली गलौज मेरे को अच्छी नहीं लगती This is good. Good opening क्योंकि move, फैमिली Alex. वाली टाइप का मैं करूँगा और कुछ He's so नहीं the kid is so good, man. अरे वो ये ना कि सारे बैठ के स्ट्रीम पे तेरे को दिक्कत ना हो कभी। हाँ वैसा सीन क्योंकि मेरे यार What a shot, bro. What the fuck? गली मोहल्ले वाले मतलब पड़ोसी है बच्चा है वो उसकी एज है 11 साल की वो भी मेरे को फॉलो कर रखा है Did he pre-fire him? तो मैं फिर वो ये ना कि कर नहीं सकता उसको मैं इग्नोर आइडल करता हूँ मानता है भैया ने एनआईटी क्रैक किया है तो भैया तो काफी सेक्सी होंगे भैया तो ये करते होंगे वो नहीं फिर जानता भैया है यहाँ गली वो नहीं जानता है नाइटी कौन सी चिड़िया का नाम ये देखो मेरा सीन है दिख रहा है हाँ दिख रहा है हाँ क्या है ये सही है यार ये तो तुमने I बनाया don't था like that AD. मैंने बनाया Obviously, that was a good sky ult. अरे मैं भी Upgrade. ह्यूमन भाई के लिए भी Doesn't बना के happen दूंगा often. 2-3 लाइक मेरा एग्जाम खत्म What हो happened towards फिर the मैं बना shower के side? I दूंगा didn't feel like क्योंकि it मैं was सेकंड that अटेम्प्ट good. देना नहीं वाला यार मुझे नहीं लगता कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में इतना अच्छा करूंगा मैंने अपना पीक अच्छा मैं दिया शुरुआत मैंने पहले ऐसे कर रहा था लेकिन भाई है पता है It's very scary to play like that. वही सीन है ना क्योंकि मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो स्ट्रीमर है जितने भी वो सारे एक ही चीज करते हैं ये बहुत कॉमन से thumbnails है Good TP. अब Very good TP. मैं थोड़ा रिलेटेड इसलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअल में ऑगी का डबिंग कर मतलब क्या बोलते हैं वॉइस ओवर करना होता है एक तरीके से He has no heal either. Is this worth your thing here? मिमिक्री टाइप मिमिक्री एक्चुअली This is scary, bro. एग्जैक्टली This is a hard वो one मैं to करूँगा It's 5v4. फनी भी लगेगा उससे बोरिंग नहीं They're होगा gonna commit to the ये goal पर्पस है here. मेरा एंटरटेनिंग है Yeah, it's so. सीधी बात ये लाइक विद फेस कैम या विदाउट फेस नहीं विदाउट अभी तो विदाउट रखूंगा अब सेटअप ही नहीं है मेरे पास लैपटॉप है I want to क्या ही see the controller separated though from. अरे मेन Sony. बात है एफपीएस अगर I do अच्छा wanna see आए them ना switch तो up ही the setup. गेमिंग हो पाती है बिना एफपीएस से गेमिंग नहीं हो One पाती problem I think. और फेस कैम होने पर तो when I गेमिंग play with होती ही Ryzen नहीं है भाई is that मैंने I खुद was ट्राई playing किया था Viper. दोस्तों के साथ But लाइक we हम would डिस्कॉर्ड पे play एक a बार very पहले easy setup. मैं to छोटा get था defense, काफी like a super अभी भी हूँ easy पाता move, I feel like. पर लाइक I think they need to switch up the controller as well. अभी तो मेरा मेन मोटिव ये है कि कैसे भी करके अपने को मैं इसमें थोड़ा अच्छा कर लूँ क्योंकि मैं मिमिक्री वगैरह करता तो हूँ अच्छी निकाल लेता हूँ उसके बाद पता है ह्यूमन भाई के ना अच्छे आ सकते हैं व्यूज और पर भाई का ना स्ट्रीम रेगुलर नहीं है टाइमिंग बैलेंस है कि या तो रेगुलर हो जाओ अच्छी तरीके से या ऐसी टाइमिंग अच्छी चुन लो जिसमें पब्लिक ज़्यादा आती हो अब इनके पास ये जॉब भी करते हैं तो इशू ये है इशू हुआ है भाई पता है कि इतना सेक्सी है इनका भाई शाम को करे फिर स्ट्रीम अच्छी है एक बच्चा है वो लाइक वो भी शाम को स्ट्रीम करता है भाई उसके व्यूज सेक्सी आ रहे हैं भाई उसके 20-25 व्यूज अच्छे आ रहे हैं भाई 20-25 बात वही है कि जैसा इनके पास सेटअप है ना 80% यूट्यूबर जो स्ट्रीम करते हैं उनका तो सपने में होता है सिर्फ कि भाई ऐसा सेटअप हो मेरे पास तो तुम कब जॉब कर रहे हो फिर जॉब हो अभी सोच रहा हूँ आने वाले 1 साल के अंदर अंदर लग जाए बस काम खत्म जो वजह फिर इसको साइड में मैं करूंगा स्ट्रीम लेकिन रेगुलर रहने की ट्राई करूंगा क्योंकि रेगुलर मतलब वही एक की है नहीं मैं तो जैसे मेरा कॉलेज मिलेगा ना मैं स्ट्रीम पर ध्यान दूंगा हाँ तुम सुनो तुम कॉलेज में अगर जाओ ना तुम्हारे पास सही बता रहा स्ट्रीम करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है अरे मेरा खुद का मेरा कजन है वो भी स्ट्रीम करता है मैं इसलिए तो मैं तो उसको बोला भी था कि मैंने भाई साहब खेल लिया कर पर ये अब ध्यान वो दिया है करो ना ये एक चीज ना दिमाग में रखनी पड़ती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्ट्रीमर वही करते हैं ना सेम चीज गेम प्ले दिखा के किसी का नहीं चलता या तो तुम साल 2 साल में थोड़ी बहुत मुट्ठी भर लोग ले पाओगे कोई मतलब नहीं उस चीज का रोबोट तो बोल रहा हूं भाई अगर स्ट्रीम पे अगर तुम्हारे साथ में दोस्त है 4-5 जो लाइक थोड़े बहुत फेमस जो तुम्हारे साथ ग्रो कर रहे हैं वही हो पाता है विदाउट उनके नहीं हो पाता भाई इससे हिमन भाई है असेंडेंट पूछ के भाई पूरा बीबी लाइक सिंगल पे खेलते हैं अरे वो इमॉर्टल पहुंचे हुए हैं इमॉर्टल 2 हाँ मैं कह रहा हूँ भैया 2-3 दोस्त लाओ बातचीत करोगे ना तो लाइक लोग तुमसे ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे वही चीज अकेले इतना नहीं हो पाता साथ में कोई बातचीत करने वाला हो ना मन लग जाता है यार उसको देख ले यार एक कूलर इस नाम से कूलर के नाम से पता नहीं क्या नाम है इसका हाँ उसके भी कम थे वो भी बढ़ गया वो कैसे बढ़ा भाई बंदी लेके आ जाता है अपनी खुद की उसकी जो बंदी है उसको लेके आता है वो उसकी बंदी का गेम प्ले बहुत शिट है भाई मैंने देखा था अरे बात वही है कंटेंट के लिए तुम अभी सिर्फ कंटेंट के लिए जाओ मैं तो वो सोच लिया हूँ कि अभी तक किसी ने ये ऑगी वाला सीन किसी ने नहीं किया क्योंकि 4 साल पहले की बात है जब पबजी चलता था बीजीएमआई नहीं था
And they've been उसमें modding on triple and stuff. उसमें एक बंदा था That's क्रैबी that's करके exactly why I don't think this setup is always the best. पबजी खेलता था Especially क्रैबी with U-Haul, क्रैबी double वाइटी U-Haul, stuff क्रैबी like that, पता something नहीं put नाम नहीं together, याद but they're वो putting पबजी themselves करता in था लेकिन weird वो spots and hard spots to like we should get modded ऑगी out की of आवाज it. निकाल के पूरा मतलब मस्त फनी बना के करता था गालियां देता था ऑगी की स्टाइल में So they can rotate मतलब faster. मजा आता था उसकी आवाज They can सुनने still में play for तो मैं Maldives. एक्चुअली वहां से मोटिवेट भी नहीं हुआ मेरे को आता तब भी था लेकिन वो क्या है इन सब चीज़ों में तब इन्वॉल्व नहीं था मैं यूट्यूब वगैरह करना ये सब में नहीं तो मेरे को आइडिया है कि मैं इंटरटेन कर सकता हूँ तो मिमिक्री कर आती है मेरे को तो उसके थ्रू कर सकता हूँ अरे मेरा तो मेन मोटिव ये है कि मेरे को जैसे कोई IIT मिले NIT मिले बेस्ट फिर मैं अपना लाइक पीसी बिल्ड करवाऊँ कि मैं आपने बोल दिया मेरा आपका IT बिजनेस है They need a मैं अपना आप कर हाँ IT का हमारा काम है गुड़गांव में They need to switch it up. They cannot be predictable. Like a setup can be तो बोल good, दिया but once like, no कुछ matter भी what, there's no करके setup in एक this बार game निकाल that's ले like so good where you run it every round. मैं अपना आप करवा दूँ And they हाँ keep ठीक है running फाइन such a सर similar इसलिए मैं vector पढ़ता हूँ ब्रो room लाइक setup. It's just like मेरा आई तो तो मन ले नहीं लेना have होता to पढ़ने switch it up at some point, surely. हाँ मैं इसलिए पढ़ता It's मेरा too, मन if नहीं I know होता where you मेरा are on the पढ़ने map, I'm gonna kill you on the map. It's like it's just like अरे एक बार मेरी भी जॉब लग गया बस मैं फुर्सत हो जाऊंगा ना फिर मैं स्ट्रीम ऐसी हाई क्वालिटी वाली स्ट्रीम बनाऊंगा ना मतलब एक होता है ना मन लग जाता है ना चीज में EMI पे सब ले आऊंगा So then they have all this utility left to volley out backside and everything. The reason why teams अभी तो लैपटॉप से पूरा पहले चैनल का नाम बनाऊंगा सीधी बात है भाई तेरे को पता है कितना बंदी है लाइक वो VLT में VLT जो ई स्पोर्ट्स है उसमें क्या नाम है हाँ रेविन भाई वो उसके ना कुछ 2-3 हज़ार हो चुके हैं भाई वो अब तक लैपटॉप पे स्ट्रीम करती है लाइक उसका कैमरा अच्छा है वेबकैम अच्छा है पर उसका स्ट्रीमिंग लैपटॉप अभी भी वही लैपटॉप पे स्ट्रीम कर रही है भाई वो अब तक And this ये is क्या called चैनल लग Rahul रहा है Davis, okay? So if you couldn't hear from the video what they said 1, 2, 3 Rahul. डर What गया was रहा it है they meant? We said I think we did 1, 2, 3. ब्रो Emi is bald or something. उसका ना And then we इतना did अच्छा Ricky व्यू one time पार्ट as इसका well. व्यूज अच्छा आता है लाइक This will be 200 like a little 300 bit of की हो जाता pausing है and now we're 1K good व्यू now. हो जाता है I don't know भाई वो what देखो happened. They pushed है Yuka, looks like. सबसे and पहली they बात get like, oh, they just killed एडवांटेज C9. क्या क्या उसके पास Not really वो C9 बंदी है style, kind पहला of वो fights. बंदी है दूसरा वो VLT में है Kind of have to hit the shots on this और pistol. दो एडवांटेज तो ये हो Also, गए though, if I'm C9, I'm forced by और the इसके बाद second वो round, bro. We need बहुत some सुंदर type है of भाई round, वो ना bro. लाइक अपना पूरा दिखाती है हर चीज सुंदर पूरा दिखा देती है अगर तुम लड़की हो अगर सुंदर हो तो फेस कम करो भाई लड़के ऐसे ही आ जाएंगे तुम गंदा भी खेलती होंगी कोई बात नहीं नाइस ट्राई वेल प्लेड ये चलता है चैट में ठीक है सच्चाई है मैं जब 11th में था जब मैं खेलता था पहले लाइक वैलोरेंट भाई मैं इतना सेक्सी खेलता था बंदी आ जाती थी उससे लाइक रेना लेके इंस्टा लॉकर मेरे को सबसे बुरे लगते हैं भाई गेम में इंस्टा लॉकर इज लाइक सक भाई रेना ले लेते हैं भाई खेलना नहीं आता भाई बंदी आती थी ले लेती थी कोई नहीं आप अच्छा खेलती हो आप बट नाइस ट्राई Yes, let's go. Maxime is back. एक तुम्हें अपना मैं क्लिप दिखाता हूँ अपना Maxime is back. ये क्या हुआ कैसे Using हुआ utility and following the utility and killing people. मैं भूल गया क्या कर रहा On था मैं attack, please. तुम मुझे क्लास दिखा रहे थे ब्रो चलो शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस वाली सीन है मेरा गजनी से भी शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस गजनी तो चलो 30 सेकंड क्या सीन था उसका फिर भाई मत क्या करो ना भाई फिर भाई मत क्या करो कुछ भाई I think if we're forced that we need right side surely, right? ये क्या पॉडकास्ट बना दिया तुमने स्ट्रीम पर मैं सुन रहा था बैठ के कौन क्या भाई पॉडकास्ट बना दिया तुमने स्ट्रीम पे अरे सच्चाई बता रहे थे हम लोग दुनिया की मतलब डार्क ट्रुथ ऑफ रियलिटी मैं तो ब्रो बच्चा मैं तो सुन रहा था बड़ा बच्चा है तू वैलोरेंट ही खेल लेता भाई इससे बढ़िया मैं तो 18 का भी नहीं हुआ भाई मेरे पे तो केस भी नहीं हो सकता भाई ऐसा मत सोच भाई जुवेनाइल के प्रेजेंट भी है इंडिया में इस चक्कर में मत रहियो मेरे पे केस नहीं हो सकता नहीं भाई जुवेनाइल में नहीं हो सकता भाई गिरा और तेरे को पता है नॉर्मल प्रिजन से ज्यादा बुरे हाल है जुवेनाइल प्रिजन में नॉर्मल हो जाएगा फिर भी छोड़ देंगे जुवेनाइल में बहुत आरामी है भाई तू स्केरी क्यों है भाई इतना स्केयर मत कर स्केरी है भाई दूर रहना पड़ेगा भाई स्ट्रीम नहीं देखने आऊंगा आपसे ये भाई ये काम 25वीं बार चल रहा है भाई ये वीडियो एक अरे इसकी मैं चल याद होगी मुझे बंदे की पहले बाल बांध के रखता था पीछे अभी लटका लिए Dude, it's been 3 hours. What the hell?
Breaking news, Ye has broken his wrist. They are trying to find a replacement for him. Ye is on his way to hospital. भाई कुछ भी लिख रहे हैं. Whole crew has gone for plastic surgery. भाई चैट बहुत गंदी कुछ हो चुकी है। भाई चैट और भाई कितना इंतजार करेंगे, 3 घंटे तो हो गए। और इंस्टाग्राम की कमेंट्स भाई दूध वाला, एक तो भाई नाम रखते हैं इंडिया वाले, तो दूध वाला। भाई मेरे को ना हार्बर का काम सिखा दो भाई। हार्बर कभी समझ नहीं हार्बर सीखना है तो 4 सेकंड देखा करो। सीखना नहीं, उसका एम काम क्या है, उसका मतलब क्या है, वो क्या चीज है भाई जो इतना कंट्रोलर है। सबसे पहले क्या कंट्रोलर है भाई, मुझे नहीं आता मतलब बेकार कंट्रोलर तुम्हारे हिसाब से। हां अच्छा ब्रो पता है क्या इंडिया में मैप वाइज डिपेंड करता है। नहीं मेरे को तो चीज लगता है कि इतना अच्छा वो है का वेब रियलिटी का है ना, कुछ ना मेन ड्यूलिस्ट छोड़ना चाहिए था इंडिया के लिए, लाइक इंडिया का होगा कंट्रोलर दिया है। क्यों भाई तुम कुछ मेन बने अब तक? तुम्हारा एक मेन एजेंट हो जो भाई आजकल तो रेस चल रहा है पर वो भी मेन नहीं हो पा रहा। अब जेट पहले तो मेन में रेना खेलता था भाई, दबा के रेना हर टाइम रेना 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 को गाली बहुत मिलती है भाई, रेना को सबसे ज्यादा गाली मिलती है, चीज तो बता दो। सबसे बड़ी दिक्कत यही है रेना मेरे ऊपर से इंस्टॉल लॉकर, ऊपर से इंस्टॉल रेना को बहुत ज्यादा इन्होंने वो ओवरपावर कर रखा है भाई, अभी ओवर पावर है, पहले तो हाँ सुनो सब नर्व कर दिया लेकिन इसको छोड़ रखा है। क्यों? सोवा तक को साला नर्व कर दिया, उसके 2 डार्ट्स में केजे का डिस्ट्रॉय कर सकते थे तुम, वो भी सालों ने उसको उसका डैमेज कम कर दिया, डिस्ट्रॉय नहीं होता। मैं बताया लाइनअप जोड़ दिया था कि आएगा तो लाइनअप से तोड़ दूंगा। मैं चेक किया वहां एक टूटा ही नहीं। रिकॉर्ड हो गया बहुत गंदा वाला। मैं कल 2 मैच खेला ब्रोंज, एक माइनस लगा भाई, मैंने रेना ले लिया था, मैंने पूछा भी था सबसे कि मैं रेना लूँ या नहीं भाई, मेरे किल अच्छे सब अच्छा, और जब भी गाली पड़ी ना भाई उस अगर करना पड़ेगा। अगर कंटेंट चाहिए ना, सबसे सही बता रहा एजेंट जो कंटेंट भी देगा, मजे भी आएंगे। नियॉन खेलना सीख जाओ मूवमेंट्स के साथ, जो बंदों को ट्रोल करोगे तुम भाई यार बंदे रोना शुरू कर देंगे। अपने बंदों को ब्लाइंड कर तो गाली सुनती है मजा। मेरा मेन मोटिव यही रहने वाला है, क्या तेल लेने रहेगा ब्रो। एक चीज बता, फ्योनिक्स का लाइक हम ब्लाइंड कैसे लाइक वो करते हैं सकता है डॉज, तो फ्योनिक्स का ब्लाइंड आज तक डॉज करना नहीं आया। फिनिक्स अच्छा अरे उसको टाइमिंग उससे ना भाई एनजी टाइमिंग का जो मेन इंडियन से फिनिक्स मेरे को मेरी बंदे ने बताया, मेरे को भी मेरी बंदे ने बताया था, गवार बोल सी गवार क्या बोलते हैं ठीक है ना, फिनिक्स आता हम फिनिक्स कर देंगे ये सब मैं तो करेक्ट कर रहा हूं भाई, करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई किसी खेलता था, कोई खेला किसी ने चीज नहीं, मेरा मोबाइल उस लायक नहीं है, चल तो जाएगा सीयूसी कैश प्लान कभी नहीं खेला। भाई तुमने खेला है सीयूसी? बहुत खेला भाई, बहुत कौन सा टाउनल था? 13 तक किया था मैंने, शायद 13 ही बस छोड़ दिया, मतलब 12 मैक्स था, 13 तक ट्रेड किया था। मेरा था 12 मैक्स और मेरा 12 मैक्स था अभी भी मेरे पास, मैं खेलता नहीं अभी, सोचा हुआ है जैसे कॉलेज में ना सारे गेम डाउनलोड करूंगा सारे। अरे सुन मैं बता रहा हूँ ना, आप कुछ गेम सबसे पहले वैलोरेंट से शुरू करना, ठीक है?
फुल फोकस करेंगे बस क्यों नहीं। हाँ हाँ अरे अरे ये बताओ कब तक अभी अभी हुआ है ना उसका एग्जाम? मेरा एग्जाम अभी हुआ है। मैं जुलाई अगस्त में मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग हो जाती है। नहीं जुलाई में ही हो जाती एडवांस है। देना है ना, अभी एडवांस देना है ना। नहीं वो तो है, लेकिन ये तो पक्का हो गया ना कि जुलाई अगस्त में कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा और मतलब एडमिशन ले लोगे। NIT तो लाइक बस फिर क्या है, आराम से मिलेगा। मेरे को यार अरे मेरे दो कज़न है IIT दिल्ली में ही है, और अगर नहीं मिला ना मेरे को तो बिल्कुल गाली सुनने को बहुत अच्छी मिलने वाली है। IIT का चांस है। अरे एडवांस का चांस ये है कि मैंने पढ़ना छोड़ दिया, एडवांस की CBSE का आ गया हूँ, टेंशन नहीं होती यार। तब बोल दो घर वालों को भाई ये देखो कॉलेज तो मिलेगा लेकिन नहीं अरे छोड़ो ना, घर वाले क्या कहते हैं। कुछ नहीं होता। बस 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 बंदा तो क्या नहीं, रंगोली बना देते हैं। हो गए चलाओ। ये व्यू है। ब्रो तू इंडियन टीम में किसको सपोर्ट करता है, लाइक जो ई स्पोर्ट्स में है? ह्यूमन भाई किसको देखते हो ज्यादा? ये तो होगा देख तुम्हारा मेन। इंडियन टीम नहीं देखता यार मैं, शूटिंग है यार, गेम प्ले देखने का टाइम ही नहीं होता, कहाँ देखे, रात को जॉब होती है, दिन में गेम प्ले नहीं लगेगा भाई कोई खास जैसे सोल हो गया, 8 बिट सोल हो गया। हाँ ना भाई, इनमें से तो किसी को नहीं देखता, मैं T1 को ही देखता था यार, T1 को, फिर क्लर्ज हो गया थोड़ा बहुत जो भी रिसेंटली चला है, थोड़ा बहुत इसको देख लेता हूँ। बहुत सही खेलता है भाई क्लर्ज ने जो तोड़ा है ना 8 बिट को, पूरी 8 भाई इसने 40 किल्स किए थे 8 बिट टीम के सामने। देखा मैंने, अरे वो भाई वो बेचारे डायमंड बंदे हैं यार, सिर्फ उनमें से एक वो खेलता है मेरे ख्याल से, रेगा हाँ बस एक रेगा खेलता था, और कोई नहीं, एक ज़ेरिफ है, ज़ेरिफ तो असेंडेंट कुछ, ज़ेरिफ तो उसी की टीम में था, ज़ेरिफ तो उसी की टीम में था। नहीं ज़ेरिफ सोल के साथ खेल रहा था। अरे नहीं, ज़ेरिफ योरू की टीम में थी, किलर्स की टीम में था। फिर लाइक इन्होंने फिर वो लाइक कंटेंट कि ज़ेरिफ तो 8 बिट का है ना, और इतनी स्पीड मार्शल लो, मार्शल हाँ मार्शल से तोड़ो चलो। एक तो लगी भाई, मार्शल बहुत चैलेंजिंग वीपन है भाई, ऐसे नहीं होता। अरे गेम में भी भाई पहले बहुत मारते थे मार्शल पे, मारो चलो जाने दो, खेलो अब मेरे ग्रुप से जैसा। अरे अब तो मार्शल से मारेंगे भाई, गेम चल रहा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी चेक कर मार्शल की। वो ये रिफ्लेक्स और प्ले आनी चाहिए भाई गेट अगर आया ये से मारेंगे, वार्म अप तो मार्शल से मारेंगे। अरे मैंने से निकाला था, हाँ मेरा भाई क्या सीन हुआ जब मैं शुरू किया था ना खेलना, मैं 0.45 0.42 ऐसी सेंसिटिविटी पे खेलता था, और मेरी आज सेंसिटिविटी कम हो गई 0.27 हो गई। ब्रो पता है क्या था, मैं सीओ खेलता था ना, तो उधर ओडिन नहीं था, स्पैम कुछ सीन नहीं था, तब मैंने सीरीज यूज करता था, अकेला खेलता था 1-2 महीना, तो गालियाँ पड़ती थी फुल दबा के, स्पैम नहीं पड़ा था, नहीं लेना चेक किया था स्टार्टिंग में शॉट बाद में पता चला कि भाई स्पैम पहला मैच हुआ था। अरे भाई दो बार इसको टकले पड़ी है बेचारा।
तो वाइट में मैं ही वॉचिंग दे रहा हूँ, तो सब किधर गए? मैं ही तो बैठा था। किधर गए सब? मैं भी हूँ। ऑल वर्ल्ड का भी गया, ऑल वर्ल्ड का भी सब गया, सब स्ट्रीम करते हैं अब तो सब। अरे दिक्कत एक कॉपी वाला सब लोग फेमस होने के लिए, सीधी बात ये है। कॉपी करो भाई, सब ने खेलने लग गया, ऑडियंस किधर किधर जाए भाई। वही तो सिर्फ 12 घंटे की स्ट्रीम करता है भाई, 12 ऑल वर्ल्ड के साथ। मैं तो कह रहा एक अपना गेम कोई उठा लो जिसने नहीं खेला हो, उससे पब्लिक खींचना शुरू करो। कर लो थोड़ा, बहुत कॉमन चेस खेलते हैं क्या? कौन? चेस चेस कोई नहीं आएगा देखने में, कोई नहीं आएगा। इंडियन नहीं आई ऑडियंस। तुम आगे नहीं सालों के पास क्या ही आएंगे। नहीं ऐसा मत बोल भाई, दिखना नहीं चाह रहे। वाईटी पे नहीं है इंडियन ऑडियंस के पास। तो मेरे ना थोड़ा ना हो भाई, तुम क्या खेलो तुम्हें देखने आएंगे भाई। सब मेरे ना मुझे देखने आते हैं लोग बाग भाई। तो बस चेस प्लेयर है क्या? कॉमेडियन है, कॉमेडियन है भाई वो, टेबल टेनिस खेलता है, उसको भी उसका इतना अच्छा व्यूज दिया था उसको। भाई बंदे उसके डार्क ह्यूमर देखना तो फिर कहते हैं नाना जी किधर हैं, वो तो मेरे दिल में है अभी भी। वो देखो ना, नाना जी मर गए, हमारे नाना जी सोते मर गए। वो रफ्तार के साथ हाँ कह रहा हम सो रहे थे, नाना जी तो उठे हुए थे। भाई हिमन भाई तुमने कितना स्किन पे पैसा खर्च किया? बहुत कम। मैंने 2 बंडल्स लिए हैं 5-5 हजार के, और एक फैंटम प्राइम और एक वेंडल की स्किन रिवर। और एक पीसी लिया है 4.5 लाख का। लाइक डिफरेंट ना, स्किन्स की बात हो रही है वो। तो और भी कितना हो सकती है। हाँ हाँ भाई तुमको पता है हर्ष ने कितना रुपया खर्च किया? लाइक 4.5 लाख। कितना? हर्ष ने? हाँ हाँ हर्ष कौन, जो वाइपर खेलता जो? हाँ वही वाइपर में पीसी पे खर्च किया उसने? नहीं स्किन गेम 4.5 लाख। हाँ हाँ पता नहीं भाई कितना सच है। अरे तो भाई यूट्यूबर्स का उसके सब्सक्राइबर भी तो बहुत है भाई, 72 के सब्सक्राइबर है उसके। 80,000 ट्राई कर गया। नहीं अरे पता है क्या 73 स्पेशल नहीं 80 के क्रॉस कर गया। देख लो अभी क्या होगा। लाइक मैं पहले सब्सक्राइबर ना पहले एक महीना पहले देखा था मैंने, उसकी मम्मी के साथ सब लोग आया था, तो उसने ना अपना पेमेंट उठाया। अच्छा खर्च कर दिया। पर वो बहुत वेट करता है भाई बंदों को भाई सच। अरे वो एक तो कंट्रोलर है इसलिए कुछ नहीं कहते लोग, लेकिन सब होता है इतना तो मैं मानूंगा। लेकिन वो क्या एंटरटेनिंग है, फनी है, इसलिए लोग देखते हैं उसको, सीधी बात है। हाँ भाई इतना वेट करता है ना, मैं स्ट्रीम देखा उसने। ओह शिट मैं बीच में आया 500 मिनट में उसने वेट ही करते देखा है मैंने। वो खुद मानता है कि वो वेट करता है। भाई वही सीन है, एंटरटेनिंग और फनी चलेगा तुम्हारा। मैं तो बोल रहा हूँ मैंने को कंदी लिया। अरे आ गया इतना मुझे आज तक छोड़ जाने दो। मैं तो ह्यूमन भाई को इतना बोला घा भी लिया इतना वॉचिंग आएगा। क्या चीज? पीसी तो मैं एक तुमने बोला ह्यूमन भाई को भा भी लिया हो बढ़िया से। रमी साला
सिंगापुर सर्वर से लेके आओ। वाह हाँ। मतलब मैं कह रहा हूँ सिंगल। अरे सिंगल क्यों रहना भाई, क्या क्या फायदा सिंगल में भाई। भाई को कहते ये कलेश करेगी भाई, क्या क्या भाई लड़की कलेश करती है भाई, बता इसको मिंटो भाई। लड़की कलेश का दूसरा नाम है भाई। अरे ऐसे मत बोलो भाई। अरे ऐसे मत बोलो भाई, ऐसे मत बोलो भाई। अभी तुम इंजीनियरिंग करने वाले हो ओ भाई लग गया, चला दो जल्दी, हराम ज्यादा वो देखो दिख रहा है यहाँ से ब्रीज। हाँ दिख गया। ये देखो इधर रो रहे हैं पर। इनके भी सबके 360 हर्ट्ज लगे मेरे ख्याल से, वही वाला मॉनिटर है मेरे वाला। नहीं 240 चलते सबसे, सब में ऑल ओवर वर्ल्ड सारे 240 यूज करते हैं। ख्याल से 360 यार बजट फ्रेंडली होता है ना, इसी वजह से। भाई इनका सब कुछ स्पॉन्सर्ड होता है, ये इवेंट तो पूरा स्पॉन्सर्ड होता है। मिंटू भाई चीज बताओ, लाइक भाई सिंगापुर के प्लेयर इतना सेक्सी प्ले क्यों करते हैं, लाइक इंडियन प्लेयर कितनी होते हैं इतना, इसमें क्या डिफरेंस होता है लाइक रियलिटी में। क्या कह रहे हो कि मतलब टॉक्सिक नहीं होते बस, वो उन्हें गेम खेलना आता है ना। हमारे यहाँ तो तूने मुझे मारा कैसे बताओ भाई, वो भी छोड़, मेन सिंगापुर सर्वर पे ये बहुत सारे हैं। तुमने सिंगापुर की लोकेशन देखी है? हाँ लेकिन लोकेशन के मैप। अच्छा हाँ मैप पे देखा है ब्रो। मेरी बात तो ये भी है कि सिंगापुर की वजह से भी तुम्हें हो सकता है, ये लेकिन भी हब है। अब ये देख, यहाँ पे तुम्हारे ना काफी सारे रीजन्स आते हैं। मलेशिया पूरा इधर खेलता है, फिर तुम्हारा फिलीपींस पूरा इधर खेलता है। यहाँ पे तुम्हारे ये कौन सा एरिया लग गया यार, हाँ यार ये जापान आ गया, जापान पूरा इधर खेलता है, इंडोनेशिया इधर, फिलीपींस इधर खेलता है, ये वियतनाम, ये इतना सारा, ये सारा एशिया इधर ही खेलता है। म्यांमार भी इधर ही खेलते हैं, बांग्लादेश भी इधर ही खेलते हैं। जापान चला गया भाई, वो तो उधर चला गया। पर यार ये काफी बड़ा एरिया है जहाँ पे मतलब बेसिकली गेमर्स बहुत सारे सर्वर पे खेलने वाले ना। वही है गेमर साथ गेमर खेलने हो ही जाता है। अच्छा मुंबई में तो भाई मुंबई सर्वर पे खेलता भी नहीं है। और मेन उनके पीसी स्पेक्स भी अच्छे होते हैं भाई, डिसेंट होता है, मतलब 250-300 एफपीएस और लाइक 144 180 165 हर्ट्ज तो सबके पास ही होता है। अरे सुनो, इंडिया में गेमिंग का सिनेरियो अभी का नहीं है, मतलब पहले भी था ही नहीं। कब से आया है मालूम है तुम्हें? बीजीएमआई के बाद आया है। बीजीएमआई के बाद आया है, और ये सोल वालों ने बिगाड़ा है सबको। सीधी बात तो ये है, किसने? सोल वालों ने। हाँ 8-बिट सोल है। हाँ इन दोनों ने मिलके बिगाड़ा है। अब सब हर बंदा ये चाहता है कि हम भी गेम खेले, पैसे कमाए यूट्यूब से। सबकी मेंटेलिटी यही रहती है, सीधी बात है। अब सोल वाला इतना सेक्सी है ना भाई, देख लाइनअप खड़ा कर रखा है, 2-2 गेम ये जीतते हैं हर साल। हर बार में ये देखो कम्युनिटी है वो पूरा टाइम बकचोदी करता है भाई। ये सर पकड़े हुए अभी भी। ये भगवान, कौन सा टीम सपोर्ट कर रहे हैं फिर तुम्हारे? ये की तरफ हूँ मैं तो। ब्लेड ये अरे उठ जा यार। अरे क्या मैं हल्का होके आता हूँ, शायद आ जाए ये लोग। तो मत हो के यो अभी कुछ वीडियो हो गई। हाँ मिंटू भाई तो लाइक अपनी दुनिया में मस्त है भाई। सही है भाई, सही है उन्हें परवाह नहीं है भाई। भाई वो सिंगल है ना, सिंगल बंदा ऐसे ही होता है। सिंगल बंदा खुश होता है भाई। वो अपने में मस्त होता है। तुम कहना क्या चाहते हो भाई? मैं बस तुम्हें सलाह दे रहा हूँ भाई, तुम्हें सलाह दे रहा हूँ मैं। ये देख 360 से भाई, 360 हर्ट्ज से, क्योंकि जो ये देख मैं बताता हूँ मैं, ये देख रहा है पीछे, ये देख रहा है, ये 360 हर्ट्ज में 240 में नहीं है क्या? देखो ना 240 में नहीं है, 360 में है। बढ़िया। मैं 20 पे कभी जीता नहीं आज तक, मेरे सारे गेम प्ले में 20 पे हारा ही भाई, लाइक 12-11 से 12-13 से। तुम्हारे एफपीएस कितने आते हैं पीसी पे? मेरा लाइक 120 जाता है मैक्स टू मैक्स, 120-130 बस। ओ यार पीसी का ही है।
Sometimes you'll see Sovas on Breeze grab an op here and there. Are they just gonna bypass that altogether? Do they have a different game plan? I mean, this gives you ओए मिंटू दिखाया मैंने उसको भाई 360 हर्ट्ज मॉनिटर है सारे अभी दिखाया मैंने उसको ये जो इस पे खेल रही है हाँ क्योंकि पीछे ना वो है रुक तेरे को दिखाता हूँ वैसे कुछ ज्यादा तो हुआ नहीं है ये देख रहा है ये दिख रहा है ये 360 में है 240 में नहीं है होगा भाई अब तो शुरू कर दो अब तो भाई 540 हर्ट्ज का मॉनिटर आ गया कितने का ब्रो फिर 75 70 मारेगा बस और कुछ नहीं भाई कुछ नहीं मार प्रोसेसर की वो क्या मारेगा भाई उसने तो डिस्प्ले देना है एफपीएस तो वो तो गेम मारती है ना और इतना कुछ नहीं मारती भाई मैं देख सब कुछ कर रहा हूँ ना मेरे तेरे बताता हूँ अभी ये देख 13% अभी मैं वैलोरेंट भी चला दूंगा ना तो भी 30-40% से ऊपर नहीं जाता 30% साथ में स्ट्रीम भी कर लूंगा तेरे को डिस्कॉर्ड पे भी दिखा दूंगा भाई तो आप पैसा लगाया ना फिर पैसा लगाया अच्छा खासा उस पे तूने कितना साल तक पैसा लगाया सेविंग कितने साल किया तूने ए भाई एक ही साल में मैंने थोड़ा बहुत लोन लिया थोड़ा बहुत मैंने सेव किया हुआ था बस चुका रहे हैं बस खत्म हो जाएगा मेरे नेक्स्ट महीने लास्ट ईएमआई जाएगी अरे चुका दिया भाई अब BMW X7 लेके आने वाले हैं इतना भी नहीं है भाई इतना भी नहीं है वो देख दिख रहा है ये का भाई मैं चलो आगे बढ़ो यही 3 बार दोबारा रिपीट हो चुका है यही चीज ये मैप वाला बहन ते लंद तला दे क्या फुद्दू बंदे है भाई ये उसको आज खज्जल कर दिया भाई इन्होंने सही में खज्जल मैं वैसे होता नहीं भाई मैं 7.5 घंटे से स्ट्रीम कर रहा हूँ एक अभी आया कमेंट की ना शायद से जो डायरेक्टर है ना वो इंडियन है इस वजह से लीट है भाई इंडियन को हर जगह इंडियन का ना भाई ले लेते हैं भाई बेचारों अभी लास्ट अपने यहाँ नहीं हुआ था टूर्नामेंट का बाहर से टीमें आई थी ये फ्यूरी आई थी फुटबॉलिस्ट आई थी और जेनजी आई थी तब भी ऐसे बीच बीच में पॉज ले रहे थे ये लोग टेक्निकल पॉज काफी टाइम से उसी से बार बार इंडिया रेडी नहीं है ना अभी इन चीजों के लिए वो भी तो नहीं समझते ये लोग कुछ लग रहा है कि बस भाई ये तो सोल में हो रहा है ना ये वाला तो ये वाला पता नहीं मेरे को मिंटू भाई को पता क्या ये भी सारे देख रहे हैं कि कर ले भाई कर ले भाई जल्दी कर ले अबे ऑडियंस को देखो नींद आ रही है उन्हें वो सो रहे हैं बेचारे पीछे ओ जेट भाई कितने खुश रहते हैं भाई कॉस्प्ले आ रहा है ना भाई सबसे सेक्सी किसको कॉस्प्ले लगता है जेट का ही लगता है या जेट हाँ मेरे को रेना का लगता है भाई रेना मैं बोलने लगा था जेट या रेना डिपेंड भी तो कर रहा है कौन कॉस्प्ले करता है एक बार स्काई का किया था किसी अमेरिकन में चल रहा था उसमें कॉस्प्ले किसी टूर्नामेंट तो क्लिप ये लोग रिव्यू कर रहे थे बिंग्स वगैरह तो लड़की थोड़ी मतलब ठीक थी समझ रहे हो कैसी समझ गए ये देख रहा है बाद में बात करते हैं पहले मैच शुरू होने दो भाई हो गया वो कमेंट करता बिंग्स कहता आज से मेरा स्काई मेन एजेंट है यही खेलूंगा आज से स्टार्ट कब होगा भाई हो गया ना डिफेंडिंग इसकी है प्लेट की ठीक है नियॉन अब देख रहे हो इस मैप पे कोई भी साइफर नहीं खेल रहा है जबकि साइफर स्ट्रांग मानते हैं डबल स्मोक चल रहा ना दोनों साइड देख डबल कंट्रोलर ये भी है जनरली अटैकिंग मैप हो या डिफेंसिव मैप हो डिफेंसिव अरे इधर साइफर होना चाहिए था ब्रो वैसे तो दिखाया था लेते तो हैं लेकिन ये ना
अंकिता पूरा ये टाइम है भाई। साइफर खेलती है इसमें, पूरा टाइम अंकिता साइफर खेलती है इसमें तो पूरा टाइम। भाई फिर से टैग पॉज भाई, गियर इशू बंद हो गया चलते चलते। झेल ही नहीं पाया। इसकी स्क्रीन ने कहाँ पे है? ये देख स्क्रीन। अरे बाप रे कितना ऊंचा कर रखा है। हो सकता है जनता तो थोड़ी है यहाँ पे इस साइड को। किक-ऑफ चल रहा है ना, कोई वो नहीं है अभी। ये आगे जाके 3-4 टीमें कितनी क्वालिफाई करेंगी। VCT पैसिफिक होएगा ना अभी, ये किक ऑफ है मतलब इसके बाद पैसिफिक नहीं होगा मेरे ख्याल से। डायरेक्ट फिर वो टूर्नामेंट के लिए होगा। ये मेरे को लग रहा है आस पड़ोस में वैसे ही बंदे घूम रहे थे, इनको कहा तुम्हें मैच दिखा है, आज जल्दी आओ बैठो, इनको बिठा दिया बस। ये देख वो तो बेचारी इंस्टाग्राम पे डाल रही है फुद्दू बंदे हैं, कहाँ बिठा दिया। वो देखो वो अम्बा वो ये भी क्रिकेट इसमें 6 टीमें क्वालिफाई करेंगी। अरे उनको छोड़, मैं कह रहा हूँ इसमें भी ना जो ये इवेंट्स है इसमें भी ना क्या नाम है अपना क्रिकेट मैच वाले नहीं होते कैमरामैन, वो लाने चाहिए भाई। बीच बीच में ना क्राउड थोड़ी रिकॉर्ड के दिखाते रहो तो भाई पता नहीं चलता 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कहाँ निकल गए। भाई मन लगा रहता, ये चैट सारी खुश होके देखती। और देख 15,000 व्यूअर्स हो गए अब। इसी को पीछे खड़ी इसी को दिखा दो यार। हटा दे कैमरा। ह्यूमन की बात काट के ना ये वाली मैं क्लिप सेव करूंगा, भाभी आएगी ना उसे दिखाऊंगा। भाई दिखा दे तू, अरे तू जिस मर्जी को दिखा दे भाई, डरते नहीं है। देखिए ये चीज बोल रहा हूँ ना मैं, ये चीज 360 में है। जब जिस दिन आ गई ना ब्रो स्ट्रीम भी नहीं करने आएगा ना भाई इतने तो बुरा हाल नहीं होने वाले भाई, तभी तो बोल रहा हूँ जनानी कलेश होती है, ये भी दिखा दियो उसका। और बोल तेरी वाली को बोलूं तेरी वाली को बोलूं जनानी कलेश होती है। मेरी वाली को मेरी वाली तेरा कलेश करा देता हूँ मैं। नहीं अरे वो पढ़ रही होगी और क्या करेंगे। चला भी दो यार, रोना आ रहा मेरे को। मेरा गर्दन दर्द हो गया है। कैसे यार गर्दन दर्द कैसे हो गया भाई? अरे सीधा बैठे बैठे यार। सीधा क्यों बैठता है ब्रो? चेयर में पूरा लेट जाएगा। लेट नहीं पाती है चेयर। अच्छा प्लास्टिक की है, पीठ सीधी रखनी पड़ती मेरे को। मैं तो बोल रहा हूँ ह्यूमन भाई की तरह पार्ट टाइम जॉब कर भाई, जैसे जॉब करते हैं। पार्ट टाइम नहीं भाई, मैं फुल टाइम करता हूँ। अरे मतलब आई एम सेइंग फुल टाइम। अरे ह्यूमन भाई तो चिढ़ गए हो भाई तो सेटल्ड है ये, सेटल्ड है भाई, सब कुछ है उनके पास। अरे नहीं है बोल दिया नहीं है, भाभी नहीं है उनके, नहीं मतलब बंदी नहीं है उनके पास। भाई हम करेंगे सीधा शादी भाई। तभी खुश है क्या है? सही बात है भाई, इसलिए बता रहा था अकेला बंदा ना खुश रहता है कि नहीं? वो अपनी मस्ती में रहता है। कैसे खुश रह सकता है भाई अकेला बंदा? भाई वो तुझे समझ नहीं आ रहा ना, अभी तू छोटा है। तू भाई जरा कॉलेज पार कर और तुम उसकी तलब ना हो तब तक। समझ रहे ना? हाँ गॉट इट भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है अब तक। बस फिर तो छोड़ दो, तलब वाला वैसा सीन नहीं है। कह रहा फिर छोड़ दे उसे। छोड़ दो अरे क्यों भाई अभी मेरी 3-4 साल हो गए भाई उसको। देखो तो बिल्कुल सही मामला है, अब शादी करना उसी से करना। हाँ भाई मैंने तो बहुत देखे है भाई, हमारे ऑफिस में है मतलब 10-10 साल के, चल हम क्यों बोले 10-10 साल के मतलब रिलेशनशिप होते हैं, फिर किसी और से शादी करा लेते हैं। आप चुप हो जाओ। हम भी लोग ज्यादा पनौती लगा देंगे फिर। हाँ नहीं हम क्यों बोले भाई किसी के बारे में, हम कौन होते हैं? बस पूरा मजा लेता है भाई। ओ किधर रखा है? ओके देखो ये सीन मल्टीपल पीक लेते हैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ चलो एल्बो मेरे साथ। नहीं भाई तू चेक कर जाके, मैं मेन देखूंगा। देख के क्या करेगा? मौज करेंगे। आता कोई नहीं साथ में।
ambiguous. Continue to hold the site. The flash is good. Saya dead. Yeah, That was all on Rossi, who's lurking on the opposite side of the map, creeping his way through halls, but you can see it is being अब देख डबल स्मोक का ही फायदा है देख ये भी है ना तुरंत सपोर्ट मिल जाता है एक का मिल जाएगा दूसरे को ऑन कर दो हमारे यार रेना ले लिया मतलब उनको नहीं आता ब्लाइंड दो घुस जाओ वो तो प्लेट लोबी तक होता है कि रेना लेके घुस जाओ उसके बाद वो यही समझते हैं भाई उसके बाद तो रेना को धोते हैं रेना इज लाइक उसके बाद नहीं होता प्लेट के बाद मेनली कोई खेलता होगा ऊपर लॉबी में जेट चलता है तुम्हारा बढ़िया चेंबर चलता है बढ़िया तुम्हारा योरू मतलब गिने चुने लोग खेलते भाई नहीं योरू का मैप है भाई मैं खेलता हूँ इसमें योरू इस मैप पे यूरो बहुत सेक्सी प्ले करता है मेरा दोस्त है वो लाइक यू हां अच्छा खेलता है मैं नहीं अरे ब्रो आप तो सेक्सी प्लेयर आप तो जॉड हो भाई जॉड आपको मेन थोड़ा नहीं करना अब तो जो उठा दो आप जो उठाओ वो अच्छा हो जाता वो तो है भाई फेवरेट बंडल कौन सा है नहीं बंडल अगर स्किन देखा जाए तो वो है मेरा रिवर है चैंपियन नहीं सबसे बेस्ट जो है ना वो है केओस और फॉरसेकन एम बॉट है भाई दोनों एम बॉट वैंडल में कभी चलाइयो ढंग से दोनों एम बॉट केओस है मेरे को 4 सेकंड खरीदनी है लेकिन और फैंटम में रिकॉन बिल्कुल भाई बिल्कुल हेड पे जाती है रिकॉन फैंटम ये तीनों स्किन जो एम बॉट है भाई बिल्कुल एम बॉट 7-5 स्कोर होगा अब देख देखो एक एंगल पे मल्टीपल लुक पीक लेते हैं हैं 2 वाइपर वॉल्स हैं यहाँ पे देखो घुस गए एक साइड कंट्रोल ले लिया मिल गया ट्रेड प्रो मैचेस में नहीं चलता भाई बंदे फेक नहीं करते बहुत ही रेयर करते हैं ये जाएगा अरे गया किस्मत रे टाइमिंग ये किस्मत ये देख केओस भाई केओस बिल्कुल हेड पे पड़ता है वैसे उसको समझना चाहिए था उसके सामने ही बॉल करी थी उसने पता नहीं था ना वो वही तो रिकॉन कर रहा था अरे तो उसके सामने बॉल करी थी उसको पता होना चाहिए कि ये गिर सकती है नीचे ये देखी किस्मत था मेनली 10 सेकंड होते होगी ये देख 4:3 पे खेल रहा है अभी Well, I posed the question, and the answer has already arrived. Ye has an operator in hand, going in around 4. While he was cutting funds. And the timer stopped again. Wow. I mean, now you totally understand why he was cutting funds earlier. Oh, okay. Oh, timeout. क्या है ये क्यों है ये Okay. टाइम आउट है अच्छा शुक्र शुक्र वो भी खुश हो रहा है बच गया कमेंटेटर भी बोल रहा है थैंक गॉड बच गए ये देख अभी क्यों ले लिया लेकिन टाइम पॉज ये तो शुरू ही है ऐसा कुछ गलत सलत भी नहीं हो रहा I think that, oh wait, oh no, never mind. Seems like maybe it's bleed. Oh, it's bleed's timeout. Okay, might have been a misfire. अरे तुम्हारा मिंटू भाई और तुम्हारा सबसे बेस्ट मैप तुम्हें कौन सा लगता है बेस्ट मैप मुझे लगता है मैं तो सोवा असेंट एसेंट पे
मेरे पास एसेंट आ गया, अब मैं सोवा ले लूंगा क्योंकि मेरे पास लाइनअप्स रखे हैं बहुत सारे, फेक रिकॉन्स रखे हैं बहुत सारे, नाक बदम कर देता मैं बंदे की। अरे हमारे सिंह की लाइक तेरा मैप कौन सा अच्छा लगता है तेरे को? तो वो तेरे एसेंट 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 पूरा तो अच्छा नहीं मेरे को नहीं आया आवाज। अच्छा अच्छा मेरे को आवाज से नहीं आया। पता नहीं, इतना अच्छा माइक लेके भी आवाज नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं फिर? मैं नहीं अरे नहीं नहीं अरे मेरा ना फोन आ गया था तो लाइक मेरा हाँ तभी बोल रहे हैं कि अकेला जो बंदा होता है ना वो हमेशा खुश रहता है। अरे माँ का फोन था माँ अच्छा पूछ रहा हाँ पूछ रहा And this is going to be tough for T1 because how quickly Neon can rotate around the map. It's going to be tough to keep track of that op. Crazy guy already taken down one. Yeah, Rossi going to fall. Darian now snapping over. Finds Excurrent, finds हेवन बेस्ट मैप है मेरे हिसाब से हेवन अच्छा लगता है भाई डीना लो और हेवन खेलो It's the spot on them as the spike now starts to get planted. पर वो तो है ही नहीं अभी 2v4. क्या ही फायदा The odds very much stacked against them here. Saya player needs to open things up, but he misses his window of opportunity to find the headshot. Crazy guy stays alive and doesn't suffer any additional damage. अब देखो रीटेक कैसे करते हैं, उसको पता है यहाँ पे बंदा, ये बंदा बहुत तगड़ा हुआ था साया प्लेयर, ये भी बंदा अच्छा खेलता, बच गया। अब गया अगर तुमने ओपन को स्कॉप करने दे दिया ना फिर गेम खत्म है क्लोज रेंज में भाई। ओपर का यही सीन तो, चीटी भी आती दिखता उसमें तो, आ गए तो गए काम से। पूरे शरीर पे कोई भी एक बॉडी पार्ट पे मारना बस एक गोली। तुम्हारा रिफ्लेक्स अच्छा है तो और अच्छी बात है। रिएक्शन टाइमिंग देख रहे हो, बिल्कुल घुस के खेलते हैं। होता है he's able to handle it really nicely. Now, look, Saya answered, and you expect 7-5 मेरा प्रेडिक्शन है। Darian does have ब्लीड लेगी so now Darian 7-5 से एडवांटेज। kept track of here by T1 to make sure that they're not going to really have that be a problem. On the hunt, but I mean, wisely, everybody from Bleed just very much pulling back away, and they know that there's going to be at least one on bridge, but otherwise he's seeing nothing at all. So it's just going to be maybe an attempt at a flood retake here from the side of Bleed, and maybe even quite literally because that Reckoning is available. There's the drone, Saya. Yep, needs somebody to clear that out, but knows that he's likely been spotted. Takes the full flash to the face, throws down that cloud burst, and now Reckoning going to be infested. Goes up over the top, and oh, he comes away with one. What a shot there from Saya player, but the kill still being found here for Bleed. Moves away from the relay bolt, the rest of his team still falling down, takes that shot, gets the aim punch, and ends up falling. Now it's all on Rossi. Comes up with two. Wolf thrown in, but Yay getting himself over. इसमें कोई आया नाम अलग रखा है इसका। And as he jumps out of the poison orb, Scary, he's not able to adjust for him in time. Scary gets the kill, and Bleed now moves up 4-1. Man, Darian is feeling it. He is so quick to react right now. This delay did not bother him in the slightest. He is really popping off. And I love the way that Bleed identifies their win conditions in this round. They say, look, we've got the Reckoning. If they hit the site fast, we're going to give them space for the Yoru ult as well. So it doesn't have any real benefit in this round other than it, you know, kind of lets T1 know, okay, no, there's an open ये एनी से छोड़ के ये वाली टीम में क्यों आया ये, हमें समझ में नहीं आ रही। भाई ऑफर पैसे मिल रहे होंगे और क्या। वही तो बोल रहा हूँ, ऑफर पैसा। Again, that outlaw here in hand, knowing that everybody on T1 is on that weaker buy. Crazy guy just brings this one forward again. Yay, in the meantime, posted up, shifting his way in towards tunnel to peek into mid. The side player is trying to inch his way forward. अभी तक पता नहीं कोई शायद वो निकला था जिसमें मोस्ट कौन सा निकला था टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा किल किसने किए हैं अभी तक, तो उसकी कोई लिस्ट बनी होगी, उसमें इसका नाम था ये का, जबकि ये खेल भी नहीं रहा था लास्ट में टूर्नामेंट्स। शाबाश, वेट करा सर, पता नहीं होता लेकिन वो सब एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि भाई होगा होगा होगा। No reinforcements nearby, but now it seems like he might have sussed this out, and he has.
Scary's reads is continuing to be absolutely excellent. Toxin screen down. As usual. Anticipating this presence here in the sights. Carpe again with that sheriff. Can he get himself on the board? Needs that first kill, but Scary swinging the corner, takes a bit of damage. Not gonna be able to find the kill, the jump up. Rossi will be able to find that. It's the setup here. As that spike plant can come through, but a 1v4. An ace clutch needed to try to close out this round and stem the bleeding here. One away from the pit, potentially, if things go really well for Rossi. I'll be on top of him way too quick. I don't think he'll get a chance to use it, no. Anyway, should have it. We'll have it going into the next round, regardless of what occurs here. सवाल नहीं उठता. See if he's going to be free from that backside, swinging out, takes a couple shots. Now they all know exactly where he is. Challenge taken. Hello. And matched. Egoist able to find the kill. It's just going to be Scary getting taken down. अभी Cash time plenty here for the side of bleed overall. फिर से टाइम आउट आएगा D1 का. Yeah, it's looking really clear from bleed to start. Everything you would एक want. राउंड हार गए और फिर से आ जाएगा मुझे लग रहा है. As a bleed fan, I mean, yay. Even though he's on an agent that you don't really get to see him on very much. ले लो जल्दी ले लो. Having no problems. He's doing exactly what you would expect from him. A great angle to hold there. Sai had been noted earlier down that hall, kind of expecting the push and setting up for the bait and switch. And Scary gets one. Rossi's had a couple good kills late in the rounds, but it's usually when he's in very difficult situations. So good on him to find value where he can. But now you've got a lot of big ults coming into this, and I like this down for T1 for real this time. Because they have अभी देखो धड़ाधड़ जीतेंगे. सीधे 3 राउंड. They've got the Hunter's Fury. So this is going to be a round that you really want to make sure जेड़ा वकातू. this is like where your ult rotations are really coming into play. And so you cannot afford, with the way that this match has gone so far, to fumble this round. No, certainly not. I mean, this could be a bit of a breaking point here for them. So obviously, you know, with some of the updates of Breeze, it's going to take some time. We need to get some more eyes on this map to see which way it's overall going to stray, whether it's going to be that defender side or the attacker side. But historically, we have seen a lot of attacker presence and a lot more dominance on that side of the map. So I'm curious because, you know, starting things off, only having that singular round to your name at the moment. जी क्या पढ़ने चले गए? Close this one out with 3 ults to try and utilize. Could very well spell disaster here for T1 for the rest of this match. With double duelist in play as well. Sure. You know, that's Isu's 1, 6, and 2 at the moment. गए पढ़ने. Has not been found, and you know Carpe as well, lingering down there at the bottom of the standings. Saya player can look to try to turn the tides here as the operator does come through. Now they're expecting maybe Bleed to try to change the tempo, change the pace off the back of that timeout. Not going to come through. Enemies start making their way in. Carpe is going to find a spot, using that high tide to cut off the front side of Pyramid there. Saya making sure as best as he can that those angles towards the right-hand side of that pyramid are clear. TP in. Izu is going to take some space. Checking out. Oh my god. देख रहे डबल वॉल का फायदा. Double turn away there, but now the reveal coming through the spray, but not going to be able to find the kill. Pit now going to be invested here. Rossi tries to make this a bit more unassailable, and the reckoning as well is going to be. जैसे डबल कंट्रोल का फायदा है. अभी ये मान लो उसकी वॉल अप डाउन हो गई तो ये गेट के थ्रू हार्बर का वॉल करके पुश कर सकता है डबल डोर से. दो दिया पकड़ गए. As it's such a heavy investment from T1, but they still can't come up with the goods. And it just seems that in some ways, straight up, they're losing their duel battles as T1. They have some decent executes here. They're doing the right things in terms of getting the plant down when they can, but it's these post-plant scenarios that are very, very challenging. The timing there for Izu is the wall going down. Scary ready for it, able to best him. And that is unreal from Crazy Guy. Oh, and he gets another tag even. Had him on the reveal, just knows exactly where Xcurate is. Absolutely gorgeous. I mean, the beast from the east, a title given to him long ago, and continues to have relevance to this day. As the pit now coming through from Scary, just looking to cut off this A site, and I mean, what a read. They still could very well overwhelm this Viper, but you see Scary really looking to back off of this one. Here's that drone coming through. We'll play back. Assessing that is going to be a fake out. Another bite before you're trying to make his exit. Gets tagged down, 36 HP. He still manages to slink away, but the pit will fall.
Yeah, good read here from T1 on the positioning of Scary. The utility kind of giving it away. And Scary pays the price a bit, and he has to lose that pit as well. So, yes, he bought some time, and you gave a really good read here for Bleed on where this execute is going to happen. So they're able to shift Crazy Guy over to help out. They are, and now the call's coming through for the other two players to start working their way across. Scary just going for the spam. Izu going to be revealed there, but not in a position where he can be punished. Sends in the pop flash, pushes up, managing to finish the job there on a Scary, but Crazy Guy still standing his ground. Takes some damage, but gets the kill onto Izu. Now Ye gonna fall. Execute finding one, finding two. Great snappy shots coming through from him. Crazy Guy will be able to shut down that इस बार तो निकल गया run back there. Ego is now in a 1v2 scenario versus Rossi and Saya player, and as he swings out, Saya sat between the pyramids, I should say, manages to finish him off, and T1 will be able to get themselves a second round win. दो राउंड निकालने तो चौथा राउंड अपने आप आ जाएगा. Some of their firepower as Xcurate coming alive, finding 2 big kills in that round. But in general, I really like, I mean, it's great pop flash, but I really like the way that Bleed is working and reading the map. They're using this double initiator to really get the information that they need onto where T1 isn't. Like a lot of times, like you think about, okay, the Hawk catches somebody and it makes that noise, or you get a spot with the dart or something like that from Sova. Double controller, double initiator. बाप रे क्या कॉम्बिनेशन है. एक डुअलिस्ट है. जी भी खेल रहा है भाई. Trying to get the heck out of there, but he's spotted. The ping coming down, chasing him. Carpe perfectly lining him up, not allowing Vidarian to get the jukes out. Yay up on top of bridge. Ooh, spots him for a moment. Still the shot drops down off the top. It's a high player, not in a position that he can chase. Dart comes in, मुश्किल है. out, आने नहीं देंगे. सब सेव करो भाई, निकलो यहाँ से. गया. कौन सा कला? मुश्किल था. 3v3 हुआ था. 3 था. उसको ऑफ लेके चले जाना चाहिए था. लेकिन कोई ना, भाई तो होगा, इन पे खरीद लेंगे वापस से. Scary able to find one. Can he do more damage? Looking for Rossi, can't manage to make it happen. 2 players lost, so still some economic damage dealt here from Bleed, but T1 starting to rally back just a bit. Yeah, and Xcurate getting really vocal here, trying to get his team into the thing mentally, and a great read by Rossi there at the end of the round to not get punished by that off angle. Being held by Egoist. This is just a great setup, using that dimensional drift to ping down your opponent. So right, like maybe if you're someone new Nalt था ना इसके पास, तभी निकाल लिया. Understand how this works. So when you're in the dimensional drift, you can't be seen. You're invisible. You're a ghost. You can be kind of hurt if you get close enough to somebody, right? But like essentially, you can spot somebody out, ping it out for your team. एक राउंड और निकल जाएगा बस. Like somebody getting into a Viper's pit, you find the Viper. Ooh, shot है. Nice shot, crazy out of this round, but just a ping to set up the hunter's. अरे यार क्या रिफ्लेक्स रहती ना. स्कोप ओपन करते ही सीधा. मैं तो बंदा ढूंढने में टाइम लग जाता मेरे को. किधर है? अच्छे सेटअप पे यही फायदा रहता है. गया ये गया. वो तेरी. दो ले गया रे. Struck down by Carpe, and that leaves Egoist all on his lonesome. I like this the attempt. Became madness. Yeah, this has been a really scrappy map. Egoist not sure which way to look. Still manages to readjust, taking down Rossi. Pushes outside player, boosted up on top, up in hand. We'll be able to take him down again. मेरा prediction सही हो रहा है धीमे धीमे. 7-5 बोली थी मैंने. 6-4 हो चुका है. Yeah, it's just a really good hold. एक राउंड चाहिए है ना, एक राउंड चाहिए उन्हें. In their post plant, not really giving up too much space. Izu here in particular finds a beautiful timing on that fake out. Scary shoots at it, reveals his position, and that really makes it easier for Izu to line up his shots, have his crosshairs where they need to be. Saya player, I know we've been talking a lot about Ye and his op, but Saya player, guys, is a tremendous operator player as well. Has a blade storm, so he's going to pass the op over to none other than Xcurate. इसको ब्लाइंड कौन सा है? Basically for मिड में था लग रहा है. So far in the map, T1 have their eyes set over on this B side. The rotation call already coming through here
from Bleed. You can see it's just नहीं a इसका full ही send इधर to try खेल and ले reinforce this position. A side player boosted up on top, watching the jump down, and somehow Izu comes away with that one. 20 HP remaining, but he takes out Egoist. Now it's going to be a full भाई सब approach here from that defender's side. Fast lane sent up, relay bolt. Not going to connect. Saya can maintain the high ground, but that flash definitely messed with him here. Carpe falling. Attention was split. एडवांटेज है इस पे Manages to get taken down. Side player अभी finding तर one, जाए popping down. Keeps himself safe for the time being. Yay though, putting the stinger to good use. Now sends out the lightning fingers, but Saya होल्ड वेस्ट हो fires गया with a swift headshot, taking him down. The wraparound from वो Izu. फिंगल मिल गया Pops up with the final two, छोड़ो a 3K overall. टाइम हो Game गई of the round, and T1 are rescuing this half. आज तो हो गए एक बचा है Getting Carpe